what Mimi says. Hi, Pac, what about you? Gen.G walking their way to a trophy today. Ooh. I'm telling you. And do you know what? We had this conversation before this event started. I was like, I'm not buying it, GB. Dude, I'm not buying it. And you're like, That's what what? Yeah, I'm all in now. I was confident when I saw it, man. I won't lie, this is a tough one. I'm curious to see where we end up for the maps, but genuinely, I could see Gen.G taking this and hoisting a trophy for Korea and for Pacific. They absolutely could. It would be history for them walking on here with rookies, with a roster that had no expectations to make it now to a grand final, to have a chance to beat Sentinels and lift a trophy. It would be an incredible moment for their league, for their country, and for all 5 members on that stage. Oh boy, I hope you guys feel it. The electricity in this room is palpable. Everyone, I mean, basically the seats are packed. This is going to be a banger, and the wait is over. Today, someone's walking away with the trophy. It's Gen.G versus Sentinels, a best of 5. The Masters Madrid Grand Final starts right now. He's gonna hear this. Did he spot him? Did he see him? 2 already in the round. A third would be needed. Mind Freak's not stopping. He's got to check. And he does! Sentinels are going to the grand. Male Vishwa, what's up, brother? Remember me long time? Yes, I do. What's up, buckle in? Ready for the watch party? Walker. Looking back at my career as a whole, things don't always go your way. It's not always a perfect road. Hopes and dreams of building a dynasty this year left in tatters. They only win a single map in the entire stage. Super disappointing. That's been the story of their year, really, hasn't it? Sentinels are out of LCK. But I am thankful for the opportunities I've been given. Just the path that has allowed me to be the person, the player I am today. Sentinels are going to be your kickoff. Ready for the match? अबे तुम लोग खेलो, बंद करो ना खेलना। मैच शुरू हो गया गाइस। भाई तू मेरे को देख नहीं रहा होता क्या? तुमको ही देख रहा था, बट अभी तुम्हारा लग ही खराब रहता वो टाइम पे, मालूम नहीं क्यों। नहीं तो मुझे लगा हेवन से ऑफ करेगा भाई। मैं बोलता हूँ वही टाइम पे तुम क्विक नहीं करते और तुम स्लो करते हो, वो टाइम के बाद बंदे आ जाते हैं। ऐसा कभी-कभी हो जाता है। ऐसा है, तुम देख रहे हो कि बकवास कर रहे हो? अरे यार, स्निफा साइड नहीं लेता बेटा। डील पान। मेरे को 10 मिनट चाहिए होंगे अब। कोई नहीं, 10 मिनट में आ जाओ आप। बोलो भाई। I'm the IGL. Are you planning to make it a pro? Is that Yeah, that's the plan. I actually came here from the United States to come see Masters. First Korean team in the grand finals. 진짜 너무 팬이에요. 공부하러 왔다가 원래 한국으로 3월에 가려고 했는데 급하게 꺾어가지고 경기 전부 예매했습니다. 이거 먼치킨 선수 신발. 아키아 선수 옷이랑 서 선수 옷백이 안 가져오시다가지고. 진짜 개꿀. 감사합니다. 일단 저희가 팀 창단 첫 초기에 되게 저희들끼리 친구하고 중요시했어요. 특징을 잘 살린다. 저희가 운이나 그런 게 아닌 진짜 피땀 나는 노력과 그리고 마음속에 쌓여져 있던 응어리들이 를 전부 다 해소하면서 여기까지 오게 된 걸 알아주셨으면 좋겠습니다. I always kind of dreamed about having Kaide at an event, being able to watch me win it. Just the fact that she's present here now, it means a lot to me. This match is redemption. Sorry guys, मैं थोड़ा मैसेज नहीं देख रहा था। जिक्स पटेलियो परी व्हाट्स अप यो स्निफा भाई, क्या हाल है? मैं बढ़िया हूँ। बकल इन रोहित, बकल इन जिक्स। कहाँ गायब थे भाईजान? अरे यार बस जॉब वगैरह लग गई थी, बस उसी में थोड़ा बिजी थे। मैं सोच रहा वाईटी क्विट कर दिया यो। अरे नहीं यार, क्विट नहीं किया, बस ये थोड़ा सा पोस्ट डाल रहा था इंस्टाग्राम पे।
ना गाइस थोड़ा सा एक ही और लोग ज्वाइन कर लें वॉच पार्टी के लिए। 트로피를 거머쥔다면은 और अगर तुम लोग डिस्कॉर्ड में हो तो डिस्कॉर्ड में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कॉर्ड अगर चला रहे हो तो इस टाइम ये तो साथ में देख सकते हैं। वो बस पोस्ट डाल रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, बस डाल के फिर तुम्हें। और बताओ गाइस सोमेल बकेलिन कैसा है भाई मेरे? रोनित व्हाट्स अप, हाउ आर यू एंड जिग्स हाउ आर यू गाइस? कैसे हो? इतने दिनों बाद मिले हो यार वापस यार, कैसा लग रहा है मुझसे दोबारा मिलके? तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने छोड़ दिया भाई, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मेरी टीम तो बाहर हो गई अब, वैसे तो मैं लाइक अपनी रीजन को सपोर्ट करता हूँ। Es el gran momento, es el momento que todo el mundo esperaba. Y la pregunta, ¿estáis listos? Bienvenidos a la gran final del Masters Madrid. No information. क्या बंदा? तेरे को सुनाई नहीं दे रहा कॉल्स वगैरह हैं डेलपन? नहीं मेरा ये है ना इंटरनेट, अपना इंटरनेट गया था ना 2 बार। मैं कॉल दिया तो हेवन पे बंदा होल्ड कर रहा है। नहीं उसने, अच्छा यही बंदा था क्या वो? से और क्या फेस टू एफ के कोई इसने मारा ना? ये इसने मारा तुझे? इसने तो मारा नहीं, रेज मारा या? हाँ अच्छा रेज ने मारा। तुम्हारा कॉल आया मेरे को, तुम्हारा कॉल आया, मैं ये पोजीशन चेक किया था बट वो पोजीशन चेक करना चाहिए था, पट्टी चेक करना। भाई बहुत सताया तुम्हारी यादों ने रातों में बे भाड़ू। मेरे को पुश करना को भाई ऐसी भाई रातों में क्यों सताया मेरी? ठीक है इधर ही रातों में तो यार ये तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, तुमने लग रहा है कि शीरा ज्यादा पी लिया है, मिठास ज्यादा दिख रही है तुम्हारे अंदर। क्या हो गया तुम्हें? गया तो था मैं जब लास्ट टाइम मिले थे तो ठीक थे। मैं भी वैलो 1 साल हो गया छोड़ दिया, अभी कुछ दिन हुआ फिर से चालू किया है। बढ़िया है यार बढ़िया। मैं थोड़ा जॉब वगैरह में बिजी था तो उसमें कर रहा था, अभी पोस्ट डाल दी पोस्ट होगी ना। अरे मेरे को जाना चाहिए था ना इधर खेलने के लिए। अरे ये बाय द सेन बंडल क्यों लिखा हुआ है यार? ये थोड़ा डिजेनरेट सा लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ डिजेनरेट लग रहा है यार। सुन रहा है डेलपान? यार कम ऑन यार, इतनी बड़ी टीम हो, यू आर इन फकिंग मास्टर्स फाइनल और यू होल्डिंग अ फकिंग फ्लैग। अपनी नेशन वगैरह का फ्लैग होल्ड करते हो ठीक है, सम डिजेनरेट एज शिट डूड। नेशन को कभी देखा ही नहीं, जितने के बात करते हैं लोग। हाँ यार दैट वाज काइंड ऑफ क्रिंज। ये आ रहा है हमारा जी का चीता टेक्सचर। अगर कसम से चैट में जी फाइटिंग स्पैम हो रहा होगा, कोई अब नहीं करता होगा कोई। नहीं अब नहीं करता कोई। वैसे ट्विच पे तो वैसे भी नहीं होने वाला। मिठास नहीं हवस। हवस गलत इंसान के लिए। मैं तीर की तरह सीधा हूँ। जेनजी कैसे सेन के साथ मैच में दफक? जेनजी बहुत तगड़ा खेली, सेन को हरा भी चुकी भाई। लोअर ब्रैकेट में भेज दिया था अभी बेस्ट ऑफ 2 में। टाइम टू रिवेंज। बेस्ट ऑफ 4 बोल रहा ना, बेस्ट ऑफ 3 आई डोंट गिव अ फक। बेस्ट ऑफ 4 है। हाँ बेस्ट ऑफ 4 में। Yo, what's up bro, what's up Baba Gaming Buckalin, thank you for joining in after a long time. Yes, very long time यार, बहुत दिन बाद यार। कैसे हो बाबा? तुम्हारे पास गन था? अरे बस करो यार, तुम लोग कितना खेलोगे यार। मोहित भाई म्यूट मार दिया मुझे लग रहा मोहित भाई ने। डेलपान है म्यूट मारा है ना मोहित भाई ने? बोलिए जरा मोहित भाई को। या बस करो, क्या म्यूट क्यों मार दिया?
कहते ना कोई नहीं, जैसे मैच खत्म हो जाए लाइव सेक्शन में आ जाना या यहीं रहने, वॉच पार्टी में रहना। म्यूट कर लिया। It's been over 1,000 days since Sentinels and Gens hit a grand final stage at an international event after grinding it out, finding ये तो और बुरा हुआ बे। they've made it back. मोहित भाई खत्म करो यार, गेम खत्म करो, अब मैच देखते मैच शुरू हो गया है। The first Koreans to make it to a grand finals and a chance to win the first trophy for their region. Here's your Omen map select, and we're going to see what will play here in a smart decision for Gen.G. They have both of the bans. They decided to get rid of Lotus as well as Sunset. Good maps for the Sentinels. And to start things out on Breeze as well. And always, how about you? I'm fantastic. Even required to start this series off. Gen.G के players सब मीठे साले। Gen.G won that last time. Their double controller, Jet, Yoru comp ripped Sentinels apart. न्यू एजेंट का क्या सीन है भाई? अभी तो ओपी है बहुत, अभी करंट सिचुएशन में वो अटैकिंग स्मोकर है वो, मतलब उसका वो मरने के बाद भी स्मोक डाल सकता है, और अगर वो मर भी गया हो तो उसकी ऑल्ट है तो अपने आप को रेना की मतलब उठा सकता है वापस, और फिर रेना की तरह डिसमिस हो जाएगा 2 सेकंड के लिए। डिसमिस कह रहा हूँ लाइक अनकिलेबल, क्या डिसमिस ही होता है ना, जो भी मुझे बहुत दिन हो गया खेले हुए, याद नहीं आ रहा। और क्या उसका और भी, और उसका है कुछ ई दबाओ तो बूस्ट हो जाता है, वो बहुत तेज भागने लगता है इधर उधर, और मतलब एक बटन दबाओ तो वो ओवर हील हो जाता है, मतलब रेना को मार के ओवर हील लेनी पड़ती थी, वो बटन दबाता है ओवर हील हो जाता है। यार ये कुछ रेना को सड़ा नहीं दिया इन लोगों ने, रेना है ही किस लिए फिर? ज्यादा ओपी हो गया भाई, बहुत ज्यादा यार, एक बटन दबाओ ओवर हील हो जाओ, पता नहीं कैसे, लाइक कुछ अजीब से ही हो गया। किल ऑन ओवर हील है, आई डोंट नो, कुछ रेना से रेना का अपग्रेडेड वर्जन है। You really have to focus on how incredible it is that Sentinels even made it here right through that BO5. This is John QT's first international event as an IGL at this level. He played Ascension before, fell flat there, but now he's managed to keep up the calls for so many matches on end. Is it enough today though? That's the question. We're into the agent select and there's no surprises. Both teams return to their same comps, but I imagine Sentinels gonna have a new game plan today, Mike. I mean, the other thing being there's some takedowns for this Gen.G composition. Where things went wrong, where there's some possibilities or opportunities to really make some impact on the side of Sentinels. So we know that specific teams really do like this Breeze. They like to play aggressive, very loose as well, very loosey-goosey. I think the strong suit for Gen.G in their last match was how disruptive they were in their post-plants, fighting forward, not letting Sentinels play the set structured retakes that they love to play. Sentinels, honestly, I feel like have a chance to kind of get dragged down into the chaos here by Gen.G with this comp. It's going to be tough for them to take home Breeze though. Well, this is it. It's now time for the Madrid Grand Final. And let's go ahead and send it over to your casters. It's your boys, Bren and Sideshow. Thank you very much. Let's get this one started in the Madrid arena. What a stage that's been set up, man. The scintillating Sen City trying to pay that for a bit of redemption, but they got the pride of Pacific on the other side, and a hell of an advantage waiting for them. That double map ban looks brutal to try and get through. And it starts off here on Breeze. A rematch of our upper bracket finals, and this was the decider. Instead of to close, it's now to open. Side swap though. So what can Sen learn? They barely played any defense the last times that they ये मीठे लोग में जीते प्लीज। राउंड रिफ्यू बकलेन। Last time they played. देखते कौन जीतता है ब्रो। Insurmountable advantage. तुम्हारा कंट्रोल आ गया बस उस एंगल पे Turned around, you are Sentinels. Tell us the information कोई नहीं है these series, they've mentioned that they're putting a lot of focus on themselves, not too much on the counter stratting. अरे भड़वे मेरे साथ चिपकने क्यों आ रहे हैं? Breeze is going to be a map that really comes down to a bit of form factor. करो यार तुम लोग यार, मैच शुरू हो गया यार। The big dogs that is Gen.G because they got some heavy hitters munching now, setting up for the wall. अब अकरा है। An A split. इंडिया हारने वाली। John QT setup. John QT just behind this one, still flash. Molly coming through, trip as well, and the counter play in order. There it is. Riva. नहीं। Trip kill
Never seen that one before, at least on the big stage. Here क्या लगता है कौन जीतेगा, क्या स्कोर होगा? भाई जेनजी बहुत तगड़ा खेल रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही है। कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब लाइक दोनों ही अच्छा खेली, मगर जेनजी पहली सेंटिनल को हरा चुकी है और जेनजी ने 2 बार उसको भी हरा दिया है, क्या कहते हैं, पेपर एक्स को, एक नहीं 2 बार, तो ऐसा नहीं है 3-2 जेनजी विल विन। देखते हैं, आई फील लाइक 3-1 जेनजी विल 3-1 जेनजी विल विन 3-1। Supportive util, Sassy finding it difficult to really get himself into the position. Second, walking wide, now the dart finally ready, clearing it. At least onto one position here, but time's starting to work and tick against the face from all of them. On top now, Sassy versus Lakia, and they're all playing against one another. It's Lakia who cleans it up for the pistol. मतलब पोजीशन सब पता थी भाई, मगर फिर भी the individual skill on this team is so high. Even after you see this ridiculous opener for John Cutie. साले मिस ही नहीं करते भाई जेनजी वाले, कुछ अजीब ही साले एकदम। देखियो क्लिक, देखियो साले वो क्या कहते हैं, हूटिंग बहुत करते हैं साले। Global events in Valorant and is here now. पीछे से डिटेक्ट कर रहा है। Already heaven है उनके पास. Looking like he wants to have that second shot of revenge. I mean, he's already got it the first time in the upper bracket. Sound आ गया मुझे. देखियो ऑलरेडी वेंडल, एक क्लासिक वेंडल है भाई। Kills happening on multiple sections here with Mita. Nice push down holes. Yeah, push down holes. Trying to squeeze them now with the drone close. मोहित भाई, Quarters combat might be in order. मोहित भाई, long sight line. Team's finally coming through with the right clicks. Finally, left clicks getting it done. Shot does pulled out, maybe a bit frantic. In terms of that approach, Sassy getting ahead of himself. Zelsis doesn't choose the PQ. Power of मीठा players, हाँ भाई, भाई भाई मीठा लगा के मार रहे हैं गन पे। The spike was dropped, and yet Tenz is going for a repush elbow, almost anticipating that Gen.G would pick the timing to rotate, but they ये मीठे जीत जाएंगे, मैं 100% बता रहा हूँ। सुमिल क्या लगता था ये? भाई जेनजी वाले मारते हैं अजीब तरीके से, मगर ऐसा है कि सेंट्रल भी अच्छी टीम है, ऐसी बात नहीं है। देख रहा है, मिस ही नहीं करते। All grouped up now, 3 players. Munchkin taking that forward angle. What could have been a possibility now is just looking just more unlikely. देख कुछ भी मार रहे हैं, भूतनी का हेडशॉट था वो। ये देख, ये देख स्पाइडर सेंस, देख रहा है स्पाइडर सेंस, देख रहा है मंचकिन का पागलों की तरह मार रहा है। मोहित भाई मैच देखो यार, फक द मैच, कौन सा सरेंडर मार दो मोहित भाई। मोहित भाई डिस्टर्ब मत करो, 2 मिनट रुको। बहुत सीरियसली सिटी चालू हम लोग का भी। खेला ना आज हमने 17-18 राउंड, 17-18 तक पहुंच गए थे। The OG Sentinel team was better. Heading into the bonus round. Meteor not too far away from being able to get close to his Yoru ult, which is super effective to be able to उस टाइम के लिए तो काफी अच्छी थी, नो डाउट। Little jump up, Zekken. नो डाउट उस टाइम के लिए तो काफी अच्छी थी। अभी कैसी चलती है वो पता नहीं, देख रहा है पीकी प्ले। टेक्सचर ने टेंस को मार दिया भाई। मेड वॉल करके छोड़ दो, ऐसा बोल रहा था मैं। अरे नहीं वॉल करके फायदा नहीं है। तो मेड में मैं ये करके स्लो छोड़ देता हूँ। इसको इतना कैसे पता भाई? गेम सेंस यार, गेम सेंस भाई। वॉल हैक्स, hacks.exe, word.exe. To see if they can get some more info. Instead, though, Zekken and Zelsis doubling up over towards A, anticipating that this would be a re-hit. Just confident that John could hold down the other side. Just that, though, massive map control that's been lost here for Sentinels. You can feel it just positioning Assassi. He's having to watch halls in case that lurk comes through with 40 seconds left. याद है 4 सेकंड साला कमीना। Starting to hit into this side, but John QT is going to be sitting side by with his rifle. Might have to try and put a stop to this one, but it's difficult. Well, the adversaries are trying to overcome bonus here. round, Still not showing his hand. Dart. Potential there to set that one up, but finally a few shots fired and rattle textures been calling up onto the angle. Finally there releases it. मार्शल से मार दिया भाई जॉन क्यूटी को। अब दिक्कत हो गई, अब दिक्कत हो गई।
देखिए बैक स्टेप Advantage position. Gotta watch that one though. 80th second. That's 8 seconds left. A round-winning play perhaps, but now a safe plan position for Meteor tucked right behind the pillar. We'll be able to get the extension into the round, but can he survive the 1v2 already through? Nasty बढ़िया अरे ऊपर से खेलना मेरा मरा Zekken got shut down completely in the upper bracket final when these two teams played against each other. But you can't keep Zekken down for long. What we saw him do to PaperX, he tore them to pieces. टफ है SEN के लिए। हाँ, अगर वो बैक स्टेप देख रहे होते ना, वो मतलब लाइक उन्होंने प्लांट गलत जगह किया। अगर वो प्लांट कर रहे होते इस साइड ना, तो ये राउंड निकाल दिया था जेन ने। बोनस राउंड था। अगर उस तरफ प्लांट कर रहे होते ना, टावर के उस तरफ 100% निकल जाता राउंड। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा बोनस निकाला है। मोहित भाई adjustment as well, something to just upset those timings. But Gen.G, they play pretty close together. Look at this. Drone into elbow really makes it feel like Zekken could be pushing behind this. So everybody on Gen.G scared. Instead, the double push अच्छा निकाला है। ब्लेडस्टॉर्म आउट है भाई ये। Zekken बहुत गंदा मारेगा। आई ऑलमोस्ट नादी जिंदा कर दिया था इसने। मैंने कहा था मारेगा, मंचकिन ले गया। बहुत मेन प्ले ले गया, वाइपर गया। वाइपर गया इस राउंड में बहुत दिक्कत होगी। स्मोक ही नहीं है। अभी एक और ले आएगा Zekken, देखिए 100% टैग ही नहीं है ना वो। फुल 5 के 5 ब्लेड स्टॉर्म, उसके 5 के बाद ब्लेड एक्टिवेटेड है अभी। 100% एक और ले जाएगा। We cleaned up there with the trade still. A tap. अबे भाई उधर देख। Wide. Lackey though gaining that kill and closed the door in front of him. Neural theft. Given the info. Texture. Now the emphasis placed on him. A dash to the side here, but a pull on line, not half. Onto the spike. अबे अभी तो वो जिंदा ही है भाई। Massive one in fact. एस्ट्रा जिंदा है भाई। एस्ट्रा पुल कर रही है भाई। गंदा भाई, क्या गंदा सेटअप है एस्ट्रा का यार। मैं एग्रो जाऊंगा। जॉन क्यूटी फंस गया भाई। हो गया जीजी। राउंड गया। मर गया 100% मर गया भाई। भाई टेक्सचर कितना उससे खेला है भाई। देख रहा, होल्ड ही किया हुआ था, पुश ही नहीं कर रहा था भाई। और पता है उसने स्मोक डैश क्यों किया था? बस इन्फो देखने के लिए कि क्या हो क्या रहा है वहाँ पे साइड पे। अभी जो उसने एंड में स्मोक, ये वाला स्मोक डैश जो मारा था ना उसने, बस ये देखने के लिए कि कौन से बंदे कहाँ पे हैं। जेट ने स्मोक डैश मारा था ना, बस इन्फो लेने के लिए। भाई खतरनाक भाई, बहुत तगड़ा गेम सेंस था भाई वहाँ पे। बहुत अच्छा खेला वहाँ पे, टेक्सचर बहुत अच्छा खेला भाई। इसको ने उसको ने डैश मारा था, स्मोक मार के बस इन्फो लेने के लिए। Left me. Holding down towards elbow for Gen.G again. Happy to play this one nice and slowly. I believe Texture's positioning, he would have heard John Cutie use the aggressive counter towards B. That info may well get relayed to the rest of the team. Yeah, you can see it being pinged out here actually on the mini-map. And so they're expecting the stack to be over towards mid and A. Incredibly deep positioning here. Hunter's Fury going to be offloaded from this particular position. That's Lakia returning it, see if he can get a kill, but only to one tag, spotting out the positioning of Celsius. Interesting usage of the ult, but with 50 seconds left now, Sander make their way, meander over towards that B side. Cosmic Divide will cut this one up nicely. Paul aimed for where John Cutie has been anchoring in previous rounds. And this composition has so many different ways of getting into B. Fighting. The Jet and the Yoru very difficult to deny, especially when the smokes online. That pit did not cover the spike. Oh, and a lot of respect as well being showcased as well to a weaker buy of Sentinels, but second. See what damage he can do here. Still with the rifle in his hand. They found the first one, but again, a lot to get through. Murky territory, a blight onto the B side with that pit, but they really wrangled control of this one. They found it needs to fall to really stand a chance into this one. Yes, it doesn't cover it. Texture alive and kicking, working his way around, but he's being found. Sassy drops him. And one player left to stand as Lakia. Flawless जा रहा है. Cowering, fear in his heart. He cannot face them. A thrifty win for Sentinels. भाई क्लासिक लेके मारा है इन्होंने घुस-घुस के. That is a bizarre one to start us off with.
हाँ bug हो गया था wall. Bug नहीं हुआ मेरे. I don't know what the fuck was that all. कुछ तो हुआ के साथ. कुछ तो हुआ Rift के साथ. Assault के साथ. All of these Gen.G players dying whilst looking the other way. Not being able to use the eco advantage that they had, and actually the pit there ended up hurting them. मोहित भाई. Not something that's that replicable. अबे डेलपान. 2 मिनट रुको ना. तुम लोग क्या बे कितनी देर से गेम खेल रहे हो यार? जी भाई. Waiting. A lot of equipment comes with it. Full weaponry. Zekken so damn aggressive now. Seems to have an inkling that maybe Karon's there, possibly from a cam aggressively getting broken. Yeah, for sure. John Cudy's cam got broken in that spot. Now he knows where Karon basically is. The rest of Gen.G working their way up mid. One of the things that SEN said in their press conference was it was difficult playing against Gen.G, hard to isolate your ones when they travel around in such a pack. But Gen.G are running a 1-3-1 Phantom, here. एक Guardian. बाकी दो Sheriff और एक Classic. Blade Storm. Sorry. But Tens has gone walking all the way down halls here, getting good info for his team. That's fantastic info. He's going to be hearing the scurry of the footsteps from Munchkin, maybe even seeking to punish, but he's going to be calling this now for his team. Look at this. Sassy starts to go. Yeah, good maneuvers all around the map. Can really follow those sound cues and follow them well straight towards the B side, but it's going to be setting up for that B split. Out through tunnel. Tens has got to be careful here not to overflank. He just needs to play to contain. He grabs one, no grabs way! two. And the heads will roll with all that space gains, and guess what Gen.G just sent? Rattling now all the way! Movement looking clean with it. Texture's got something to say still. Only one blade left. Rest of them finding it in the back wall. There's the refresh and shut down. Traded time. Really quite low. Only 11 seconds left. It's going to be barely able to get onto the side, but Karon has to clear a little bit. He might just have some time spare, barely a second. And yes, we'll be able to get it here, but Sentinel surely don't let this one slip. A 1v3. Karon, though, is going to be able to reposition slightly, and Tens is weak. Really weak. He's got so wide. Zell says needs to be ready. Oh, shit! Karon! The movement impeccable, the aim on top. And he's brought it to a 1v1. Yes, damage has been done, but this guy... Damn, bro. She ranked to superstardom all the way on the grand stage. He does not seem phased at all. Zekken to face him now. Again, slow walking onto the angle. The noise and information is being cut away entirely. It could just come down to chance. Cloudburst straight up into the air. Zekken defusing. Drops down. Fight taken at one. Karon! A menace to him. The scourge of Sentinels rips away the chances of that round. That's an absolutely monstrous, heartbreaking 1v3. Oh, thrifty tha ye. The aim and the precision is pretty natural. It's just, you do not see that. With a Phantom at long range, on भाई एक Phantom और एक Guardian लेके आए थे. Yes, the timing on the trade. Bro, both team won the eco baby less. I mean, yeah, man. Rift. कसम से भाई. मोहित भाई. Karon is just that guy. I mean, he just seems unshaken throughout this entire tournament, throughout all of kickoff. Doesn't matter the obstacles that you've thrown at the guy. The entire team as well just been persevering. Sassy. Got a hell of a lot to deal with here. Drone. Possibly seeing multiple targets. Now the Hunter's Fury of his own. That is going to be left ripped. And look at the targets! They just cleaned right through them. Quantum rank है जरा भी Quantum का rank है What a perfect counter to what Gen.G were going for. Immaculate stuff from SEN. And still throughout all of this, they're looking to go aggressive in other places. Tens has gotten deep. He's going to be able to hear rotations. I think that's such a pivotal part of SEN playing in this finals. Gen.G love to rotate around the map on their attack side and their defense side, getting people into good positions like that for info. Impeccable. Seems like a clear game. Also Sassy, really, the playmaker there. Of course. I thought he was going to get overwhelmed. You saw him get the tag onto Meteor, and I thought that SEN were going to get baited into the fact that there was only one there. Mad play. Clearly, कौन कर रहा था मैंने देखा नहीं. A better read than it appeared. The Hunter's Fury. एक heaven. Few layers too. I mean, Celsius, the bodyguard, playing inside the smoke, making sure that there's no punish in sight when Sassy was ulting. Yeah. It's very solid stuff. Gen.G are just going to go for a save here. After Karon got them a 1v3 to start their economy flourishing. SEN making sure it dampens just slightly. I don't know whether they saw Zekken's operator this round. Quantum Sniffa, buckle in, Quantum buckle in. आजा. आजा मैं देखते हैं watch party चल रही है.
know that this is online. Ana He bhutni ke hasn't even shot a bullet. स्ट्रीम तो एक कर रहे तो मुझे हो गया So भाई that डलबन से निकला could certainly be another twist in the tail नहीं as we मेरे से head खेला into the जाएगा next. मैं इसके revealing बस 5 मिनट And देखूंगा they मैं have purchased that one. They मैं might मैक्सिमम 5 मिनट check the देखूंगा money at least in the follow-up now into this round, but yeah, here's that play before as well. I mean, It's so lovely, vulnerability especially as well. Yeah, especially with Playing it Celsius throwing the snake bite. up. Real nice. Zekken is going to be here to try to I'm receive here, this Sniffa, hit if now. it comes Let's relax. through A. You want to eat something? He's taking a gander through double doors, at least Who, looking me? like he wants to. Wall I feel What? like this is going to be so difficult when Meteor has his Yoruba online. What are you having? Nothing actually. 5 tags though. हाँ you ordering for me also Two okay. fouls. हाँ मेरे को ना Keep control of कुछ mid. Now नहीं चाहिए Karen is playing a really far back position here. Seeking to contain. तेरे लिए लैंड Oh my god. अभी बकरी Against का the wall, could just be walking straight into it. Shot missed though. It's a jiggle. And guess what? The entirety of the site has been gained. Given up entirely here, just from that dimensional drift. Out of it now, Meteor. क्या मंगा रहे हो? Plants. And this is Securing brutal. it for texture. This is brutal. आवाज You're going to इतनी end up कम क्यों having आती है pulls मुझे? on this. You've got people मैंने running. आवाज कम You know, कर Munchkin's रखी है got मेरी lineups that 200% पे है मोहित भाई आपकी आवाज अरे मेरे ऐसे को कैसे लिटरली Offside इंटरेस्ट post अभी आई। नहीं है मैच देखने का फिर भी मैं देख रहा हूँ दूर हो गया भाई अरे वो मेरा एक कान भी बहरा हो गया आज क्यों क्या अच्छा वो हाँ तो मैं कॉल मिला रहा था किसी को बड़ी देर से कुछ आवाज नहीं आ रही थी मैंने लाउड स्पीकर कर जैसे कान में लगाया इस व्यक्ति को जिसको कॉल मिला रहा है वो एकदम टन से बज गया मेरे कान में मतलब उस शोर का टेस्ट मेरे एक नाक में हलक में अजीब सा हो गया कुछ मामला मेरा लेफ्ट साइड का कुछ नर्व वर्व जो होती है ना वो एकदम सिंगल हो गई गंदा मारा Second sticking inside the cage. Oh my God. Meteor का मारा Finding that fit, but you're right, Josh. Again, just how long it took Sen to really get their ground, Uncle? get started onto the retake. मोहित भाई पापा की उम्र में अंकल बोल रहे हैं हाँ ना मैं I have no problems with. Ten's doing a great job. कौन अंकल बोल रहा है Meteor turning this, पापा बोल still पापा getting a double kill out कौन of भी it. पापा डैडी डैडी If डैडी you remember back to the Contact defense जल्दी side pistol that Sen ran. तो मोहित भाई समझ नहीं रहे हो They flash peeked second in. समझ नहीं रहे हो अंकल क्यों बोल रहा है I'm just getting flashbacks to that again. The Gen.G players are so skilled and have कुछ सीक्रेट है हमारे लिए अंकल अंकल पैसे दो ना समझ गया अंकल पैसे दो ना अंकल खाना ऑर्डर करो ना अंकल भी लाइक पैसा नहीं क्या चाहिए खिला रहे हो क्या खिला रहे हो Gpay quite split up though, two players. क्वांटम क्वांटम तेरी आवाज नहीं आ रही Dynamic duo making waves. See if they can do any damage, at least focusing on that. That was a potential replay by Sen. बाय जिंजी इसको मिस कर दो हेलो हाँ ये भूतनी के इतनी बार हेलो मत बोल वैसे कान में दर्द हो रहा है मेरे मैं क्या बोल Munchkin's रहा wall हूँ not going to be available to them if they Sniffa, hit A. हाँ ये लोग ने जिंजी ने बोला ऐसा टैग नहीं फैलाया कि So not a major problem for Gen.G. ये करो करके बाय करो बंडल अबे हाँ वो बहुत क्रिंज लग रहा था मोहित भाई पता क्या हुआ देखा हाँ अरे वो इंटरव्यू तो देखा ही था इंटरव्यू देखा होगा आपने उसके बाद जब वो इन्होंने एंट्री ली तो फ्लैग लेके आया था अच्छा ओके और मैंने जहाँ तक देखा है ना क्या कहते हैं ज्यादातर लोगों ने पेपर एक्स वाला बंडल बाय किया है एक वो नहीं है वो लड़की जो गाने गाती है कभी उसकी तरह आती है वो देख रहा था उसका इंस्टाग्राम क्या नाम था यार अभी देखा था किसी कोस्ताना क्यों लिया ऐसा पिक क्यों लिया मैं समझा नहीं अरे देख ये देखो स्ट्रीम देख रहे हो मोहित भाई हाँ स्ट्रीम नहीं देख रहा बताता हूँ ये देख रहा हूँ इसने नहीं जानता मैं इसे अरे आती है यार मोहित भाई यार देखा होगा आपने ये देखो मेरे को बोर हो रहा है ओ ये वही तो थी जो कल तूने दिखाई थी लेफ्ट में जो ब्लैक वाले थे हाँ ये देखो इसने भी कौन सा टॉप VCT कैप्सूल डाला ये कहते पेपर एक्स वाले सबने अच्छा लगा मुझे तो अच्छा लगा एक्चुअली उसका क्वाड भी बढ़िया था उसका सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया बंडल लिमिटेड टाइम तो नहीं है I don't know चाहिए क्या तुझे हाँ यार ये पेपर एक्स वाला तो बढ़िया लग रहा है यार लिमिटेड टाइम होगा तो मतलब ये क्या कह रहा है कौन मैं बोल रहा हूँ ये पूरे साल रहने वाला है ये स्किन हाँ मगर है बड़ा प्यारा यार पूरे 2024 साल रहेगा उसके बाद चला जाएगा बंडल ये क्या मारा भाई इसने देखा कौन सा बंडल भाई कौन सा बंडल अरे सारी एजेंट क्या एजेंट नहीं टीम स्किन यार ये भी कंटिन्यूस रहने वाली है नहीं रहने वाली है अरे रहने वाली है भाई
लगाता है कितने हजार का लगाता है? अबे वहाँ पे लिखा हुआ 2024 के बाद चली जाएगी सारी। मेरे में वही बोल रहा कितने हजार का लगा रहा है इस पे। नहीं मुझे तो यही पता है कि क्या कहते हैं स्किन्स जो होती है ना वो जो ये सब लिमिटेड टाइम ही होती है, मतलब कभी ना कभी चली जाती है। वाह भाई लर अभी जो चैंपियन बंडल से चैंपियन बंडल का स्किन आता नहीं है वैसा उसका वैसा वो स्किन रहेगा, समझ रहे हो? वाह भाई हम भी तो वही बोले। बोल दिया तो सबसे बड़ी हो गई। अरे नहीं भाई सबसे बढ़िया नहीं रिप्टी वैसी बात नहीं है लड़की की नहीं। मैं बहुत दिन पहले वैलोरेंट पे बैठा हुआ था और मैं और सिंक्स बैठ के बात कर रहे थे कि कौन सी स्किन सबसे बढ़िया है। तो एक्चुअली में मैंने ना 2 स्किन मुझे पसंद आई थी। लाउड की अच्छी लगी थी मुझे, ग्रीन उसका ग्रीन बहुत। हाँ देख मैं बता रहा हूँ लाउड की अच्छी लगी थी और पेपर एक्स की, बस और कोई स्किन मुझे कोई खास नहीं लगी थी, सच्ची बता रहा हूँ। और वो लड़की ने नहीं बोला, वो एक्चुअल में जो मतलब कि सबसे ज्यादा स्किन बाय करी गई है ना वही वाली है। वो टॉप बॉट स्किन मैंने 2 बाय करी, फैनेटिक और एक पेपर। देखी नहीं मुझे याद नहीं फैनेटिक। मैंने एक और रेड स्किन थी जो मुझे अच्छी लगी थी, पता नहीं किसकी। ऑरेंज थी वो, सनसेट कलर था उसका। देखना पड़ेगा। G2 की नहीं एक्चुअली वो स्किन अच्छी है। It's a kill trip, but with no one really to play off मैच की आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा ओके that's why. More given up, so Meteor once more building up towards Extra drift. नहीं वो अभी खेलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। मतलब अभी जो शोडाउन मैच हो रहा था उसमें इतना इम्पैक्टफुल तो नहीं लग रहा था कुछ। नहीं मतलब कि मेरे कहने मतलब है कि मोहित भाई नियॉन लास्ट ड्यूलिस्ट आया था ना? नहीं आइसो। अच्छा आइसो ड्यूलिस्ट है। क्या गंदा एजेंट है वो आइसो। अच्छा ब्रो नहीं मोहित भाई उसका बग थी है बहुत ज्यादा भाई वो सनसेट पे अच्छा एम पे अगर तो बड़े मैपों पे अच्छा नहीं है, बस दिक्कत इसमें आती है। भाई ये सोच लो अभी तक आइसो को उसमें खेला नहीं गया, एक बार भी खेला नहीं नहीं मैंने देखा है रीना को भी खेला गया है पर आइसो नहीं खेला। रीना को वो खेलता रहता है, क्या कहते हैं समथिंग, वो उस पे बाइंड है। This is the kind of stuff that made Sentinel split so scary. I know, I was just kidding. लेकिन आइसो को आज तक किसी ने नहीं खेला एक बार भी, डेब्यू नहीं हुआ अभी तक। ये बात तो है। नहीं आइसो मैंने खेला मोहित भाई, इट्स वेरी लाइक मैं टाइप का एजेंट है यार। लाइक मतलब उसकी यूटिलिटी है ना इम्पैक्ट नहीं कर रही है, लाइक इट्स मोर ऑफ लाइक भीड़ में खड़े रहने वाला एजेंट है। और पता है ये न्यू एजेंट है वो रेना प्लस स्मोकर हो गया मुझे लग रहा है। तुम रेना को इस वाले एजेंट ने सड़ा दिया मगर तुम सेज जैसे खुद को रिवाइव कर सकते हो, सेज जैसे खुद को हील। अबे कोई एजेंट का नाम डेडलॉक भी है क्या वैलोरेंट में? हां तो सही सेंटिनल। मोहित भाई मजाक कर रहा था मैं, वो सार्केज्म मैंने अभी तक खेलते हुए नहीं देखा किसी को। मैं डेडलॉक खेला गया बहुत। अबे क्या मारा है। ओ जैकिन मारा, गंदा मारा। अरे हक दिया उसके पास क्लासिक नहीं है, उसके पास शॉर्टी है। अरे भाई सेन क्लासिक भाई, सेन क्लासिक अब डालते हैं। अरे भाई इतना गंदा हगा कि लोडिंग हो गई। अब डालना चाहिए था भाई। अब डालना चाहिए भाई, इसलिए क्लासिक बेटर है शॉर्टी से कभी-कभी। Specific style using second as bait. भाई ये पावरफुल है गन, ये जो चलाई है ना उसे चैंपियंस एम बॉट देती है। दिक्कत क्या हो रही है, ज्यादा लोग देखने लगे क्या? अभी आए होंगे ना साढ़े। They read it, they react तो so देखते हैं ट्विच पे कितने व्यूज आ रहे हैं। and get into positions where their players can pull off magic like that. भाई 800 Final round, Zek 48K मतलब भाई 1 मिलियन पार जा रहा है यूट्यूब और उसका मिला दोगे तो। अभी 400 के पता है कल सिर्फ भाई 1 मिलियन 1.1 मिलियन जा रहा है। out through B main, making it feel like perhaps there's some level of aggression happening over there. भाई तगड़ा भाई। This team is so smart. They wait for a full भाई मास्टर्स की इतनी वॉचिंग जा रही है यार, बताओ।
And Munchkin's the playmaker actually here, making his way all the way up through halls. It's not a full commitment on the A split just yet. Quite trying to make a play or get some info. ओवर कॉन्फिडेंस होकर मिड देख रहे थे क्योंकि मिड में पूरा सारे उनको मिल गया था ना. Play to watch for here. वेलकन बाय रेडिन का holding. Maybe it's a util, potentially the flash there, I believe, in his hands, but अरे ये वाइपर उतना आगे कैसे पहुंचा? Again, it's just pure silence. They're letting Sentinel stew. ये ट्यूब में है ना वाइपर? ट्यूब तो क्लोज है ना? No real reaction though from Sen. क्या क्लोज है? ओपन हो गया वापस. वापस ओपन हो गया. They're not going to get baited into defensive aggression. Now the drone. अरे भाई यार मेरे को इतना गंदा लग रहा है ना वो. ओह खतरनाक शॉट मारा भाई जैकिन ने. Wants another go, I think, still with the door opened wide, he realizes it is back. It's open to two different directions, and he's really got to try and watch this one here, at least get some help from the rest of his team. Gen.G are moving into the opposite side of the map. Yeah, they're going towards Zelsis, who's reinforced with John Cudy's utility. वापस वही ओपन कर दिया. फर्क क्या मतलब उंगली क्यों करी थी फिर? Broken now wants to take the fight to him out wide onto the wall here. Caron has worked and wiggled his way to the back of the side again. Back to it, reload. Oh my! 7 seconds left with the spike drop down. Sentinel surely a favourite, and yes, indeed they are. No chances here. मोहित भाई चेंज क्या किया फिर इस मैप में? मिड बस मिड. मिड अच्छा मिड और एक वो जो अपना एंट्री है this game on a map where most would write them off. Gen.G dominated this map when the sides were flipped. हैं बी साइड चेंज करी. Great awareness, dodged the drone. हाँ मतलब वो एक हाँ वही अच्छा ये हाँ. There was a trip there onto texture. He had to kind of adjust in mid. इसके ऑपोजिट कौन सी ए भी तो चेंज करा ना पूरा हॉलवे होता था वो तरीके से रास्ते होते थे अब एक ही है. ये मैप पिक किसका था? मेरे ख्याल से ये सेंटिनल का मैप पिक है. क्योंकि अभी देखता हूँ बताता हूँ. To discuss everything so far. Thank you so much. Wow, what a way to start things off. But let's just jump right into it. A rise and high-speed moment of the match. Here in the first half, we had multiple, as a matter of fact. It was kind of, you know, मुझे बहुत stupid decision लगा था हॉल बंद करने वाला वैसे तब भी. Agree. It just looks so clean. Time and क्योंकि high pressure scenario as well. Fast alive here. नहीं फिर बहुत वो हो जा रहा था ना मिड हैवी मैप हो जा रहा था मोहित भाई आप समझ रहे हो. फिर यार साइड कुछ होती थी. नहीं मिड हैवी मैप हो जा रहा था. मेरे कहने का मतलब है कि लाइक अगर आप मेन से नहीं जा रहे हो तो आपके पास मिड ही है जाने के लिए बस. मतलब कहने का मतलब ये है कि वो क्लोज मैप हो गया था. लड़की का कांसेप्ट ही खत्म हो गया था. क्योंकि एक बंदा पूरा फुल ए साइड पुश करेगा बी साइड पुश करेगा मिड पुश. अच्छा एक बात बताओ मोहित भाई बी साइड तो अभी भी टट्टी है. यार उसमें साइफर ओपी है ना. बी साइड तो अभी आपकी एंट्री पॉइंट एक ही है. दूसरा है मौत का कुआं अगर जाओगे मिड में से तो ठीक है. इतने एंगल है भाई कोई भी कहीं से भी पड़ सकती है गोली. ठीक है अरे बी नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मिड ए के लिए ठीक है. ए के लिए ठीक है. ए के लिए बहुत शॉर्ट है. डबल डोर्स आ जाते हैं ठीक है. मगर मैं बी की बात कर रहा हूँ. आपको वहां से वहां वॉक इन करना पड़ेगा. अरे एल्बो चले जाओ. अरे भूतनी के एल्बो कौन सा बहुत सेफ रहता है. वही है तो तभी तो अब वही तो क्रिएटिविटी है ना. वो गन फाइट है ना पूरी. मैं ये कह रहा हूँ कंपैरिजन टू ए पे घुसने के लिए 3 जगह हैं. तो सनसेट मैप किस लगा था इसने भाई ये बता. बेकार है. अभी तक एक बार भी उसके वो नहीं है. एक तो मुझे बहुत गंदा लगता है ओमन वाला एंगल जो ऊपर लेके. व्हाट्स अप बकल इन स्टार्ट. मैं कह रहा हूँ कंपेयर टू बी ए ज्यादा बढ़िया है अटैकर्स के लिए. उसमें क्या है लाइक उस डोर से हेड लेवल दिखता है यार. इट्स टू बैड है. जो ऊपर वाले बंदे के लिए तो है नहीं ना. नीचे वाले बंदे के लिए तो मतलब ऊपर वाले बंदे के लिए तो एडवांटेज है. नीचे वाला बंदा तो मार नहीं सकता ग्राउंड से. तो बहुत गंदा एंगल है. वो नर्फ करना चाहिए. नर्फ क्या करे उसके थोड़ा छोटा कर दो. हां मतलब लाइक जो भी है हमारे लिए अटैकर के लिए अच्छा करना चाहिए. तूने खेला है ना स्निफा? क्या बहुत खेला यार. सनसेट टट्टी है मैप पे. जब देखो तो वही आता रहता है. यार ये फ्रैक्चर का वापस लेंगे. फ्रैक्चर मुझे अच्छा लगता है. मैंने देखा है मोहित भाई पर्ल बहुत अच्छा लगता है. पर्ल अच्छा लगता है. ये हम भाई पर्ल हटा दिया था इन लोगों ने ना गधों ने. हां यार पर्ल देख रहे थे. क्या कह रहा था क्या मैं बोला था. हां एस से वो छोड़ रहा था. सेन कुछ बोलने लगा. ओ भाई क्या शॉट मारा. एक और 3 खत्म. एक और हक दिया. अगर ब्लाइंड था कोई दिक्कत फ्लैश था ना. अभी तो वो दिखता है प्लेग्राउंड. कल मारा था 1v4 मोनिये ने
पागल हो गया था भाई। कल तो मैं देख ही नहीं पाया था, शायद बैकिंग कर रहा था मैं। जी जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है भाई, आ रही है, सुन रहे हो भी। प्लेग्राउंड कुछ कह रहा है, देखते हैं देखता कह रहा है भाई। And what a fantastic attack side strat that is. So Aim to है भाई सेकंड का much सेक्सी। better against Gen.G than what they were pulling out in the third map of the upper bracket final. इसने बाल वो कर लिए, दबा लिए, घबराले होते थे। आज इनको मेकअप कराया अच्छे से। यार ये हर जगह रिप्लेस सिस्टम स्पैम होता रहता है ना। कान में Can you start you watching? in the replay system. How rotate heavy Gen.G play. I mean, maybe a bit of fakes and finesse might be just exactly what Sentinels ordered. Clearly doing that prep work here. Now the orbs can be farmed up, granted for them, without too much pushback. Of course, got to be aware there's always a chance that they could fight back. There's a slight bit of danger in Kyo this को round. थोड़ा सा buff करना चाहिए, थोड़ा सा। Timing the किसको? Kyo को। सही है। नहीं करना चाहिए। इसके फ्लैशेस बहुत अच्छे हैं, एरिया डिनाइल और फ्लैशेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसको बफ। और उसके बाद फिर इसकी ऑल्ट जो है पूरा सबको default looking a little more like when Loud played against Gen.G, not going for the early round group ups in A main, but happily now grouping up together. एरिया डिनाइल अच्छा उसका साले का क्लोज आउट कर देता है। बहुत खेला जाता है कि बहुत ज्यादा खेला जाता है। तो नई जन को वाली एबिलिटी देखी जो 90 एचपी पूरी कम कर देती है। 90 एचपी का दिखा देता है। देखो ये देखो, ओ माय, बच गया। देख रहे हो क्या क्या धक्का धक पुश कर रहा है, डुलिस बन गया है। हाँ भाई, इग्नोर कर रहा है क्या? नहीं मैं सुनाई नहीं दे रहा, बोल, कान बहरा है मेरा एक। मैं पूछ रहा हूँ तूने वो नई जिन क्लो की उसकी एबिलिटी देखी? हाँ देखी मैंने। 90 एचपी कर देती है। 90 एचपी कम। बराबर स्टार्ट। तो कितना अच्छा नेड के साथ। रेस को बंदा खत्म पूरा ही। सिंपल है। 10 एचपी बंदा। हाँ देखा मैंने। देखा मैंने। KO balance है। They need to buff ISO and deadlock. They definitely need to buff deadlock. Deadlock तो ऐसा मरेला है ना थोड़ा सा तो बफ करा था उसका। मरेला एजेंट है वो। वॉल बड़ी कर दी ना उसकी कुछ। क्या फायदा उससे मोहित भाई? मुझे नहीं पता। जब तक वो बैकस्टैप वाला काम नहीं करेगा ना तब तक। हाँ ये तो ट्रू है। सिंपल है भाई, ट्रिगर हुए आप स्टन हो जाओ सीधा। वो फिर साइफर वाला ही हो गया ना ऑलमोस्ट। साइफर क्या, वो तो चेंबर वाला हो गया और पूरा। हाँ चेंबर राइट। और या तो ऐसा करो, या मैं बताऊं क्या करो, कि वो ट्रिगर हो और पता ना लगे किसी को भी, सिर्फ आपको पता लगे। नहीं मतलब है भूतनी के इन्फो मिल जाएगी ना कि हाँ बंदा बैक स्टेप कर रहा है। सामने वाले को भी तो पता नहीं चाहिए कि तू बैक स्टेप कर रहा है। मैं सामने वाले को भी पता नहीं चाहिए कि मैं बैक स्टेप में पकड़ा गया हूं। नहीं अगर आप रन करके जा रहे होगे तो नहीं बता सकते। मतलब कि अगर ऐसा हो कि अगर आप स्लो जा रहे हो तो वो डिटेक्ट कर लेगा आपको और पता नहीं लगेगा, मगर अगर आप भाग के जा रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। ऐसा कर दो, उल्टा कर दो, है कि नहीं? अगर क्योंकि सब साले शिफ्ट वॉक ही करते रहते हैं भूतनी के। ये रिप्ले सिस्टम चला है भाई। क्या कहते हो, ये अच्छा आइडिया है कि मतलब अगर आप शिफ्ट वॉक कर रहे हो तो पता लग जाए। हाँ तो पता लग जाए कि आप बैक स्टेप पे हो, मतलब कि इन्फो आ जाए सिर्फ आपको, उसको पता भी ना लगे। और भागते हुए ना हो, भागते हुए में आप बस आपको सुनाई दे और आप वो हो जाओ, जाम हो जाओ वहीं पे। वो जो उसका जो हग्गू फेंकता है वो, समझ रहे हो मोहित भाई? समझ गया। बहुत सही रहेगा ये। ज़्यादा बफ हो जाएगा। नहीं यार ठीक रहेगा। बल सेंटिनल का रोल ही है ये बेसिकली। बॉल है तो कुछ उसका और भी यूटिल तो देखो, सब टट्टी है। उसका से वर्ल्ड अच्छा है। भूल गया मैं ऑल्ट क्या था। 1v2 में अरे वो एक बंदा उसमें आ जाता ना, कोकून सा बन जाता है। हाँ उठ ही जाएगा लगता है, देखते हैं। 1v2 इजी हो जाता है। टेक्सचर मार रहा है उसका। ओपे 5-1 टैप दे दिया मंचकिन ने। गुड ट्रेड भाई देख रहे हो पूरा घेर रखे। ये आ रहा है ना, मिड से आ रहा है।
इतनी स्लो आ रहा है भाई, देखिए जरा कह रहा हूँ इतनी देर में हम कुत्तों की तरह भागना शुरू हो जाते हैं। बस सब कुछ चाहिए अरे बहुत यहाँ आ नहीं रही है मैं जो स्टोर में अभी तक। अरे यार मैं था नहीं, मैं ले लेता पूरा बंडल। हाँ मेरे भाई स्टोर में मैं था नहीं यहाँ पे, मैं स्टोर खरीद डालता पूरा भाई। मैंने Valorant उस टाइम छोड़ रखा था, ये भी नहीं दिख रहा था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मैं था ही नहीं भाई यहाँ पे, पीसी यहीं था मेरा, मैं था गुड़गांव। पापा है ना बर्थडे में मांगे। ओह सेकंड बस्ट मार गया नेट का। मोहित भाई है ना कि पहले खर्च नहीं था, अब यहाँ पे आने के बाद ज्यादा खर्च होगा ना, इसलिए हम थिंक किया था। अब स्किन लेता पहले तो थिंक लेता था and make sure that you have additional damage. What a 1v3. चलो समझ आ रहा है, बड़ा हो रहा है धीरे-धीरे। वाह ये भी ठीक है, सही बात है भाई, स्किन्स के लिए पापा से नहीं मांगनी। ओह सेकंड बस्ट। Very close. Nice. He's drawn the game back 8-8, where SEN actually have the economy advantage, putting together much better rounds using more of the map. And Gen.G, even though they're finding मैं पहले वो लूँगा। letting that one slip पेपर एक्स वाली क्लासिक बहुत प्यारी है। This time Munchkin going wandering, tucking underneath where तेरे इंतजार कोरेनामी का इंतजार करूँगा, अगर मोहित भाई के अकाउंट पे आ गई तो फिर मैं लूँगा नहीं। हाँ अगर पहले फिर मेरे पे अकाउंट पे आ गई तो फिर मोहित भाई नहीं लेंगे। नहीं मेरे को लेनी पड़ेगी, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी डले हुए हैं पैसे। अच्छा ऑलरेडी 6000 डले हुए हैं। 6000 क्यों डाला, इतनी ज्यादा थोड़ी सारी थोड़ी आ जाएगी एक साथ। नहीं मैंने, अरे एक्चुअली मेरे से 2 बार क्रेडिट हो गए थे, मैंने चेक करा नहीं आई मेरे से 2 बार क्रेडिट हो गए थे। एक में ना पेमेंट फेल दिखा रहा था भाई, मुझे लगा मेरे को उस टाइम से पेपर एक्स का और एक अपना क्या कहते हैं ये प्रीमोडियम बंडल लेना था, मैंने पूरे डाल दिए थे उसमें, तो मुझे लगा शायद मेरे को 2 चाहिए होंगे तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा था, मैं आया हूँ फेब एंड में आया हूँ बिल्कुल। मैंने डाला, एक पेमेंट फेल हो गई एक में, अब मेरे को लगा शायद एक ही आया तो फिर मैं एक लेके खुश हो गया, तो बाद में वो रात को क्रेडिट हो गए भाई बाद में अपने आप। दोनों पैसे कट गए। हाँ तो उसमें फिर 6000 पॉइंट्स थे मेरे पास ऑलरेडी 7000 के आसपास। पागल है, 2 बंदे मिलके अबे ड्रॉप हो गया, व्हाट द फक। क्यूटी मार देता भाई, क्यूटी क्लच नहीं अब ये कोई सवाल ही पैदा नहीं, टाइम ही नहीं है। हाँ टाइम नहीं है, ध्यान नहीं दिया मैंने टाइम पे, बट ये साला बड़ा आराम बात है, मारो उसको भाई। क्या राउंड जा रहे हैं 1 by 1, क्या सेक्सी खेल रही है पूरी टीम, दोनों टीम बढ़िया खेल रही है। अबे भाई अंधे में मारा है इसने, इलाके ने लकिया ने अंधे में मारा है, ये गंदा था। बहुत गंदा ईगो निकाला भाई। And just like that, all of TEN's good work in the 1v3 undone in a moment. Right back at it with the economical disadvantage. And from watching Gen.G, they love using Meteor's ult to help them defend sites. It seems weird using the Ori ult. That means there's another player that can't. Oh, by nice pick. गन का सही इस्तेमाल हो गया भाई। The nemesis on the other side of things, a clear win con is that Zekken can shut down texture. भाई ये गन ये पता है ये सब लगभग सबके लिस्ट में नंबर 1 पे है ये। प्रीलूड ना वेंडल सबके लिस्ट में नंबर 1 पे मैंने देखा अक्सर लोगों को। नेक्स्ट कोरोनामी हो गया। Oh shot! Straight to the dome, a wider peak indeed, but it's going to be faced down. Oh boy, what a spray! Entirely, TEN's what a fucking finally deals with him. Pesky intruder to a site that should have been theirs. Is out wide. ये साले ने ये रीवर वाला एनिमेशन दिखा मुझे कोरोनामी का। हाँ बड़ा अच्छा है। लुक थोड़ा वैसा ही है पर लेकिन नहीं वो शेरिफ का एनिमेशन देखा मैंने रीवर वाला था। कुछ भी फ्लैश, अच्छा खुद ही फ्लैश था। खुद ही फ्लैश हो गया। ये ओजी, इसके आगे कुछ नहीं। ये वाली तो है ना आपके पास? बढ़िया है। नहीं मेरे हाँ एक अकाउंट में है। When Zetton's got in position to try to hit the B side, I believe Zetton's waiting for another piece of utility there. Vandal बहुत प्यारी है यार ये, मस्त है। टंग 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 टंग
क्या मस्त आवाज आती है इसकी भाई जब दो लोगों को मारो ना डिंग 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 probably ends up just going something like one. हाँ right. Much better spot. क्या प्लान है? Nevertheless, that was an eco round for them. कुछ नहीं है भाई, काम है मेरे को. Rifles again online. नहीं मिली भूल याद आया. तेरे को कैसे पता लगा? अच्छा देख लिया. आपने तो बताया था कल. Big ults for Gen.G. Instagram पे पढ़ लिया करो भाई, Instagram पे बहुत गांड मारता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल अकाउंट पे अपने. अरे मेरी बंदी आई नहीं क्या? कुछ कहते नहीं आपके ऑर्ग वाले? भाई वो खुद ही तो लोड़ू है, मेरे को ही तो कह रहे काम करने के लिए, वीकेंड के लिए बोला, मैंने कहा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, सॉरी ब्रो. डायरेक्टर कॉल आया, कहता हमारा ना ये वो साइनिंग वाइनिंग हो गया 37 एंटिटीज. मैंने कहा मेरे को थोड़ी बताया गया था एक हफ्ते पहले. मैं तो अपना प्लान करके बैठा हूँ, तुम एक दिन पहले बता रहे हो वीकेंड काम करना. मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ, सॉरी ब्रो. मेरे पास लास्ट वीक ही है, 31 मार्च को मेरा खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे. बस यही है, मेरे को सामान पैक करना है, सॉरी यार. ना बोला Can they cause a distraction in B main that pushes people into Zekan's crosshair? It's all about the reactions, but Texture, of course, is favoured. On LAN, already in position. It's all on Zekan. Celsius seeking to just sow that chaos discord into the map, at least with the pit laid down. Gen.G feel it really imperative to try and clear this one, but they're already just losing players. Sentinels toppling like flies. Tens, he has worked his way deep. Gate crash now into the back of the site, so Meteor's going to be rejoining his team, and they have reinforced that area with 20 seconds left. What is the call? Jumping away and on high, but still they're surrounded with this pit. How did they even get themselves into the site? It's 12 seconds time working against them again. Lakia play to do the most. Spoiler, there it is. Finally spraying them through with 5 seconds down. No chance of sticking. I don't believe there's any time. And even if there was, Lakia absolutely sealed it up anyway. Beautiful work from Gen.G. भाई आखिरी Gen.G का मैप है ना. Should be the first nail in the coffin here for map 1. They're going to push Sentinel's economy down into a really rough spot again. And Texture opening things up. It just looks so simple from his point of view. All of these Gen.G players, they're so skilled, they make it look easy. It certainly isn't. Almost every other team has struggled to deal with Sentinels. Gen.G wiping them out. This is a map where they're favoured. Sure, it's closer than it was last time. But it's remarkable as SEN take a timeout. What Gen.G have done with this squad. Yeah. This is not like SEN where it's big heavy hitters returning to the stage looking for redemption. Gen.G, this is a new roster. Sure, some people have been here before, but others brand new to a stage like this. And Gen.G are on a 9-match win streak, beating out DRX, becoming the top Korean team, beating PaperX, becoming the top Pacific team, and then beating every other team in Madrid playoffs to find themselves here with map V2 advantage in the grand finals, 2 rounds away from locking up map 1. To say the pressure doesn't faze them, I think would be an understatement. They look elated on stage. Just having fun. They're happy to be here, absorbing it all up. And yeah, I mean, listen, the pressure probably would have gotten to some of these players a little bit ahead of time when they're playing against the top, at the time, Korean team. That was DRX, even in just the kickoffs. I mean, Gen.G, this is a squad that was put together and really a tremendous amount of doubters. But they have slowly but surely knocked down every single obstacle they faced and more. And now the pressure is on SEN's side. They've taken this tactical timeout and it's going to be for this round. This is them forcing up, trying to stop Gen.G from getting to 12. Little jump peek there in case Texture was on the angle. Deep knife. क्या लग रहा है मैं पहला across as well, looking to try and split themselves into B. Now there are players here, great dash forwards with that flash. It's all combined and calculated. Munchkin layers it down now with the pits. Dropping down in this position. He's already भाई गंदा. Where's the follow-up? Where's the follow-up? Oh my God, Munchkin. भाई साहब कुत्ते की मौत मारा है Munchkin ने. Of the side, and now a tasty morsel has been claimed with the spike drop down. The advantage again, rolling its way to Gen.G. Sentinels that are forced to react. Unbelievable play from Munchkin. How he's got the awareness and the composure to do that boggles the mind. This is an almost impossible. अब ये कॉप पड़ेगी पट्टे दे नहीं देखना. Gen.G are not giving him anything. Diligence off the charts. No crumbs. टेक्सचर पीक कर रहा है. अच्छा हाँ सही है ना, स्मार्ट खेल रहे हैं. उन्हें पता है जैसे ही वो वहाँ पे जैसे ही वो मेन क्रॉस करेंगे. क्या हुआ ये भूतनी का?
भाई क्रैश हो रहे हैं इनके सर्वर्स। 50 पे चलाऊं क्या? मैंने चला दिया भाई, एस मार दिया। किसने? अच्छा मंचकिन। वैसे सपोर्ट किसको कर रहा है, जेनजी की उसको? सेन। डेल्बन अकेला खेल रहा है भाई बावला है भाई वो बिल्कुल ही। The grand finals, and not just any old ace, not an eco ace, in an incredibly important round under so much pressure, pitting, running towards his opponents, making a mockery of them. Sen have to force up again, but it's odds and ends. It's not looking strong. वो आपका नहीं ट्विच का इशू, बीच बीच में ऐसा होता है। Scraps, man, pure scraps. Take flight. Have to drag it into that territory to stand a chance in this round against Gen.G. And I think they've found the most success when they've tried to find people, push people into aggressive positions, but that's almost impossible to feel good about lurking and then taking a 1v1 if your भाई कुछ नहीं है भाई, हाफ बाय है, हाफ शील्ड है, or a stinger even. ये सब जैकिन के ऊपर है। उसका ब्लेड स्टॉर्म फुल शील्ड चल गई तो गन्स मिल जाएंगी। अगर जैकिन किल नहीं निकाल पाया, मर गया तो राउंड हार जाएंगे 100%। रिफ्ट तू इतना चुप चुप क्यों है डेल क्वांटम? मैं बोल रहा हूं, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। आ रही है भाई, आवाज आ रही है, तू बोल नहीं रहा अभी। मैंने पूछा भी तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, सेन की? भाई अभी तो मैं बस सिर्फ अपने रीजन को सपोर्ट कर रहा हूँ। निकाल दिया था भाई किल उसने, लास्ट टेक्सचर को मारा था बहुत गंदा। अरे भाई डबल स्विंग यार, योरू निकल गया। खत्म जीजी। खत्म जीजी। ओह भूत बना दिया भाई। भाई वो क्या चिल मार के खेल रहे हैं, देखना कोई पॉप ऑफ नहीं, कोई कुछ नहीं, मैच जीत गए जा रहे हैं। They got to pick the first, and they've set the tempo. Certainly closer than last time, but as soon as Gen.G got onto the defense side, it looked like some of the same difficulties again. Absolutely, and plenty of questions up in the air as well. Bind is up next. Gen.G haven't played it at all so far at this tournament. What are they going to be coming out with here in our grand finals? यानी उधर 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 वो बैठी थी, इधर ही पे। Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm going to walk you through attack on Pearl. Watch out for the stairs, clear this angle. You're going to be able to fight this. ये इस भूतनी वाले को बताओ, पर्ल है ही नहीं। मैप पूल में ही नहीं है, बताओ इसे। कौन बोल रहा है? कौन? जिमी लिन है साला। मोटे लोग अच्छा खेलते हैं क्या? जरूरी नहीं है। क्वांटम से मिल लो, हग्गू प्लेयर है। किसकी बात कर रहे तू साले? नहीं यार, टेंस पतला दुबला सा कितना अच्छा खेलता है। मोनिये वगैरह, फोरसेकन, ये सब बढ़िया खेलते हैं भाई। नहीं, मोटे लोग अच्छा खेलते हैं, मैं पे देख लो ना। ऐसे तो मोटे। Red Bull gives you wings. And also blind you with white screen. Sorry. स्क्रीन बैन करवानी है, IPL लगा दो। लगे तो मजा आएगा। सच में। हाँ साले बैन हो जाएगा। ऐ लगा ना। चैनल पागल है क्या? ऐ लगा ना बकचोदी। बकचोदी भी बने। यार अब तो IPL फ्री देखते हैं लोग आराम से बैठ के जियो सिनेमा में। लेकिन उनके
क्या होता है? ऐड भाई ऐड, अबे ऐड तो उस पे भी चलता था। क्या था हॉटस्टार पे? हैं? इतने नहीं होते थे। तो एक बार जियो सिनेमा पे देखना, बिना उसके कितने ऐड दिमाग खाते ना बस। भाई फ्री में देखने को मिल रहा है, थोड़ा ऐड ही देख लो। हम तो और तुम कंप्यूटर पे देख रहे हो तो वो भी नहीं देखने को मिलेगा भाई। ऐड ब्लॉकर लगा रखा है, एक ऐड नहीं देखा आज तक मैंने। I have paranoia right now much. अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा। अर्ली एक्सेस का क्या? अब कौन सा अर्ली एक्सेस चाहिए तुझे? अरे मुझे नहीं, मेरे फ्रेंड को मिला है ना। खेल रहा है अभी वो? उस आईडी में मांगूंगा। अबे मैं चाहूँ तो अभी खेल के देख लूँ। तेरे पास कहाँ से, तू कैसे देखेगा? तो बता दूँ। तेरा कौन फ्रेंड है बता? अब तो जानना पड़ेगा। किससे मांगेगा? मुझे भी दिला दे एक अर्ली एक्सेस। तेरा फ्रेंड है ना, उससे ले ले। नहीं मैं तुझसे लूंगा। नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा। ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। अबे तो मैं मुझे नहीं मिला है, मुझे मिला होता तो मैं दे ही देता। ऐसा थोड़ी होता है ना रूल के, अगर तुमको मिले तुम किसी और को नहीं दे सकते। हाँ वो पूछो, हम अकाउंट अगर कोई किसी और को दे देता और उसमें से रेडिनेट पॉइंट गायब हो जाते हैं, कैसा लगता है? वो पहले तो नहीं किया था, वो डेलपान किया। मोहित भाई का तो डेलपान ने उड़ाया है। क्या उड़ाया? रेडिनेट पॉइंट सब उड़ा दिया भाई। भाई मैं इसीलिए बहुत किलसता हूँ। एक दिन सिंक्स को दिया था, शायद सिंक्स ने लिया मेरे ख्याल सिंक्स नहीं, मेरे भाई मैं तो किलच गया था। मैंने कहा अरे यार मैं इतना मुश्किल से रेडिनेट पॉइंट। हाँ एक तो इतनी मुश्किल से कोरोना में के लिए रेडियन आईडी नहीं है, ले भी लूंगा तो। मैं तो जमा लग गया। 10 रुपए पड़े हैं मैं तो। मेरे में पड़े हैं 140 अभी। मतलब ये वाला बंडल भाई भी नहीं किया है, मतलब बैटल पास पर। बंडल गिफ्ट कर दे एक। तेरे पापा के पास इतने पैसे हैं, वो हम सबको गिफ्ट कर देंगे एक साथ। नहीं तू गिफ्ट कर। हम आ जाएंगे गिफ्ट लेने उनसे। नहीं तुम गिफ्ट करो ना। ये क्या बात होती है? ये क्या बात क्या होती है? वो बड़े हैं ना हमसे। तो क्या? तो हम मांग सकते हैं ना उनसे? नहीं। तू हमसे मांगता है ना? Fantastic start it is for Gen.G. I'm now joined by their coach Solo and तू कह रहा है ना हमें गिफ्ट, मुझे गिफ्ट करो। The last time we faced them on this map, it wasn't as competitive. They clearly made some adjustments coming into this. Did you guys also have to make some adjustments? मेरा बर्थडे आता कब? मुझे यही नहीं पता भाई। 감독님 지난번 센티널스를 만났을 때보다 훨씬 더 접전인 경기가 펼쳐졌는데요. 센티널스도 많이 준비를 해왔고 또 젠지가 많이 준비해온 것 같았는데 젠지도 오늘 하면서 좀 즉석으로 전략의 변화를 주던가 어떤 준비를 했는지 궁금합니다. 저희가 원래 하던 대로 하려고 했는데 बर्थडे पे क्या देगा? 센티넬이 생각보다 라우드식으로라고 해야 되나? 준비를 잘 해왔더라고요. 그래서 저희는 라우드식으로 하면 어떻게 얘기해야 될지 बर्थडे पे मेरा बर्थडे गया बे। मेरा बर्थडे पे तू मुझे क्या देगा? 저희가 좀 더 수비적으로 2 बॉल्स हैं बहुत बड़ी-बड़ी और एक बैट भी है। वो साफ खेलो। In the beginning, वो we खेल thought सकते they हैं were लेकिन खेलने game, के। but नहीं, उससे Sentinels आप have खेलो, done मजे an करना। incredible job coming in, heavily बर्थडे pressed, गिफ्ट नहीं and I चाहिए ना feel like मुझे। today they were playing more of a loud style, so we were trying to figure out how to counter that, and in the second half we tried to be more defensive and less progressive, I guess, proactive, and trying to counter that loud type of style that Sentinels were pulling out. Oh, that was a great game plan. Thank you very much, Jen. Thank you very much. Good luck in a map 2. Gen.G picking up right where they left off when they defeated Sentinels on Breeze last time. This time, though, you got a Sentinels that had a bit more up their sleeve, but I think it goes without saying, Gen.G, they knew exactly what the game plan was getting ready for this one, Mimi. They had to beat them on Breeze. Yeah, I mean, like the coach was saying there, they absolutely did. Sentinels, I think, changed up a lot of their ideas coming into this, but Gen.G did a great job of adapting, slowing down from going for these forward aggressive plays on their defense, instead playing more of these set retakes with the Yoru Flash dart combos, and it worked really well. Yeah, and I think as well the key thing to know here is every time we watch Gen.G, the protocols, the fundamentals, they seem to improve time and time again. And Sentinels are the perfect sort of team to dismantle that sort of play style. I mean, players like Karen, obviously, कम से कम गुटका तो थूक लेते थे। These ones really actually reinforcing that play style. Yeah, I mean, इसको कह रहा था गुटका थूकने के लिए। A specific round 17. I mean, this came off of a 1v3 from Zek and Mimi, and then Gen.G's like, hold my beer. Yeah, I really thought that Zek
second clutch is going to be the turning point for Sentinels to maybe take this map home. But this Thrifty round was utterly pivotal. When we talk about Gen.G, we tend to really focus on the fundamentals, how good they are at converting advantages, being clean in their trading. But they win a lot of scrappy rounds too. And this in particular is a great example of how good they are at kind of disrupting those timings, getting weird in those Thrifties, and oftentimes coming out on top. Yeah, देखना है ना पूरा गेम and reactive to what's going on is also something Gen.G have excelled at, and really that comes down to Munchkin being the one. अबे ये कैसा कीड़ा है इसको क्या कहते हैं इसको पेलपान को कैसा सा हो गया ये हुआ क्या बताओ तो गेम खेले जा रहा है हम यहाँ देख रहे हैं साथ में देख नहीं रहे पता नहीं कहाँ घुसे उसको मन नहीं कर रहा है खेलने का मतलब देखने का ऐसा कुछ बोल रहा था मोटे अच्छा समझ गया मैं किसको कह रहा वो Gen.G के प्लेयर को कह रहा हाँ ये इको के बाद गेम पूरा चेंज गया हाँ यार इको राउंड यार वो जो था ना बड़ा खतरनाक निकाला था भाई उन्होंने आया मैं जब तक क्वांटम और मोहित भाई बात करेंगे आप लोगों से चैट टॉक टू देम चैट नहीं देख रहा मैं देखो तो सही चैट पे आ क्या रहा है I'm now joined by Coach Kaplan from Sentinels. Now, you guys looked a little bit more comfortable on Breeze this time around, but looking at the rest of the map pool, no Lotus, no Sunset. So what other areas do you feel like you guys feel comfortable on right now and could potentially give you a map pool advantage? I mean, we feel really good about Bind and Split. We feel great about Ascent after yesterday, too. I would say Icebox out of the maps left in this series is our least comfy, so I was relieved they put Ascent ahead of Icebox for us. Yeah, that's where we're at with maps. Thank you very much, Kaplan, and let's see if they can indeed bring it back on Bind. Well, I'm now joined by Coach Kaplan from Sentinels. Now, you guys looked a little bit... That's what we're wondering here, right? And I think, if anything, this is going to be the opportunity maybe for Sentinels to really make the statement. It absolutely will be. Gen.G haven't played this one since Pacific, whereas Sentinels came to Madrid. They debuted the Gecko and the Sky and implemented it really well, taking down a team. Read the map and read the opponents. He reads well. Have a trump card to obviously pull out. Quantum bus very one-sided versus PaperX. Whether or not they're feeling as if this is the composition they want to pull out. But it's interesting, obviously, in the coach interviews to hear, you know, the allusion towards Sentinels prep. Actually, is this a question mark for them? Is this something maybe they're expecting to have to deal with very early on in this veto? Yeah, he said yesterday, Coach Kaplan being him, that Sentinels was kind of playing for a 3-0, and that's where their prep was focused on in those first 3 maps of the pool, which they predicted. It sounds like what he said in that coach interview is that they're playing for the 3-1 here. That these next 3 maps are critical. He's absolutely right. Sentinels have not played a ton of Icebox. When we've seen it, it hasn't looked great, and that has been one of Gen.G's strongest maps in this pool. So if Sentinels is going to lift a trophy today, I think these next 3 maps have to be where it happens. Yeah, there's a Sniffa का mic कितना मस्त लगता है यार. You love to see it. There's सही setup I mean, you know, there's the battle of the coaches and the picks and where we're going to end मुझे up अच्छा in लग this game. रहा And है. that is also part of Dark this में बड़ा मस्त journey लगता that है we've been setup. seeing both of these teams go on, where they're not just trying to, especially with the format, try and like counter pick against their opponent. They're trying to play their game, but in this format right now, you kind of have to manipulate it to your favor. Yeah, I mean, but it's a big question mark for me. You talk about expected results, expected scenarios with the Bind देखने मजा तो आता Let's है. not forget what's happened with Split, right? Even across the map pool, there's questions. But PaperX को देखने में ज़्यादा मजा आता है मुझे. Runs for Sentinels, but if that's kind of the MO coming in, Gen.G were the team to kind of throw that off balance, right? Yeah, I mean, they were the team who dominated them on Split. Yeah, exactly, the map that has been their home this entire tournament. Even back in Americas, they looked incredible there. So honestly, I mean, they rattled them so much that they gave them they gave PaperX the playbook when they played against last time. I mean, it is crazy to think that Sen has lost their best map twice in a row now, and I'm not going to focus on hindsight because they were amazing at that map. And they still are. Nothing away, but I think it gives massive credit to the teams that can dislodge that sort of statement. And it really goes to show how close all these top teams are, that you can big up all the fundamentals, all the ideas Sentinels take, but it just takes one good day of prep, one good team showing up, and that can really change. All right, well, we do have the agent select coming up here. We'll see what we end up getting. And again, I think really it's just, as we keep saying, you know, High Pock, it's just going to come down to the margins really at the end of the day, the small details between these 2 teams. Yeah, don't expect any changes here. We're not seeing any, obviously, Gen.G previously. Whether or not this is a comfort pick for them coming out of the grand finals. Only saw 2 occurrences of it regionally, but they look damn good at it. A close fought affair with DRX, sure, but that finals versus PaperX, this was the home stretch for them. I think the struggle for Gen.G will be playing the solo Sky here, not having that refreshable utility that the Gecko gives you. Sentinels can re-clear extremities, can have that Dizzy back online. Gen.G, on the other hand, doesn't.
It's time to see who has the better ideas here on Bind. And let's go ahead and send it to your cast. You got Sideshow, and I had to say it, Bren, the birthday boy. Love you, buddy. Have fun. Thank you very much. Yeah, Bind being a stage that has been set here between these two teams now for map number 2, and it's a series of unknowns really for Gen.G. I mean, we haven't seen them pull this out in quite some time. They are running the same comp as they did when they qualified for this event of Madrid just before it all occurred in the kickoff. And yeah, some question marks really about their play, about SEN's preparation. में कोई skin अच्छी लगी? They are going to be heading into this now. Clearly, बंडल में से कोई ली तुमने skin? it was the first map SEN बंडल लिया तुमने? Got their pick off when they actually got to wrangle that map, pull that map veto out of the hands of Gen.G. Pissed around again. Very clear focus. Gen.G looking to fight over Shower's control. That's where Tens and Second both are. They are rapid onto the corner here. White face, 3 players though left to fight them. Tens hightailing it out of there. Backs away. Does a smoke drop down at his feet as well just to cover that retreat? Tens वो खेल रहा है. They have changed it. भाई Gecko खेल रहा है. Interesting. Tens just trying to make sure that nobody walked up behind this is the new wall. Risky to try to take that kind of play, hoping to catch a timing on Munchkin. Had he gone for that, Gen.G's approach here is quite slow. Sassy's already used one of his flashes just to let him know that Fountain was clear at the beginning of the round. But now Lakira Munchkin gaining information, peeking into John. John should see this, as you said here, with the jiggle. A little bit of damage done. But John, look, not pushed off that angle. So still getting information that Hookah is clear. That's going to keep 2 players over towards A. Right here. So if Gen.G were hoping that that play would open up A as the weak site, it's not going to be the case. Zels is still with Molly. Although will be about to be set up here. Now, what's the emphasis being placed towards this A side? With the dogs straight through to Molly doing a bit of damage. It has slowed them down. They realize Showers is open. The reposition out into the back of the site. Dizzy up and away. Broken in place. Sassy, good kill. Wingman with the swing. They are absolutely running over these Gen.G players. It was the fast TP and a wrap around. Shut down. Sentinels. A pistol round gained. And just in time for them. Fantastic pistol. Completely turning the tide of the narrative in the previous match that Gen.G were dominating all of those important rounds. And the player to watch there was Tens. He did such a good job. That's a fantastic play from Sassy too, but I love the wingman usage. I love the double up with Zelsis and Zekken. And making sure that they catch Meteor. To me, when I watched Gen.G last time playing on the attack side on Bind, the player that stood out to me was Meteor. He gets so aggressive on Cypher. Oh yeah. A little Alpha Yer-esque. A lot of solo takes into Showers. This time though he's supported with the whole pack almost. He's still Outlaw. अरे टेंस वो खेल रहा है यार गेको खेला है उसने चेंज करा है You don't really want to be funneling into Zekken. Don't want him to get those showstoppers online, but with Showers control gained, peace of mind granted for but a moment. They still need to deal. Omen खेलता था I think इस मैच पे right? They've actually pinged out where John Cutie was playing in the previous round and कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है स्निफा और क्वांटम? क्या जवाब दिया मोहित भाई आपने? मैंने कहा भाई स्निफा ज़्यादा अच्छा खेलता है दिमाग है उसमें क्वांटम तो लाइक अंधाधुन बस पुश करता है Damn. क्वांटम सुन लिया तूने ये? क्वांटम क्या है? रो तो नहीं रहा कहीं पे? Good jump spot from Tens too. क्वांटम भाई खुद ही अपना तारीफे बटोर रहा है। टाइम शॉट देगा मोहित भाई ये? देगा। क्लीन था भाई ये गन यार ये स्किन यार मोहित भाई। उसने शॉट भी बड़ा प्यारा मारा। ये शॉट तो मैं किसी और स्किन से भी नहीं मार पाता ऐसा शॉट तो। आ रही है भाई आ रही है। आ रही है क्वांटम। आवाज तेज कर अपनी थोड़ी सी। हेलो। हाँ। अब ठीक है? बाइंड देखने में मजा आता है। बाइंड देखने में ही मजा आता है मुझे खेलने में नहीं आता। हाँ आ रही है तेरी आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ मैंने क्या किया? नहीं वेलो खेलना और पैसे। यार वेलो क्या है ना यार थोड़ा सा अगर मोहित भाई और मेरा अकाउंट अगर मिला दोगे ना तुम लोग तो इस टाइम चैट में जितने लोग हैं और वॉच पार्टी में जितने लोग हैं सबके लिए एक 30 सीरीज का जीपीयू बन जाए सबके लिए एक 30 सीरीज का सीपीयू बन जाएगा So that could have just been their game plan against Heretics. That is true. This defensive setup, for example, much more. पर थोड़े बहुत मैंने अपने अकाउंट और निकाल दिए तो और भी बन जाएंगे तुम्हारे। फिर तो मॉनिटर भी आ जाएंगे।
हाँ मॉनिटर भी आ जाएगा थोड़ा बहुत। मतलब भाई आ जाएगा मोहित भाई, थोड़ा बहुत ही सबके आ जाएंगे, सस्ते वाले ले लेंगे 10,000 वाले। 12,000 तक का तो आ जाएगा मॉनिटर आराम से तुम्हारा। Munchkin's weakest map individually. I think that's one of the reasons that SEN will have picked this and felt confident about it too. Gen.G's map pool is just outrageously good, but this is probably down towards the bottom. इतना बड़ा shift recover here and put up an excellent attack half. I mean, they might just be the goats. आ गया ये वाइपर मॉली। Let's see. Gander now seriously. वहाँ जा This भी bonus है round is a call being made fast. Look at that Stimmy 10's following it through all the way into Lamps. Stunned up. There was that connection and they are just भाई गंदा मारा टेन ने। Current didn't stand a chance. A second go of things now. बढ़िया खेल रहा वो। सही अबे भाई फ्लैश भी था भाई। भाई गेको बहुत सही लिया है इसने। पता है गेको इतना मस्त बफ हुआ है। हाँ गेको बहुत तगड़ा, सभी खेल लेंगे देखा ना। तो मुझे दे दो क्या अकाउंट। स्ट्रीम क्या करेंगे हम? अच्छा मेरे साथ तो एक अलग ही नाटक हुआ है मुझे। मेरे मेन अकाउंट में किसी ने रेडिनाइट पॉइंट छोड़ो वैलोरेंट पॉइंट खर्च कर दिए। हाँ 550 वैलोरेंट पॉइंट थे, उस किसी ने नए बंडल में रेना वाला कार्ड खरीद लिया। पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उसमें। कर दे भाई। सबको बांटेगा तो यही होगा। अबे यार डिसेंसी होती है कि नहीं कुछ। मोहित भाई का अकाउंट मेरे पास कब से है, कब से जमाने से है, एक जमाने से है मोहित भाई का अकाउंट। कितनी बार तो मोहित भाई का अकाउंट पे खेलने के लिए मोहित भाई अवेलेबल नहीं रहते, लोग मुझसे पूछते हैं कि खेल लूं, तो मैं ये कहता हूँ भाई खेल ले मगर कुछ खर्च मत करियो। लोगों को पता नहीं क्यों खर्च करना है। इसमें सिंक्स अच्छा है, वो पूछ के मेरा पता क्या किया था, मैं अपना एक फ्रेंड को एक आईडी दी थी, मेरे वाला क्रॉस है डिलीट कर दिया। सिंक्स हमेशा पूछता है भैया मैं ये वाला क्रॉस है यूज कर ले भाई। Waiting out the molly and Texture's just not scared at all. Look at this guy. White तेरे वाला क्रॉस है वापस दियो मेरे पास। Worried at all with the wall was down. Plenty of ले लियो, कॉपी ले लियो, कॉपी मार लियो। The acknowledgement tens. What is the call to be made? They are really just out wide and open. If this wall goes down, they should know the timing for it. It's going down. Flash through and out there it is. Meteor. बहुत गंदा प्रेशर था भाई, कैसे बच गया भाई। I'm not too sure. Jumping up and hopping up. That was a trailblazer kill. I just saw filling up the feed. ट्रेलब्लेजर ने मार दिया भाई उसको। इतना लो था। 3v3 है। What is Munchkin's call here? Zelsis is still waiting over by Showers, यार ये बहुत गंदा फ्लैश आ रहा है एक्चुअली क्या होगा। Love the play. पर से अब तो 2 सेकंड में 1 सेकंड में एफ ले लेता है वो, फटाक से आ जाता है। पहले टाइम लेता था, फट से आ जाता है। 0.5 to 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। यही डिसाइड करेगा। इसी की पोजीशन डिसाइड करेगी। मॉली मारेगा मुझे यहाँ तक लगता है। नेड है उसके पास। मॉली है, ये गए, दोनों गए। And the fight is called. Munchkin. A lot more left to do now here with only a few seconds left. Removes the seeker. Was pesky in his face. A bit of a problem, but again, time against him. अरे भाई with the spike in the नहीं, ये spike ही नहीं। No time. Clear win cons. Acknowledge there. Zelsis, yeah, he runs his way out. Very well handled from Sentinels in this round, and Sassy stepping up. A lot of what Sassy has been doing on this team. पता नहीं क्या करा उसने मॉली बचा के। वहाँ पे मॉली मारनी, हाँ वहाँ पे मॉली मारनी, वो आप पोस्ट प्लांट के लिए बचा। वहाँ पे ब्रिमस्टोन पीछे ना, इसे बॉक्स के पीछे यहाँ। अच्छा नेट तो मारा था इसने। नेट इतना नहीं हुआ ना डैमेज पे। मॉली मार दे तो कंफर्म हो जाता। नहीं मॉली भी इतना कवर नहीं करती भाई साहब, चूस जाती है मॉली 2 सेकंड में। अरे बाहर तो निकलना ही पड़ता है। बात कर रहा हूँ मैं, बाहर तो निकलना ही पड़ता है, इधर उधर तो बंदा होता ही है, दिख जाता है, इन्फो तो मिल ही जाती है। नेट 2 बस लगते हैं ना साले के। यार एक तो बड़ा घटिया रेस मैच। अरे कुछ भी बोलते हो मोहित भाई, इतना अच्छा एजेंट है। सबसे इजी एजेंट है, सबसे इजी एजेंट। लोगों को जमाने लग जाते हैं जेट का डैश। ओह शॉट, मुझे लग ही गया था भाई टेक्सचर 1 टैप मारने वाला। मुझे वैसे लगा था। हाय ये देखो ऑल्ट ऑनलाइन है। Evened out, and Munchkin is looking to try to down short. He's posted himself in an aggressive position. The bot Tens want to re-clear.
Molly was sent flying. Oh, he missed it. Still walking into the shit. How Nice. is he finding all of these साहब kills? निकाल दिया भाई बीन आ ये मौली से किसको मारा? I thought Tenzin Tekken had the awareness सबसे that best Munchkin वो was there trip in kill था भाई. second. He ends Head up बढ़ getting गया caught as well, so giving away his positioning. He's going to have to pull out heroics to get this. It's looking awesome for Gen.G. Yeah, doesn't do anything there. Gen.G double tap. Almost अगर every जंप किया तो मारा. accounted for. सेव करेगा. सेव राउंड है. सेव हो गया बैक हो गया. Decisions be made for them. Backing away from this one. Brutal decision that they have to make in this spot. आउटलॉ सही गन है इको राउंड में. यार सही गन तो है मगर महंगी बहुत है यार. एक कमिटमेंट है वो तुम्हारा. How have Gen.G managed to pull that one देखते नहीं हो कितनी महंगी है यार. It felt very similar though. इको राउंड से हाफ बाइक ले बात की. यार इको राउंड में यार अगर मैं तो कहता हूँ मार्शल क्या बुरी है क्या इको राउंड में? पट्टा पट भाई. I think it was round 17 actually, yeah. हाफ शील्ड वाले वही है ना. गेम पे डिपेंड करता है पता है. Over towards B. नहीं इको राउंड में अगर आपके सामने वाले के पास शील्ड नहीं है तो भाई मार्शल पटापट वन शॉट मारती है बॉडी पे. Similar again. There's a distraction play over towards B and Munchkin gets into position. This opener is lovely. But half buy करते हैं तभी तो. What actually ruins them. मगर मैं तो कहता हूँ कि वो तो विदाउट इको राउंड भी अच्छी. अम्मी But this is the play that I think wins the round for them. Munchkin finds the timing. वो तो मुझे लगता है वो तो नॉर्मल राउंड में भी अच्छी. भाई 140 है बॉडी मोहित भाई. तभी तो बोलो. हाँ सही कह रहा है. इको राउंड में बढ़िया है. सही कह रहा है तो. मैंने खेला नहीं है ना. मैंने खेला नहीं है ना उससे कभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अभी मैंने ध्यान से सोचा ना तो बहुत बढ़िया है इको राउंड में. यार ये कोरोना Just trying to min max as well. हां चलाने में मजा आता है. Keep it flowing. कोई नहीं अभी कुछ दिन बाद मोहित भाई और मेरे पास. अबे भाई साहब मंचकिन यार ये मोहित भाई कम से कम दूसरी तीसरी चौथी बार हो चुका है मंचकिन ऐसे कुत्तों की तरह. याद है मिड में मारा था इसने. हो गया राउंड खत्म. चलो इको राउंड था. आय हाय हक दिया. Do a bit of that damage, but yeah, guess what, Meteor, he's not letting him get away with that. Punishing the gun pickup instantly there. And I said earlier that from what I'd watched इको में आपका काम करते I thought Bind was Munchkin's weakest map. नहीं आपका इको राउंड हो तो ज्यादा बेटर है. When I think about Gen.G, I'm thinking mainly about texture, पता है कुछ लोग तो उसको बाय राउंड में बाय करते हैं. ये है बस यही है असली. यही तो राजा है. जिसके पास ये नहीं उसके पास वैलोरेंट में कोई स्किन नहीं. Because it adds that additional layer. Munchkin है कि नहीं मोहित भाई? fragging on map 1. He destroyed them last time these two teams played split. He's been outrageous in this tournament. He's doing it again now here on Bind. Nade off the Dizzy's contact and a fight as well out into the open. भाई किसको जड़ दिया? टेक्सचर को जड़ दिया. A little bit of chaos now strewn really into the mix here, but the orbital strike was committed. No kill from that one though, and Gen.G wounded. Be limping themselves away now back over towards that A site. They know that Zelsis took the teleporter, so they know that there's a Brimstone around there with ult to be able to deny the plants. This isn't a round where Gen.G can just try to fight quickly. नहीं मुश्किल है राउंड. ऑर्बिटल स्ट्राइक है इनके पास गाइस. The teleporter at the very beginning of the round. बहुत मुश्किल है राउंड. ऑर्बिटल स्ट्राइक है. Expecting a crunch from SEN. अगर उन्होंने सीटी कंट्रोल ले लिया तो इजी हो जाएगा. अभी गए थे क्या कहीं? हाँ डैड की दवाई डाल. भाई इन्होंने भी कमिटमेंट दे दी भाई. भाई क्या अरे स्पाइक ड्रॉप हो गया. गुड ट्राई दो. अभी भी निकल सकता है 1v2. सीटी का कंट्रोल हो जाएगा तो हो जाएगा. भाई मैं होता तो टीपी मार देता पर. पैनिक टीपी. He actually might be able to tap here and use the teleporter even, but he's looking to try to take the fight instead. Trying to make a play. Every angle he's. Ay hey. What a round by Zelsis. Yeah, Vibe Merchant in the flesh. ये होता है फैंटम का हिसाब भाई. कुछ भी हेडशॉट लगता है. इसलिए मैं फैंटम से खेलता हूँ आजकल. मेरे लगते ही नहीं वैंडल से. मैं टच ही नहीं. मैं फैंटम मैं पिनक जाता हूँ मिनट से पहले. जहाँ हेडशॉट पड़ा बंदा मारा नहीं मैं पिनक जाता हूँ. कितनी सही चल रही है फैंटम. एक्चुअली एक और चीज है इसकी फर्स्ट शॉट एक्यूरेसी वैंडल से ज्यादा अच्छी है. हाँ वो है मगर दिक्कत वो नहीं है. दिक्कत ये है कि जब हेडशॉट पड़ जाता है उसके बाद कभी कभी सामने वाला वेंडल वाला मार देता है ना मुंह पे थप्पड़. डबल हेडशॉट पे दिक्कत हो जाती है. हाँ थप्पड़ मार के चला जाता है ना जब तो ऐसा लगता है क्या इतना इतनी मेहनत करने के बाद.
मगर वैसे अपनी मौली में ही चला गया भाई ये। भाई हक दिया शो स्टॉपर। उसको नजर नहीं आया थिंक He's distracting. He's pulling 3 players over towards A. दो फ्लैश होना ना बहुत भाई बी क्लीन था भाई। Who's in a deep position. ये लोग टीपी मार नहीं रहे यार, बहुत वो क्या कहते हैं स्टिफ खेल रहे हैं। ओह spam down at a triple point and now there's the call finally a TP by हीलर भी है फ्लैशर भी है भाई वापस आ रहा है। make the right read onto this one एक्सपेक्ट कर रहा है going to be able to catch Meteor. Do they predict discipline? हक दिया मीटियोर नहीं। थोड़ा सा ऊपर था वो बच गया बस, किस्मत थी उसकी। एडजस्ट नहीं हुआ, माइक्रो एडजस्टमेंट माइक्रो एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। कहाँ जा रहा है? जहाँ जा रहा है वहाँ तो नहीं निकलेगा निकल सकता है। वैसे वॉल है भाई उसके वाइपर वॉल की वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। ये देख हो गया काम। वही तो बोल रहा हूँ, वाइपर वॉल की वजह से प्रॉब्लम होगी। वैसे क्या कर दिया लो, हो गया खत्म ही हो गया लो। हो गया हक। मैं कहा ना जहाँ जा रहा है वहाँ नहीं निकलता। वो लोग एक तो मेरे को ना अपने राइट एंगल पे मारना बड़ा मुश्किल लगता है, पता है। अपना लेफ्ट एंगल तो बंदा बहुत अच्छे से मारता है, मैं राइट पे नहीं मार पाता। आपका राय वो होगा ना आई मेरा लेफ्ट अच्छा है, लेफ्ट पे फ्लिक्स देता हूँ मैं, राइट नहीं अच्छा मेरा इतना। मेरा पता है मैं सेम हालत तेज सैटल करता हूँ ना, मैं राइट साइड से सैटल करने नहीं पता सही से, लेफ्ट में इजीली कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, और तू भी लेफ्ट ही होगा ना, वाला लेफ्ट हैंड से ज्यादा अच्छा देखता है। हाँ मैं लेफ्ट हूँ। बट मैं नहीं खेल पाता राइट पे इतना अच्छा ना, हाउ द पीपल प्ले। मेरे को बहुत दिक्कत होती है स्ट्रेफ करने में राइट पे। अभी तो और जानते हो मोहित भाई, मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। इस टाइम ना राइट ना लेफ्ट ना अप एंड डाउन कुछ नहीं चला। टाइम हो गया, 1 सेकंड में आया। ये ट्रेंड कैसे बैठा हुआ है पूरा अर्ल्ड कर। क्वांटम मछली अच्छी लग रही है ना, खा ले। जहरीली मछली है बे। इसके पता मूवमेंट देखना, टाइम का मूवमेंट करता है इसके साथ। एक बार इसका बस मूवमेंट। ओए भाई कैसे जिंदा? भाई कितने लोग भाई डिटेन हुए थे। अरे स्मोक नहीं डालना था भाई लोगों को यार, जल्दी से स्मोक नहीं डालना था। अबे ये देख कहाँ पुश कर गया। मैंने भाई इनको पता है ना कि रेडी थे। साइड कंट्रोल था भाई, उसके बाद इन्फो भी है, साइड कंट्रोल भी है। भाई क्या घुस रहे हैं भाई, ये क्या हो क्या रहा है? ब्रॉलिंग हो रही है भाई, मार रहे हैं भाई। TRX बन गया भाई ये। स्प्रे It's just far too much for Sentinels to deal with. This team reacts so quickly. The calls are amazing. अच्छा साइफर, ये मीटियोर बहुत पता है वो है, फ्लैग कुछ ना कुछ realizing that the solo play from Meteor had taken enough space to get in, and instead of doing something simple like throwing Karen's molly over towards that smoke and stopping the SEN, मैं देख रहा है यहाँ लगा दूँ, they get inside it themselves. और तो नहीं I लगेगा। was seeing this all the time when these two teams played on Split. To me, one of the biggest issues was SEN could not keep up with the pace of decision making from Gen.G. Like there, Tens throws the wingman because he's thinking, अच्छा ये है हाँ मेन, inside this smoke, I'm gonna get into it first, and he doesn't realize they've already thought of it and got there quicker. वहाँ पर किल फीड नहीं दिखेगा। नहीं फिर ये भी है ना, इनको आधा मैप दिखेगा। Cool idea as well from Sentinels. ये मैच कितना लेट खत्म होगा, 3 बजे तक खत्म होगा ये शायद। यही बेस्ट जगह है। यहाँ लगा दो, मैप यहाँ प्लेयर नहीं दिखेंगे कौन मर गया कौन नहीं। प्लेयर नहीं दिखेगा। While SEN
felt like they were pulling away. अरे किलफीड और इसके बीच में एक जगह होती है वहां लगा ले। सही कह रहा है, अरे मैप किसको देखना सही है। Battered economy now. Shoddy by. Now Zelsus can still. अरे वो एंगल भी चेंज हो जाता है, वो राइट साइड पे बंदा कोई कुछ मार रहा होगा वो भी नहीं दिखेगा। हाँ ये भी है। Oh my goodness, you do not want to be standing there. Yeah, they're expecting somebody to be playing for the orb, but nobody's one away, so just a hard read perhaps that they were going to go for that on the eco. अरे Sassy and Ten set up to go for that re-clear down B long. Texture though, he's in an anti-flash. ये सब अपग्रेड कर दी मेरे भाई ने। क्या अपग्रेड कर दी? रीवर जितनी मिली उसने ठोक दी। All that information, Trailblazer this timing could be absolutely everything. It's broken up close. ये इतना ऐसा लग रहा है मुझे कब से चल रहा है मैप ये, मतलब हर राउंड एकदम एंड तक जा रहा है। अबे एक-एक करके हो रहा है ना, एक वो जीत रहेगी, वो जीत रहेगी। इतना मतलब इतना लंबा लग रहा है, मतलब राउंड भी पूरा एकदम पूरा कंप्लीट राउंड चल रहा है। Only shot one person. So Gen.G might be thinking, right, they 7-5 कहाँ लगेगा? Let's re-hit B now. देखते हैं कि आपका प्रेडिक्शन कैसा है। भाई हम मरेंगे, बी पे पूरा फुल स्टैक है ऑलमोस्ट। बहुत पीछे से खेल रहे हैं वो ए पे तो। Dog taking ground there. ये जज लेके बैठे भाई, ट्रिपल स्विंग भाई। फ्लैश करके आएंगे। दो फ्लैशर है ना? To just triple up into hookah, but with Lakia not spotting anything. नहीं एक ही फ्लैश है। Have a pivot here. नहीं वो 10s का भी तो है। अच्छा उधर कह रहा हूँ हाँ। Not worried at all, are they? Nade almost a punishment on it. मर गया, ओबे मरा, बच गया। Heal online too, so he will be topped all the way back up. This is where मंचकिन को भी हील चाहिए। don't look so good anymore. अब तो यार लाइनअप इतनी होंगी इनके पास यार। नहीं बट गन्स नहीं है ना। Lackey with a late rotate now doubled up with him. अच्छा खेल रहे हैं। चलो अभी इसने मॉली मार के रोक लिया। वो देख उधर उसको भी हील कर दिया। Absolute miracle shots. They're already setting up and gearing up for it now. Out wide again. भाई क्या सेटअप है, क्या क्रॉस फायर है भाई, क्या क्रॉस फायर है भाई, बहुत गंदा क्रॉस फायर। नहीं बचेगा ये भी, मतलब राउंड नहीं निकाल पाएगा। वो क्रॉस फायर इतना तगड़ा भाई। भाई 5 तो हो गया, आप देखो 7 होता है कि नहीं, लंबा लगता है क्योंकि राउंड के बीच में टाइम। I'm loving this attack side calling from Gen.G. I think they're playing the macro game really nicely. इनको पता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा जीतने के लिए। बहुत क्लोज है ना मैच। And one of the reasons is I had no idea Munchkin was capable. Mid time थोड़ा। We've seen him at global events before. अच्छा राउंड के बीच में टाइम ज़्यादा देते हैं क्या? नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा। Has previously been in a position to do this kind of thing. They are not the creme de la creme कड़ा of क्या Korean होता है? talent, at least not until this year. They've always played second fiddle. Munchkin and Meteor were playing खड़ा प्रचार they didn't even have the option to कह रहे लंबा लगता है क्योंकि राउंड के बीच में टाइम कड़ा देते हैं। ज़्यादा देते बढ़ा देते होंगे बोलता हूँ। बढ़ा देते हैं हाँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा है क्या टाइम। अच्छा वो कह रहा है कि बेसिकली वेट चल रहा है ना, कि राउंड उतना फास्ट नहीं इसलिए लग रहा है, कह रहा है ऐसा नहीं है, एक 1 by 1 चल रहा है ना एक्चुअली। 2-3 राउंड इकट्ठे कोई जीत नहीं रहा, ऐसा चल रहा है। ये जॉन क्यूटी का रियल नेम है क्या? वो जॉन क्यूटी जॉन होगा कुछ और क्यूटी सरनेम होगा कुछ। नहीं एक जनरल लिखा हुआ है जॉन क्यूटेन टेरेंटिनो। Number 1 seed of Pacific for a reason. टेरेंटिनो नाम है साले का। It's not so much in my opinion that they're standing on the shoulders of giants and building on what Pacific have done before. They look to be straight up leapfrogging them. Oh yeah. How many times have we seen DRX and PaperX try to break through that glass ceiling? क्या पूछ रहा है? And yet Gen.G on YT. What ceiling? हाँ भूतनी के मैं और कहाँ स्ट्रीम करता हूँ। Why not? It's actually नहीं kind उसका of पता है रियल नेम तो कुछ और ही है। It's unbelievable. उसका असली नेम है मोहम्मद Gen.G on the attack side, predicting the fact that किसका? SEN are going to be on an eco. जॉन क्यूटी का। Maybe right. मोहम्मद अमीन क्या? Deep smoke dropped down मोहम्मद here for अमीन Sentinels just to try and at least hold on to control. OUARID क्या इसको क्या मैं होगा कुछ भाई पता नहीं, अगला कर। A question entirely here because again walking slowly up towards it. Reaction is नाम जान के चिल करो। point for texture. Just sit through the wall. Sassy barely survives. Very lucky for Sassy there. भाई आउटलॉस लिए इन्होंने, देखा तूने? क्या हाँ एक दो आउटलॉ हैं। What is this gameplay dude? Interesting. रात साउंड जीते थे ना, फिर भी को नहीं आई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अबे उसके पास पैसे भी हैं, देखो ना टेक्सचर के पास। हाँ पैसे नहीं है। अदर भी पैसे हैं, नीचे पैसे तो बहुत हैं। एक्स्ट्रा करवाई करी थी क्या इन्होंने? अभी आउटलॉ कहाँ गई एक और जो थी किसी के हाथ में?
Oh हाँ extra buy करी थी मंचकिन के पास थी या मीटियर किसके पास हाँ इन्हीं दोनों में से किसी के पास साइड तो क्लियर है ये हुक्का छोड़ के Terrible concoction. John QT, the sole defender, just needs to hold down his little portion of territory. But Meteor just seems so damn aware. ये ले जॉन क्यूटी भी गया भाई वन शॉट है एस से भी एक शॉट ही है Brutal situation for SEN to be in. This site's so difficult to retake Lucky. Wasi Oh, body block there for a moment. फंस गया वो बच गया भाई क्या क्या थ्रो कर रहे हैं भाई वो जिंदा है कि मरा भाई बहुत गंदा क्रॉसफायर बहुत सटीक सेटअप कर रहे हैं मैंने देखा यार इनके क्रॉसफायर बहुत अच्छे हैं यार रेगुलर गेम यहाँ टाइम ज्यादा देता है आई थिंक हो सकता है भाई पता नहीं 27 सेकंड बिटवीन एवरी राउंड नॉर्मल है क्या अभी तो वो हुआ था अरे वो उसमें वो भी तो होता है ना बीच में टेक पॉज नॉट टेक पॉज मतलब कि जो पॉज लेते हैं हमें तो घंटा नहीं मिलता 27 सेकंड मतलब कि इनका राउंड शुरू होने में भी टाइम लगता है क्या ऐसा कुछ नहीं यार ऐसा नहीं होगा भाई मेरे नहीं तो रिदम 1-by-1 मैप चल रहा है ना तुम देखो ना स्कोर हाँ एक वो जीत रहे हैं कि ये जीत रहे हैं और राउंड पूरा एंड तक खिंच रहा है लगभग हाँ पूरा चल रहा है भाई वो इसीलिए ऐसा लग रहा है आगे हमारी बिरयानी क्या खाया मोहित भाई आपने आज मैं पास्ता ले रहा हूँ भाई और साथ में शेक लूंगा कोल्ड कॉफी बढ़िया मैं बिरयानी खा रहा हूँ घर पे बनी बिरयानी कल खाई थी मैंने घर पे बिरयानी नहीं पुलाव खाया था मैंने घर की बनी And actually a really important one I think for SEN to be able to get online. You know, they've got the ults here. Zel's just one away from having an orbital strike too. कुक अरे तू आता ना तेरे को कुक से खिलाता भाई क्या सेक्सी बनाता था वो खाना पुलाव वलाव मस्त बनाता था यार घर का चिकन खाता था मैं भी मस्त eager for the fight, eager for it indeed, and there it is. The first punish online. I mean, operators थोड़ा सा गंदा पुश था भाई पहली बार तो डबल स्विंग नहीं थी सोलो स्विंग कर रहा था पता नहीं क्यों यार उसने भी नहीं सोचा होगा कि ऑफ लगा के बैठा है भाई अटैकिंग में जो ऑफ करते हैं भाई डिजेनरेट होते हैं भाई सीधी सी बात है ओए हाय भाई बराबर हो गया भाई बराबर हो गया बढ़िया Nade rebounds, but not enough to stop this one, and Zekken still has the rocket showstopper available. Pit now going to be dropped down here with the rocket cleared through and out over the top. It's lifeless. Baron in nature. Finds him anyway. क्या बोलता है क्या बोला बे चिक हो गया भाई मारा भाई एकदम भाई कोने में लगाइए कभी जिंदगी में Zekken takes over in the 11th hour. वही है ना फ्री किल समझ रहे हो मोहित भाई But if this is where SEN thought they had the biggest advantage over Gen.G, और क्या होती फ्री किल होती है इनकी बुद्धि वालों की गुड रीड दो कहां मारना कहां नहीं मारना it's an ocean for Gen.G. हां ये तो है from Sassy there utilizing the brim smoke ducking बाकी कितना कोने में मारा भाई हां वाइपर के फ्री किल नहीं होते लेकिन उसके फ्री किल होंगे अच्छा वाइपर का कौन सा फ्री किल होता है बे मोड़ डाल दो लाइनअप पे फ्री किल भाई वाइपर में मरने के लिए सामने वाला बंदा विलिंग होना चाहिए वाइपर एंट्री थोड़ी लेता है ब्रिम के अल्ट के फ्री किल नहीं होते सोवा के अल्ट के फ्री किल नहीं होते रेस के अल्ट के फ्री किल है भाई ब्रिम को अल्ट मारता है ना कोई भी तो उसमें से निकल सकता है आदमी भाग सकता है चांस होता है ठीक है रेस से भाग सकता है रेस से घंटा भाग सकता है पड़ गई अल्ट पैर पे तो मर जाओगे आसपास कहीं पे कोई नहीं ऊपर मारते तब भी लोग है ना 149 डैमेज करता है लोगों Just for you guys, so thank you for this event. Now, Anna, I want to ask you. Today, we just introduced a new agent to the pool. What can you tell me? भाई ब्रिम की ऑल्ट से साइड क्लियर नहीं होती मुझे ये पता है Something we've been working on for a really long time. I'm so proud of the teams. आप ऑल्ट करके घुस जाओ डबल सैचल मार के लोग वैसे ही पीछे भागने लगते हैं Both from a design perspective, creatively, मैं तो लोगों के मुंह पे मारता हूं तब भी लोग हवा में उनको नहीं vibrant and beautiful, and it's going to do so many मैं great तुम things for तटती the हो game. So I can't wait for everyone to get to play them next week. I thought the show match today was amazing. It was so good. Congrats to Mixwell and Team España. ये वैसे नई डार्क खबर है किसको पता है Yeah. क्या चीज
Okay, we love that. Thank you very much. Now, bueno, obviamente creo que lo habéis entendido, ¿no? Que tiene muchas gracias de que tengamos aquí Battle Pass el showmatch ha estado genial y que solo en una semana ya podéis estar probándolo y creo que va a estar muy guay. Now, Leo, of course you're on the competitive side. What do you think about this gorgeous event here in Madrid? Oh my God, we are so happy to be here. We've been dreaming about coming to Spain for a very long time. This is our first time here. You all have been incredible hosts. Thank you so much for embracing VCT. We love you. This is just the first event of the season. There's a lot of VCT to come in 2024. We're gonna jump straight into stage 1, and we're so happy to be here. So thank you all again. Nos da las gracias por estar aquí, por ser tan acogedores. Esto para los que no habéis hecho el workbook. Pero la verdad que lo estáis haciendo genial. Obviamente todavía nos queda todo el stage y todo lo que queda por llegar en 2024. Recordad, cuanto más ruido hagáis, más conscientes serán de lo que necesitamos estos eventos en España. Pero obviamente esto no ha terminado, así que seguimos con el partido. Do love a bit of crowd work. The people riled up here for the second half of Bind. Full importance. Keeping our eyes peeled now onto this pistol round. And I know that Sentinels have changed up a lot since the last time they played Bind against Heretics with this composition. But when we saw them play, a lot of short execs with late showers backstabs. कितने की बड़ी 30-40? अरे अल्ट्रा 2 खाली 90,000 की है। नहीं पता है 30-40 की होनी चाहिए यार। 30-40 की ऐसी है ऐसी 30 की। एक वॉच सीरीज 9 है एक अल्ट्रा 2 है टाइटेनियम वाली। Wingman. I'll be happy with both. Yeah. Gen.G are so happy to follow the noise and trust the read with their defensive rotates. This is such a key thing when you watch them. They stack sights like nobody's business. You've got to run fakes against them. And now, Trailblazer coming down short, trip broken, that starts to pull texture away. But only for a moment. He realizes there's nothing following it, and they trust their gut and stay on B. 30 seconds. It's so difficult to sell a fake against these guys. ये लड़की दिलवा दो स्निफा भाई। भेजता हूँ ईमेल एड्रेस चेक कर। Looking to commit down short again, and I said these 4-1 execs, they were bread and butter for SEN. Mutia, is he going to be spotted? He's playing deep tucked inside that smoke, and he could again be the difference maker. Body of Wingman, orbs picked and placed back up. Plant down here for Sentinels. It's all about how he gets played into the post. But Meteor, he was spotted out. Wide into the smoke. Nade flushing him into the back of the side. He is down and low, but hopefully a heal online. Potentially there still. Need to hold down to this ground here for Sentinels. Gen.G, they are methodical in the nature, the way that they approach a lot of these retake situations. It all comes down to the minutiae. These tiny little details flooding now. Front of the site. Shots found and kills finally online. The defuse. Team in the defuse. Karon half already. Has he bought them time enough potentially for Gen.G here with 2 players left? Lakia, the orb, at least there, another kill, found and out. अबे भाई क्या मारा है भाई? मोहित देखा क्वांटम तूने? डिलीट कर दिया लाकिया ने। भाई क्या करा इसने? From the first Masters भाई क्या हो गया ये? Coming out here in the most recent Lakia. भाई कुत्ते की मौत मारा देखा तुमने guys? These shots are unbelievable towards the end. Defending from every different avenue. देख रहा है कुछ भी पट headshot. Oh my goodness. Lakia himself said in a recent interview with Pedro Romero that his biggest mistake in his career was joining DRX, then known as Vision Strikers, after having that success in his first Masters event. That is gold. Yeah, imagine that. Gold. And now he's overtaken that team that he ended up joining and having more success here in a grand finals. Sentinel off the charge, but Sentinels is a great charge out wide and open. Look at the volley, the damage all combined and collected. Growled into it. Gen.G obviously favoured. He's got the spike and he's in their spawn. It's a weird one. It is a really strange one. Actually, if Karon ends up going down, although I don't see how he possibly could. Not with the judge, surely not. But the A site would be open, and there is simply no way. Just understands the timings inherently. भाई पता कैसे होता है इन्हें? Left on Zekken.
knew he was back sight. Before being made from his teammate. Second. Earns himself a plant at least here. Really, shouldn't be any opportunities for him to win it out. It'd have to be a bundle of mishaps and mistakes here from Gen.G to really topple this one. So. These are just the consequences of Gen.G winning a beautiful pistol round here. They get themselves up to 8. And Lucky is going to take the defuse. He's now only 2 away from getting Seekers online. They know that Karen's saved the judge into this as well, so might anticipate him being positioned over to Hookah for the next. Normally that's going to be Munchkin's job, defending onto Hookah. And when I was watching Gen.G playing Pacific on defense, they loved to push. Not in a coordinated early round manner, but just looking for those mid-round timings, trying to abuse the fact that on Bind, teams don't tend to be as spread across the map, watching everything all the time. Of course, Sen's comp doesn't have the cipher to be able to rely on. Those trips are not going to be there in markets. So everybody finds the mid-round push timings. They're good for it. Here's Munchkin looking to cover Hookah, while Karen picks up short. Sentinels. Clearly aware that Munchkin likes to play that aggressively. भाई देख रहा कितनी util use करवाई है. This side is where we've seen weaknesses from Munchkin before, but he also loves to take fights so much that if he's on fire as he has been today, and he was in their last match, he could easily be the win condition for their team. इनका मैप पे क्या है इसलिए ऐसे खेल रहे हैं. मोहित भाई अभी आपने पिस्टल राउंड नहीं देखा यार. Rapidly at least. But Bren, if the गंदा मारा भाई उसने. क्या नाम है उसका? Where else is there to be other than short? Lucky है. Nana walking right into a Caron. Too much util, the dog doesn't clear it, but he does break it anyway. Oh, bhai. Lands a shot. Good adjustment in the end, but Tense does return that fire. Now flash blinded. Texture still only for a moment. Sen's line and 8. Now there's 45 seconds here for Sen. Collect yourself and cool down. Sentinel Potential pivot to a different area, but they've committed the smokes. They want to know what his last play is. That Texture. What is that? Pulling away. Trip's still not done. Players up yet. John QT is right there again. TP through. That was only Zelsis. What is the call to be made? Focus from Gen.G finally, full committal, but they're going to be walking again into Munchkin. Never losing his ground here. Crossfire देखो. Now Meteor doubled up crossfire setup. This could be nasty. This could be brutal. Obliterated. Gen.G. देख रहे हो crossfire. उसने बेट किया अपने आप को, बस स्विंग करके अंदर चला गया. It's all accounted for. It's these defensive rotations again, Brent. Gen.G are so far ahead of it. Sen think that they've got the timing to be able to go through the teleport like that. Gen.G have already got Meteor not just over towards B, but already set up a crossfire with Munchkin. And beautiful little bait play there. Munchkin letting himself be seen first and dragging them into Meteor's team अब retirement की तरफ बढ़ती हुई. When you watch Gen.G on defense, इनका तो नहीं पता. You would call it over-rotating. retire की तरफ बढ़ता है. So often. They have such a trust in the read. This need to push Texture. कुछ अलग लेवल पे खेल रहे हैं साले. मतलब भाई. Right on top of the box satchel. Second setup now with this Bucky forward position, but. मैं भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा. अभी बनी है टीम ये. Oh Meteor! Oh, what a snap to the side. That's the wrist break it there from Sassy, and hello! What a time to come alive here for Sentinels. Much needed, much anticipated now. Texture trying to dodge and juke that timing here. Entertainment onto Lakia. Is back to all of them, chasing them down, hunting them down. Sassy wants even more, offloading the Seekers. Why not a winnable spot, a winnable position? Caron. All alerted to the presence of the almost with the fire. Still 2 versus 4. Spike has to get planted here, so Sentinels will at least earn that. Everybody on Sen inside lamps. It's a really unusual post-plant position. अबे एस किसने किया था वो? Gaps to be played with. Alt इसके पास है. नहीं बनेगा. Not after losing previous gun round, not after losing most of the scenarios where they had that advantage. Thrash off that tap. Satchel over the top here and a seek to punish. There it is. Texture, last one left. Last one alive through the box. Nade earned again. Tucked, hiding away from the position as Sentinel's trying to play this one just with a little bit of intelligence. John gets that information! And a shot to the head. MasterCard well earned. What a timing for it too. Definitely felt like Gen.G was running away with this game. And this is a must-win map for Sen. This is where they felt the most favored. This was their pick of all of the maps they could have gone to.
And as the desk was mentioning earlier, they're kind of playing for primary map hai. hoping they don't even need to get to Icebox. Incredible shots being hit there, and Sassy on fire here on Bind. Murdering that notebook. We expect to see those a little more, I think, from the Gen.G players. But here it is. Texture, Texture with an operator looking down B long. Yeah. He's got himself onto a really nice forward angle. Spotting out this operator is going to be pretty key and essential here for Sentinels, but they don't have anything concrete to clear it out. Look, even a Dizzy just clears it. Jump spot from second was really out wide, but giving up that space. But Gen.G putting such a heavy premium on control of just both B long and showers. Even got the cam set up. Munchkin willing to hold it down. Yeah, and they've actually not really heard much on either side. Caron goes for the gamble over towards B. I'm interested. Munchkin didn't quite find the timing to take a duel, but he's now tucked in a position, going to get cleared by that flash. Yeah, certainly should be. Zekken eager to take the fight there with a boombot just right behind him. He knows the rough position here of Munchkin. Karen's back immediately over towards A, so there's still 3 players defending this. But only 30 seconds roughly left here. Mosh Pit sent flying over the top now as well, trying to take the space. It's only 10s and he's left alone to his own devices. So for the rest of his team here with only 25 seconds, that's a spike drop down on top of it. It needs to be heroics and it needs to be masterful play at that. Munchkin almost going down to the stray satchel, but it matters not. Overwhelming aggression from Gen.G. Full lockdown in approach and play. And seconds dwindling down to nothing. It's Gen.G up to 10. The stack, the crossfire, way too much for Sen to deal with. And not just that, Gen.G fighting close. Not trying to hold into backside and rely on the fact that, you know, they'll give Sen the play and Gen.G का खेल रही है मतलब they fought almost win नहीं दे was रही लोग taking contact from the short trips. Look, they pick off 10s here. They're looking to try to fight them in short. They mollied off showers as well, so Zekken couldn't help. They picked that apart and fought aggressively. Gen.G वाला राउंड निकाल दिया क्या? From HSK actually, during another interview where he said that Alex reactions तो मस्त होता है हाँ. That's a very conscious thing that they've come into this year trying to do. बहुत genuine reaction देता है भाई वो. To be the team नहीं that picks that timing and fights you. Working so damn well for them here. Gen.G. Look at the rotates, Brent. Look at the rotates. There is less than 10 seconds into the round, and they're planning to 5-stack B. Second showstopper. Loose here was vulnerable, but up close to the corner. Does he clear? Lakia! Blinded! What? Found what? Snaps it. Sentinels. They found an advantage, but it's about converting it now into a round win. And they've got an inkling that there's a ton of players here stacking the site, but they're not fast enough to pull the trigger and go for the rotate through the teleport, which would have been a play to open up the A site for a free plant. They found themselves that player advantage now. Gen.G with the players stacked looking to re-explore. Oh man, look at this call to contact re-clear. Are they going to be ready with the rifle play? It needs to be online. It is. Sentinels. Clean sweep there out towards it, forcing Gen.G out in the open. That slight pause keeps them alive for now. And it was really necessary, Josh. I mean, you end up losing that one. Gen.G up to 11. The economy just been dwindling. Sentinels getting rocked left, right, and center. But what is this? The timing on that Dizzy. It just blinds Lakia right. Yeah. Well, he was 1 HP, I think, after he went through the Viper wall as well. Yeah, so just, but still, caught down extraordinarily low. The crowd here behind Sentinels, willing them forwards. They're not easy rounds that Sentinels are winning. They're not at all. Again, Gen.G had 5 players B. That's fast though. Zekken is in front of the snake bite as well. A little bit of damage, almost a kill onto Lakia. It's good damage. It's going to be permanent. There's no heal online. At least he can't heal himself. Now the Trailblazer for the re-clear. Munchkin, you can't be calling for that one again. He just goes down with it. Yeah, and these are the times when Munchkin ends up getting punished, and it's looked rough for Gen.G. We haven't seen very much of it. Munchkin's been playing a superb game, but that's the kind of stuff that was happening in Pacific, and Sen have taken full advantage. There's 3 players very close to key ultimates as well, though the orb is not here. Sen put another pause in the round, maybe hoping that Gen.G would do another exploration. They've got to be cautious about Texture's ultimate, and Garon's, for that matter. The more they let the time click, the more that those ults could just win it for Gen.G. Josh is waiting for the fuel here, just to prop both of it up, make sure he can clear some of this util. Trip.
Spotted and broken. Not be pulling any of the Gen.G players away. It looks like positioning is being shifted. No, still a reclay of Texture. He's happy to hold this close angle. 30 seconds left. This one he has the rocket available to him. Another trip. This time. Noise pressure on either side. Rotation is now called with 20 seconds left. Guess what? What about gone now? What about Charon's ult? Charon's ult, yeah, it's not really going to be handled here at all, and that's going to be sending it out with Wingman. He's going to be broken. No, they just scrambled it correctly, but it does catch on the second. So the plan is online. 4v4 though. भाई अगर सही जगह ऑल्ट मारता ना तो राउंड खत्म था आए हक दिया लकिया ने लखविंदर ने हक दिया लखविंदर ने फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें भाई अबे भाई ऑल्ट की स्क्रीन पे है Already approaching and expecting that position, and he just has to let it rip anyway before anybody even taps. Gen.G so fast with the move. Sentinels shut it down. Nice. क्या डिलीट कर रहे हैं ब्रो? भाई उन्होंने भी अच्छा रीटेक किया था ज़ेन पीछे नहीं हट रही. The tension in those kind of rounds when it gets down to a post. भाई इनका ही मैप है. Sentinels were so close to major ults getting online, and I think if Zelsis hadn't found the kill to be able to get his up, there was all the chance in the world that round was going towards Gen.G. Tens with two gorgeous kills towards the end, off the back of the Dizzy, and Gen.G forced to take a timeout. Their first of this map. Frankly, it might be the first in the match that we've seen. I'm not sure whether they threw one in on Breeze. Certainly a rarity. You don't see them often. Calling for that timeout, cool down in the play here, because this is Sentinels actually making a very decent go of it. Yes, they won here and there, a couple of half-buy rounds when the economy wasn't too good, but that was, full-on gunplay occurring. Remember, though, that this should be the map where Sentinels are the most favoured, and they're still behind by one round. Yeah. Even though they're favoured in the next, due to the economy advantage. It's not clean sailing here, not by any means. Gen.G fighting for every inch of this. Not willing to give up any of these maps that they so carefully selected. Now, in terms of what Gen.G are going to be talking about in the timeout here, I think it's going to be about those defensive rotations. They've been stacking the opposite site to the lurk. So when John QT goes and puts pressure and breaks that trip, if it doesn't feel like an exec down short, they still keep players on B. And this time, John QT took the space and called for the rotate over. So that's kind of the opposite, I think, of what Gen.G were expecting. And it's possible that Solo and HSK are just addressing that and coming up with a slight variation in how they play the defense. We'll have to keep an eye. Lakia now eager for this orb, looking at one away from the ultimate, but again, might just earn it himself, he does, with him dropping, sent to the spectator seat. He's gonna have to sit on the sidelines and really fester and wonder about what went wrong there. Now it is explosive, second, through and out to the elbow position, spraying down Texture. This is explosive, into the back of the side, they try and stand their ground, but they can't hold their candle, not against the weapons. Huge one, clean one, Sentai the game up. And those ults that were close to being able to be put online a couple of rounds ago, where Zelsis Orbital Strike made all the difference. Now look at them. Huge tools available to SEN. And they're able to lean on those. It will knock the Gen.G economy once more. And the game, which Gen.G had under some level of control, will start spiraling away from them. Gen.G just churning them up now. The stack, 3 players over towards B to start, and Karen in a very committed position. Super committed, but he backs away now with the knife out. Close tucked here. Sentinels. This is looking like you thrashed. Yeah, round हारा तो जीत गई. Yeah, and second follows it up. राउंड तो जीत गया भाई वो. सबसे ज़्यादा परेशान तो मोटा लग रहा है. साला मोटू ना. First one to fall, fills up that feed for them nicely. अभी थोड़ा comeback हो रहा है. Try and fight back with a pit down. Something has to really dislodge this one here. Maybe even a few stray bullets. Sassy finally planting elbow control for them. On top of that, it's Hookah. They didn't plant though. They're still getting it down now, and Gen.G are taking elbow control in the meantime. It might work against them because it has cut off these angles, and the core mate to contact works out beautifully. Thrash through with the flash as well. On top of it, it comes down to how can they win these kills out? What the fuck? As the Wrangler beast and his rifle lit up like beacons, but it matters not. Jesus. It feels like भाई the first time भून in रहे हैं this भाई. series. I'm sure it's not, but they get that lead at least by 1. And
relying so heavily on getting those ults up. Look at this play, Munchkin stuck while the rest of his team ended up playing for retake. He's just hoping to go 1-for-1 in this spot. Zeken's entry has so much to help him. Seekers coming from B long, a thrash, nade into backside, smokes to cut off all the angles. Sen just decided to drop the nuclear codes and just send that one into B. And it's a great time to do it too. Oh, the punish on Alakia. Huge. Great read that he was going to be going for the ult off at the start of the round. And that's play, just going their way. Yeah, that's what you need. You need to keep these anti-ecos clean for Sen if you want them to start building up. Because Gen.G are super dangerous in these kind of moments. You cannot count them out. They're so apt to take risks in these rounds that have paid off well in the series so far. Completely ignoring hookah. It's a smart call as well. You don't want to walk into those shotguns, but the trips close will cause some issues here. Celsius has just used all 3 of his smokes, one, I believe, to drop off hookah, so they've got to commit while these smokes are up. Fine with a trip get any values, just over, above the top of it here. Second satchel now to the ball position. We'll meet you down. Really no more danger. Sentinels, they are steady as anything here. They can feel it on the precipice. They're getting that 12th round here. OT कैसे आएगा बुत्ती है? अरे OT मतलब वो match point. OT मतलब match point. अरे गलती से बोला तो सही बहरा. Though Sassy looks to take the fight instead of relying on the double up. Zelsis, safe pair of hands there. Rifle in them. घुस के मार रहे हैं. हाँ वो gun diff था ना. You can see the motor mouth popping off there. Just gonna save and take this time to address with his team. भाई tessellation कितना दिख रहा है इसमें? Once rifles get online. भाई tessellation कह रहा हूँ क्या कहते हैं? Because this is crunch time. Gen.G need 2 in a row. अरे यार tessellation नहीं. क्या बोलते हैं उसको? And they do not seem happy with the idea that Sen are going to be able to win on their map pick. Fuck, भूल गया मैं. There is still a chance for Gen.G to get back into this one, but these recent rounds have all gone the way of Sen. A reminder though that they did it by using ultimates. Even here, Zeken pops the showstopper. यार FFX जिसके लिए यूज होता है यार, किस चीज के लिए यूज होता है? PAA. Not just the save for Munchkin to talk. हाँ anti-aliasing यार. गंदा लग रहा था उस गन पे anti-aliasing. मतलब aliasing बहुत बुरी थी उस पे. Anti-aliasing यार. But Bren, what I'm saying here is, yes, it's been 5 in a row for Sentinels, but crucial rounds have been won off the back of ultimates. Yeah. And ये पीछे लड़की है क्या? Right में. I mean, they're one away from getting Seekers back. Sassy is fried. But I think Gen.G's game plan has not necessarily been the issue so much as them fighting an uneven war. Finally, there's going to be a bit of that parity. Even guns on Gen.G's side. Sentinels running out of those ultimates. 24 and I think you are right. I mean, you're right on the money in terms of just talking about the game plan. भाई sex नहीं समझ में आ रहा तो क्या करूँगा ये? क्या gender ही नहीं समझ में आ रहा? Steamrolled almost by just that sheer ult economy that's just been churning, generating. कोई ना कोई इन दोनों में ट्रॉफी देगा यार. ट्रॉफी पता है कुछ भी बोलो? Gen.G have to put a stop to it. ये ट्रॉफी बहुत अच्छी बनाता है. Sentinels on their map pick. Yeah, we're talking about it running out, but Sassy could certainly play for the Showers Orb here. It looks like Sen are set up for a fast Showers take. And unless Meteor's able to pull off some magic, मेरे को तो नहीं अच्छी लग रही है वाली यार. Vastly outnumbered. Let's see it. Seekers are going to be on. मुझे और ग्लास वाली मत लगी थी. Your sleeve, Meteor. Team needs some magic. Now he's backing away. It's just that aggressive cam. He's been putting them. कोरियंस के लिए different gender बना. They've already seen मत बोलो भाई ये सब बात. Situations. Sen are going to know. It could trigger some kind of Showers crunch though, so they've got to be a bit cautious. Look. Tens, Zeken ready to punish the players that might come. दिल में रखो छुपा के सब बातें. Using Sassy as bait. And now they walk forward, get Seekers online. Texture. Close up onto the angle. Dog broken. Boombot as the first layer of contact. Munchkin here, pushing out through sand. Is Munchkin, and he's been doing this at least in the qualifiers. It could be a punishable element. They have to be aware of it. Gaps in the play for Sentinels, and it looks like Celsius is seemingly clearing most of this. ये देख रहा Congo line जा रही है भाई. These are slow rotates. Second though, making a little bit of noise. Munchkin's going to make the call. Look at these rotates from Gen.G. All come in, beating the rotate. No way. भाई check करा भाई इन्होंने कमीनों ने right corner check किया भाई. Not overplayed his hand. Make sure
that he just feeds the और info लेकिन रीड मार ली इन लोगों ने what a देखो call इस this is. Gets the hell out. 30 और seconds. ये This तो is going टीपी भी to नहीं be कर सकते a टाइम full ही नहीं है committal. Straight है into टाइम the है ball. बिल्कुल How wide? They're not expecting it. Gen.G players holding their ground, rooted and snared into place, but they're willing to just fight tooth and nail. ओ भाई लग गया भर दिया भाई रोटी भाई रीड इतना गजब का था ना कि वो Oh, what the hell? एक कमेंट मार देना मीटर ने निकाल लिया And what a call by Munchkin, man. मीटियोर ने बारिश कर दी भाई Saw किलों him की go for those sun pushes all throughout Pacific, often getting punished for them, but played this one to perfection. रेसिस सब है लेकिन छुपा के रखते हैं Sentinels have got to be scratching their heads after that, thinking how भाई मल्लू वर्ड रेसिस नहीं है क्या सब बोलते रहते हैं the whole way over towards B and had made noise throughout showers. How did they get the read? How did they know? Let's go. भाई हमारे यहाँ तो रेसिस्ट कुछ होता ही नहीं है बिहार के लोगों बिहारी बोलते हैं तो वो भी तो रेसिस्ट ही है हमारे यहाँ कुछ नहीं होता भाई तुम नॉर्थ ईस्टर्न को इतना चिंकी पूरे दिन करते रहते हो और नहीं होता तो वो शाब जी करेक्ट नेपाली हमारे यहाँ तो रेसी इतनी है कि हम भाई किस कौन कहाँ का मतलब अमेरिका वगैरह में और मतलब pretty much वेस्टर्न साइड में क्या होते हैं हाँ मतलब 2-3 ही होती हैं ज़्यादातर मतलब मेजर racist is the medium to connect basically sort of क्यों मुंबई वाले यूपी वालों को भैया यूपी बिहार वालों को भैया करते रहते हैं वो भैया कहते हैं हम चूतिया बोलते हैं उन्हें Gen.G are going to start the stack on A with 4 players. What a gamble to push them through. इतनी टेप कौन लगाता है भैंचो 4-1 setup. Don't see it. Looks like they're going to try and set up Munchkin for that deep pit in through the main choke, and he is going to layer it down. Needs to be defended in time, but here's that showers fight. Molly drop down. Gen.G walking, but losing the fight. Initially, it's up to they expect. नहीं expect करा भाई You're joking. ये लो ये दोनों रिवील भी हो गए हो गया एक तो ही गया It just flips in an instant. चिड़िया ने देखा होगा ना दोनों को बोले थे ना स्निफा उठ जाएगा ये मैप जी ये देखना क्या लगा रखा है यहाँ पे स्प्लिंटर सेल खेल रहे हैं लोग ये बच्चे पता है वन वे हुक्का से कोई कूद नहीं सकता कहीं से भी This just looks absolutely brutal for Sen to deal with. ये देखो टीम Dire straights. Not only the trips, got to worry about Karon's ult, denying. Meteor himself as well, he's just tucked. मैं तो जीजी लिखने वाला था भाई कोई नहीं आज बैठना है मस्त 3 बजे तक हैं 3 बजे तक क्या 3 बजे तक कोई चलेगा मैच अभी लगाता हूँ मैथमेटिक रुक गया हाँ 9:30 बजे इनके मैच शुरू हुए हैं 12 बज रहा है 2.5 घंटे में अभी दूसरा मैप कंप्लीट हो रहा है मान ले 2 मैप और चलता है इसके बाद ठीक है 3 मैप और मान ले फाइनल तक जाता है 3 मैप और चलते हैं तो 2.5 घंटे और लगा ले तो साले 2.5 तो बज ही गया उसके बाद 1 मैप और 3 भी पार हो जाएगा अगर फाइनल मैप तो गया तो 100% 3 बज जाएगा भाई क्या बात कर रहा है तू अभी तो याला मैप भी खत्म नहीं हुआ 9:30 बजे नहीं शुरू हुआ था एक्चुअली में 9:45 पे शुरू हुआ था यानी 2 घंटा 45 मिनट लगभग ये वाला मैप लंबा खिंच गया बहुत Potter and EG talk about that all the time. Trust in your gut, and I feel like no team embodies it more at the moment than Gen.G. Yeah, full committal into the calls that are being made here, but the sides are swapped around now. अब तो मेरा मन कर रहा है कि सेंटिनल जीत दे है. I'm gonna go with this one here. Attacking, but already through the choke point. Still, nice, jealous. Pesky intruder out towards and showers control. इधर काली स्किन चला रहा साला. अलग ही है भाई चले काली स्किन चला रहा ये सीधा टीम पे करके हील करने के लिए वाह अरे साइफर गया इनका बड़ा बंदा गया बड़ा बंदा
भाई साइड कंट्रोल तो है इनके पास। ये लोग देख भी रहे वाइपर देख कहां देखने जा रहे सिटी, मतलब इनको हुक्का का फर्क ही नहीं है। Yes, but what is Munchkin really going to do? Tens is on a great angle. हुक्का से कोई कूद के मार भी सकते हैं इनको आराम से। कुछ नहीं हो I just don't see how Munchkin clears this. भाई सीधा वॉक करा है इसने क्रॉस एयर में, गाली बक रहा होगा टेंस को। Because they don't know where Gen.G are, they could be all the way up heaven, all sorts of spots. It's going to cause the push out here by Sentinels, meeting them right into texture, but he wasn't waiting for it. As a trade attempt by Caron, he will fall too. Everybody topples, Sentinels. Flawless हो गया। Flawless here. The first round of OT, and another chance to seal. Flawless, भाई flawless. Rare moment of hesitation, I think, from Gen.G there. Munchkin clearly wanted to take matters into his own hands and was hoping that Gen.G would find Sentinels making a mistake, going and re-exploring A for information. But Sen was so happy on B. Just one watching spawn, one watching B long. Very good patience and diligence from Sen to get themselves up to yet another map point. They've got to start closing these though. बंद करिए। It's integral. You look at the overall map pool in this best of 5 grand finals. It's an uphill battle almost all the way through. Bind is a necessary component that they need to take away. Bren, Munchkin's in a really committed position here at Hookah. I don't see how he dodges Boombot Dizzy. Here it is. He's out wide anyway, just hates the fight to him. भाई क्या मारा है भाई। Wait. How are you doing something like that, Munchkin? Mummy. The two best players arguably on Sentinels. Put down like nothing. Finds that timing before the utility's used perfectly. Oh, no. This is going to get scrappy though, because they want to fight over the spike. They're not content with just playing the numbers advantage. He is willing to join them, but he has cut off that angle here with the Trailblazer not broken down. Is he actually going to be stunned up? Bullets raining through TP. Core texture is right there. Oh, let's go. Here's the reinforcements. Here's the whole bloody team. Everybody joining the fight and the fray. Fast rotation. Stimmy. भाई गए अभी तो भाग रहे हैं कुत्तों की तरह। That's an amazing read by Sentinels. They know that all three players are there, and this is a race that Sen have won. Rare for them to be able to beat the defensive rotates, but a rare mistake as well from Gen.G. They have got a man down. Sassy hears the noise cues, but he just pre-fires and guesses incorrectly. The gamble not paying off still. Not willing to give up that space, but finally here, Mazals is out in the but still the kill found 2v2, running and gunning to just retreat and cover that section. Now the defuse, Meteor sticking all the way. Sprayed down, half earned, but Nice. Let's go. Even it up 1-2-1, and I said it was necessary. And it certainly was necessary. यार हो जा 3 बजे के लिए। अब लिखो जी। हार्ड मारने को तैयार नहीं है इस पर आज। मगर ये उनका मैप था, ये सोच के देख लेना मैं। किसका मैप था ये? सेन का। सेन का। Converting a 3v5. इसके कान तक दर्द हो गए थे इतना। Incredible stuff so far. Plenty more action where that came from. Do not go anywhere. लेकिन बहुत चिल्लाता है पता है? हम सुनना कभी इसको। हैं? सबके नाम सुन। सॉसी सबसे शांत है इनमें। बहुत चिल्लाता है इनसे। अरे जेल्सिस को दिखा, जेल्सिस और सेकंड को दिखता हो कैसे चिल्लाते हैं वो लोग ओपोनेंट टीम पे। वो बाद में करता है वो आई थिंक। कभी तो निकलते हैं रेज है यार, ये अपने आप निकलते हैं। लेट्स विन। क्या चीज? जेलसिस का इट्स लाइक रेज ओनली नो, इट लाइक कम्स आउट एनीवे यार, बहुत प्रेशर होता है उस टाइम पे। हाँ बट यार मोहित भाई ना होता है यार, इट्स हर प्लेयर का अपना अपना। सबसे खतरनाक प्लेयर कौन है? वेलो में स्निफा पफ मत बोलना। मेरे हिसाब से इस टाइम सबसे खतरनाक प्लेयर एक्चुअली क्या है ना, एक प्लेयर खतरनाक नहीं होता। टेक्सचर बहुत अच्छा खेल रहा है यार, और नहीं तब भी इतना नहीं हुआ। टेक्सचर बहुत अच्छा। अबे रुक तो जा, सबर तो चाट ले।
टेक्सचर अच्छा खेल रहा है और क्या कहते हैं उधर वो अबे हाँ वो क्या नाम है समथिंग नहीं यार समथिंग तो अच्छा खेल रहा है मगर थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है इतना बढ़िया नहीं खेलता हाँ अरे उसका नाम क्या है अरे उसका नाम क्या है यार माइंड फ्रीक बहुत तगड़ा खेल रहा है माइंड फ्रीक उसका भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है नहीं माइंड फ्रीक का पागल है क्या बहुत गंदा खेला माइंड फ्रीक बहुत अच्छा खेल रहा है I think डिवाइस कंसिस्टेंट रहता है हाँ ये बात सही बोली डिवाइस अच्छा कंसिस्टेंट रहता है वेरी कंसिस्टेंट भाई सबसे मोहित भाई डिवाइस से ज्यादा कंसिस्टेंट 4 सेकंड रहता है बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है 4 सेकंड भाई मैं डिवाइस को देखा डिवाइस को हमेशा usually left for the clutches and he usually get them out या फुल फ्रैग खेलना होता है एग्रेसिव भी खेल लेता है मैं एक प्लेयर का नाम लूं जो सबसे कंसिस्टेंटली खेल रहा है नहीं लाइटनिंग फर्स्ट कंसिस्टेंटली ट्रैश खेलता है मैंने नहीं बोला तूने बोला एक्चुअली कहना है इसका सवाल थोड़ा गलत है सबसे खतरनाक प्लेयर इज डेंजरस ओनली बिकॉज़ ऑफ हिज टीम एक्चुअली डीमन वन ऐसे बहुत अच्छा प्लेयर है अगर तू ये कह रहा है खतरनाक प्लेयर आई विल से समथिंग पागल है भाई पूरा वो मेरे को डीमन वन और समथिंग हां एक बात है भाई अगर तू खतरनाक बोल रहा है ना तो पूरा पागल है वो समथिंग खेलता है भाई बिल्कुल ही अजीब ही बावलों की मौत मारता है भाई वो रोल में इनिशिएटर लेके ऑफ बिना मतलब ऑफ लेके घुस जाता है मुंह पे लोगों के अजीब तरीके से खेलता है भाई मार भी देता है भाई गंदा गंदा भाई एंगल होल्ड करके बैठता है तो उसके शॉट मतलब 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स लगते ही लगते हैं एंगल होल्ड करके जब बैठता है तो लाइक जितना मैंने देखा है अगर तुम लाइक बिल्कुल प्योर एम गेम और वैसे खेलते हो तो इट्स लाइक डेफिनेटली डीमन वन और लाइक समथिंग समवेयर बिटवीन बहुत अच्छा खेलता है डीमन अगर उसका और ज्यादा विन रेट वाला टीम लाउड ही होगी नहीं लाउड अच्छा लाउड बहुत कंसिस्टेंट है यार बहुत ज्यादा बहुत कंसिस्टेंट है बहुत क्या जेनजी थी नहीं पेपर एक्स 2 बार से कंसिस्टेंट है सेंटिनल तो पहले सीजन 1 में कंसिस्टेंट थी पहली सीजन में आई थी उसके बाद से तो हग रही थी लाउड हर सीजन अच्छा खेल रही है हर सीजन और क्या कहते हैं में भी तो ज्यादा चेंजेस हुए हैं फैनेटिक 2 सीजन से कंसिस्टेंट थी लाउड है सबसे कंसिस्टेंट टीम फैनेटिक थी पहले फैनेटिक 2 बार मतलब कि 2 एक ये हां मतलब पहुंच रही थी जीत नहीं पा रही थी बट गुड टीम इस साल नहीं पहुंची ना नहीं अब क्या मास्टर वो चैंपियंस तो जीत गया अब क्या चाहिए ना आगे लग रहा है 2 बार सेंटिनल्स की जर्सी मुझे बहुत बुरी लगती है और ये से यही जर्सी है टट्टी सी सबसे मस्त मिलती नहीं जब खोलो तो साली आउट ऑफ स्टॉक रहता है जब उनकी वेबसाइट खोलता हूँ आउट ऑफ स्टॉक रहता है अभी देख लो अभी खोल के दिखाता हूँ आउट ऑफ स्टॉक कल ही देखा है मैंने ये देखो सर्च में भी आ रहा होगा मेरे पेपर एक्स ये देखो सर्च में भी आ रहा होगा पेपर एक्स जर्सी सर्च में भी आ रहा है मैं दिख नहीं रहा होगा मगर ये पहला वाला एक बात है ये देखो महंगी जर्सी साइन की है अरे who gives a fuck about the ugly shit that shit is fucking hideous अरे बहुत अगली लगती है भाई मेरे को ये देख रहे हो नहीं दिख रहा भाई अरे स्ट्रीम देखो ना मुझे ये तो फिर आने वाली है ये वाली है नई वाली सोल्ड आउट है इसलिए इसका कलर ऐसा दिखा रहा है ये बहुत बढ़िया थी ये वाली हां अच्छा ये नई वाली है हां ये नई वाली नई वाली बढ़िया लगती है मतलब वो भी अच्छी है सब सोल्ड आउट है बहन we keep talking about how he's so explosive. I mean, no questions about it now. The most explosive player in terms of impact, in terms of what you see
him doing on screen. And I think so far it's 51% overall round win rate for Sentinels. It's 70% when Zekken gets the first blood. Yeah, right, in stocks now. Sold out लिखा है. Getting a multi-kill. He has over 80 multi-kills already at this event. अरे वो वैसे इन स्टॉक्स लिख रहा है insane. ओमन जा रहा है ये बंदा. वो हर चीज के लिए कह रहा है. फ्रेंड्स ओमन बहुत जोरदार खेलते थे लेकिन मजा आता था इसके टाइम ओमन. But you know who I got to give some love to here? I got to give love to my ball Black brother over there, orange Sasi. My guy's holding it down. This dude seriously has been impressive, Mike. And this is a question mark coming into this. How is Sasi going to be? How is he going to perform? And I think in this one, क्या he मेसी का लगाना था? exactly why you want this world champion on your squad. Sure, and we said this earlier, top of the show. Sasi maybe not numerically. मेसी का लगाना था और Fnatic Fnatic का. You got to say it, right? You're bottom of the scoreboard. You'll be the first one to tell you. Yeah, you're lacking the Fnatic की ठीक अच्छी है. particularly with this composition, like you've just noted there, having that second layer, particularly for some of these slow mid rounds. अभी कुछ दिन पहले मेसी ने भी तो पोस्ट लगाया था जब ये वाली स्किन्स आई थी. कुछ ये क्या कहते हैं टीम स्किन्स जब आई थी ना तो मेसी ने भी पोस्ट लगाया था. हाँ. देखा था मैंने उसका पोस्ट था इंस्टाग्राम पे. पता है VCT की चैट में क्या स्पैम हो रहा है? हैप्पी होली. Because for Sentinels, in my mind, this is a must-win. If they lose this map, they'll need to go to Icebox, where they are absolutely not favored. ये लगाई थी मेसी ने. भाई क्या व्यूज चल रहे हैं? क्रू व्यूज देख एक बार. 139 के व्यूज है. पिंक ज़्यादा ही है. इतना ज़्यादा पिंक अच्छा नहीं लगता. यही लगाई थी मेसी ने. बेबी पिंक अच्छा लगता है. They have a real chance to lock in that trophy to win the first for Pacific. It's a pivotal map 3. We'll see how things land and send it back over to Brennan Sideshow. चालू हो गया क्या? Even more important with this one here. Almost. Getting us started. Ascent. Agents like staging ground. Territory left to be claimed. Both of Ascent है ना ये? to the best of 5. नहीं Ascent हो back and 4. कौन सा है? Bind हो गया. Breeze हो गया. So much weight on Ascent. And so much uncertainty, I think, in terms of how these two teams are going to perform. It's a map that Sen like to float. I recently saw them perform incredibly well. ये Gen.G का pick game against Paper Rex, Zekken in particular, starting on defense. Gen.G moved up over towards tiles. आ गया टेंस वापस. Both teams, when we saw them play against back Paper to Rex, Omen. did a lot of the defensive set कल पता है plays. ये इस पे इसी मैप पे क्यों खेल रहा था? आज That was ओमन a खेल रहा specific है. anti. टेंस? ओमन ही तो खेला था. It's a trap play in नहीं mid क्यों for खेला Sen. था? PRX का साथ था ना. Contact over towards B. ओमन खेला था. Question is how do Sen ओमन खेला था. the turret takes a contact? It's going to be Zekken. बहुत मारा था 4 सेकंड को. अरे यार मैंने वो कल लगाई थी ना अपनी पोस्ट जिसमें 3 स्क्रीन थी. उसमें मेरे पैर दिख रहे थे. मैंने अपने पैर उस पे टेबल पे रख रखे थे. मेरे पास इंस्टाग्राम पे फुट फेटिश वाले लोगों के मैसेज आए. वो मेरे ऐसे साथ भी है. मैं होटल में हूँ. मैं अपने पैरों की साइड डाल रखे. एक बंदा हुक्का बना रहा है. क्यूट फीट. ये पे किसी को लगे हुए. मीफा भाई ये The alarm bot to notify them of this one. होता है भाई कुछ होता है. हाँ कुछ लोगों को होता है भाई. चल होता है. Damage now on the Munchkin. स्टार होता है कुछ वो होता है. It's going to be made with the alarm bot broken. Here it is, the flurry and rush from the Sentinels players. उनका default ही है Ascent पे. अभी नहीं बता सकता. Paranoia goes wide and does not connect onto the necessary. भाई मरेंगे ये मरेंगे. भाई चिपक गए भाई. ग्राइंड पड़ा. भाई शॉक गार्ड मुंह पे. साइड खेल रहे थे. और Zekken जब तक ऐसे होल्ड करके बैठता है ना, एक कुत्तों की तरह मारता है. भाई अभी भी कुछ भरोसा नहीं. साले पागल हैं ये. लाइक और मंचकिन भाई दोनों कुत्ते की मौत मारते हैं. बस Zekken की पोजीशन पता नहीं थी. Slaps them down with that one. A pistol round now granted here for Sentinels. Zekken gets the clean up on the final. यही नाइफ लेता है Ascent पे. यही गन लेता है Zekken. सेम है ऐसा एकदम. बिल्कुल डिफॉल्ट है इनका. कुछ चेंज नहीं करते. This kill right here. Zealous यही खेलता है. Under pressure, suddenly the B side looks like it's going to fall a little. Very good setups from Sen. भाई ध्रुव राइटी एंटी नेशनल है भाई. All looking good. कौन है ध्रुव राइटी? ध्रुव राइटी नहीं जानता है. ऐसा लिखा है कई जगह. मैं नहीं कह रहा हूँ. उसका नाम एक बार उसकी वीडियो देखना. इतना घटिया वीडियो बनाता है ना. घटिया वीडियो बनाता है. हेट मिलता है. क्यों देख रहा हूँ मैं? क्या लेता है? ध्रुव राइटी को बहुत हेट मिलता है पता है. घटिया वीडियो बनाता है. मतलब घटिया नहीं बनाता लेकिन वो मतलब उसका हेट बहुत मिलता है ना उस चीज के लिए.
हाँ तो कंट्रोवर्शियल चीज बोलेगा तो हेट तो मिलेगा ही भाई। कुछ भी बोलते कभी-कभी तो वो कुछ भी जैसे क्या बोलता है कुछ भी मुझे बता। मतलब कभी जो चीज लॉजिक नहीं मारती वो बोलता है। बता तो सही मुझे एक चीज तो बता कि ऐसा कुछ बोला जो तुझे ये क्या तरीका होता है ऐसी जिंदगी में कभी तू कुछ याद रखेगा कि नहीं? व्हाट द फक वाज दैट शॉट? सारे बढ़िया शॉट मारे हैं भाई। सेकंड तो भाई नेक्स्ट लेवल। भाई अगर तुझे कुछ चीज की समझ में नहीं आ रही तो बोलेगा तो सही कि हाँ ये चीज वो सही नहीं बोलता। Are Sentinels going to go for the defensive set plays and that aggression? Because this would be the perfect round to try something like that. भाई मैं तो जानता हूं ये 13 प्रो जीत गई टीम। थोड़ा मोहित भाई आप पॉलिटिक्स वगैरह से दूर हो तो दूर ही रहना उससे। यार आप कहाँ पॉलिटिक्स से दूर हो? खैर नेवर माइंड। मैं दूर तो हूँ आइडली। हाँ मतलब इन पर्सन ही दूर हो। इन पर्सन दूर हो। वैसे किसको वोट देगा इस बसने में? मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, अपना वोट अपने पास रखूंगा। अच्छा आइडिया है। फायदा कुछ नहीं वोट देके ब्रो। जिसको जीतना है वो जीतेगा ही, सबको पता है। ना जिसको जीतना है वो जीतेगा ही, सबको पता है। इतना धान मतलब आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। दिस इलेक्शन इज जस्ट बुलशिट at this point. Durrati makes political videos. Durrati के लिए दोस्ती ना तोड़ो। नहीं दोस्ती नहीं तोड़ते भाई। हम लोग इतना नहीं लड़ते हम लोग इन सब चीजों पे। In through it, he spots it, but doesn't expect the second player. Still, Celsius. हाफ नहीं करने दिया। Has to really stick this one and pray for his life. अबे बच गया। पता है? मर गए मगर एक ही बंदा बचा। भाई उसके पास 1 हेल्थ बची हुई थी। क्लासिक का स्प्रे भी हल्का से बाहर हो गया। चलो राइट पे मार रहा था ना, ज्यादा राइट चला गया वो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में तो नहीं, जो सच्चाई वो सच्चाई है ब्रो। भाई जो मतलब जो लिखा मैं पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हूँ इन सब चीज़ों के मामले में। लाइक आई हैव वेरी गुड लाइक डिसेंट बिट, नॉट वेरी वेरी गुड, बट आई नो करंट अफेयर्स क्या हो रहा है। लाइक न्यूट्रल पॉलिटिक्स, करंट पॉलिटिक्स, आई एम वेरी अवेयर ऑफ ऑल दैट। जो चीज़ सच्चाई वो सच्चाई है भाई, तुम जो चाहे तो कह लो। हाँ और ये भी सच्चाई है कि तुम कुछ भी कह लो होगा वही। भाई कुछ भी पड़ता तो शक। अरे भाई ये क्या मारा भाई? कुछ भी मार दिया। ले भाई अब वो ऑप उठाएंगे और भाग लेंगे। वो ऑप उठाएंगे भागेंगे, वो रोज सवारी पैदा नहीं। ऑप और ओडिन उठाओ भाग लो। क्या कह रहा है? The one way used to be more standard, but plenty of teams running the full smoke that blocks up A main. It's really annoying for the attacks to deal with. You're seeing that Lakia is investing the drone pretty much every time. And actually, if they start to get the read on that, you know, Tens or Celsius could start dominating that smoke and trying to spam him down. तो ये बोलना चाहता था कि indirectly history फिर से repeat होगी। क्या होगी? हिस्ट्री रिपीट होगी। हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री बनेगी बेटा, रिपीट नहीं होगी। अरे समझ रहे ना मतलब क्या बोल रहे हैं? 400 प्लस सीट आ रही है भाई, मैं अभी लिख के दे देता हूँ। माहौल ऐसा बन गया भाई। Yeah, 400 प्लस सीट क्यों आ रही हैं ये जानना हो तो कभी ऑफ स्ट्रीम बात करना है। 400 प्लस नहीं होगा मुझे लगता है। माहौल तो ऐसे ही बना हुआ है यार 400 प्लस वाला। ट्रिपल ए सेटअप है, पुश करेंगे। Yeah, but it did onto Tens, who was thinking about using Paranoia. Now mid. Name of the game here for Gen.G. 4 players waiting. Zekken, too much to account for here. Wow, still gets out and still has a dash as well. In fact,
He's gonna use it. Yes, opts for it. Hit it with the readjustment there still. Now he nails it. Body's hitting the wall. Texture though, he's so rapid. Look at this guy. फिर भी भाई अरे रुक ही जा देख से भागे जा रहे इसको निकालना है वरना खत्म नहीं होएगा जान गया उसकी पोजीशन Lakia, sole survivor. One shot left for Zekken. Shot down. Oh, sure, base here. Punish. A lot more to do. Wants to make a go of it. Lucky has been astoundingly clutch, but he's not going to get anything this time. Zelsis shuts it down. What a round from Zekken with the operator in hand. Oh yeah. When we saw him play against Paper X, barely pulled out the op on defense actually. Mostly rifling, mostly going for those defensive aggression plays. Now he's just allowing people to walk into him. Gorgeous reposition onto some of these angles too, playing around the utility very well. Bit of a question mark for me. होली पे घर नहीं आ रहा हूँ मैं तो was going to play with the op. We saw him absolutely dominate on this map. यार मैं तो कंफ्यूज हो गया बहन की आंख Mostly with the rifle. कि तुम कब कहाँ हो कभी गुड़गांव कल पैकिंग करने गया था ना कल गुड़गांव अभी आप ये बताओ कि होली वोली खत्म होने के बाद रहोगे कहाँ पे घर पे रहूंगा अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 31 को अच्छा जहाँ रहता हूँ रेंट पे रहता था मतलब अब वहाँ से हट रहे हो ना अब नॉर्मल अपने घर पे आ रहे हो नॉर्मल आ गया घर पे हाँ From both of those players, Texture and Caron. Confusion सर बढ़िया नहीं समझ गया वो 2-3 महीने के लिए वहाँ था मैं एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला ना काम के साथ फ्लैट ढूंढने का तो मैं आराम से ढूंढूंगा तो उसमें लिखा ना पीजी में पीजी वो चूतिया होता है साफ नहीं होता ये क्या साले हो The reflank now, just a reclear into mid, and now regrouping up here for Sentinels. Damage done, but still on the opposite side. पता है ये ओडिन को बफ नफ करना चाहिए बहुत ज़्यादा वो हो रहा है Close Caron, he's gone. Lakia, Hunter's Fury available. अल्टी उसके पास Indecisive though in terms of how he wants to play this one. पुश कर देंगे ये अल्टी यूज़ ही नहीं कर रहा है पता नहीं क्या किया उसने Mr. President, Sentinels. टाइम भी नहीं था आराम से अल्टी यूज़ करके मार देता Player disadvantage with the up ready. You shouldn't be winning retakes. But it's Zekken again who actually finds 2 kills. वो बंदा कैसे उदास बैठा हुआ है नहीं वो देख रहा है कुछ नहीं बना उसका जो सोच रहा है उसने मारा अच्छा था बट लाइक शॉट लग गया उसका and he gets this kill kind of for free but ये good थ्रो awareness. That is bonkers that they played that one around, especially when Lucky had the Hunter's Fury to work with. पता नहीं साले ने ऑल्ट नहीं मारी यहाँ पे You're right, it really did seem like he wanted to set up a shock dart play or the Hunter's Fury and just realized हाँ वो शॉक डॉट प्ले है सोच रहा होगा कुछ नहीं समझ रहा हूँ मैं भी शॉक डबल शॉक डॉट प्लस वो खेल रहा होगा मरा हाँ मेरे यार बहरे हो गए यार आज कम कर लेना आज नहीं मेरे आवाज तो बहुत कम है मोहित भाई वो साला वो स्पीकर ने ना मेरा कान दुखा दिया एक ही बार में एयर बहुत सेंसिटिव है हाँ मेरे एयर्स बहुत सेंसिटिव है यार ये डैमेज हुआ 100% मुझे इस बार कान गरम है लेफ्ट वाला मेरा काम कर उस पे चला ले मॉनिटर पे चला ले है ना स्पीकर मॉनिटर में हल्के से नहीं मैंने अपने हेडफोन की साउंड तो बहुत हल्की कर रखी है एक तरफ ही का लगा के बैठता हूँ दूसरा वाला खुला ही छोड़ देता हूँ मैंने मॉनिटर पे चला ले कोई दिक्कत नहीं है हेलो सीमा बाकालीन येलो जो सबके कान फाड़ देता है उसकी एयर सेंसिटिव आयरनी अरे वो मैंने किसी को कॉल लगा रहा था उससे कुछ आवाज नहीं आ रही थी मैंने स्पीकर पे लगा के नीचे रखा उसके बाद ध्यान नहीं दिया उठा के डायरेक्ट कान में लगा दिया तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी अचानक से जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं फुल वॉल्यूम में मेरे स्पीकर पे कान पे ही बज गया वो एकदम टनटना गया मैं 2 सेकंड में हमारे साथ भी होती है जब तो चिल्लाता था हमारे कान बज जाते थे येलो क्या है रट्टी इसको कॉल अरे भाई मेरे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मीटियर वो लोग पीछे भी देख रहे हैं यार ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना मारो 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 That is perfection, immaculate placement. Meteor
with 32 health. Another Madrid will be fading away. यहाँ पे पता है impossible risk है कुछ भी मतलब कुछ नहीं I've been praising the macro from Gen.G all match, but that one. अंधेरे में क्यों बैठे हो लल्लू? Boiled the carrots for too long. अंधेरे में क्यों बैठे हो लल्लू? I think they could have. मेरी आंखें भी बहुत सेंसिटिव हैं. Munchkin almost gets an opportunity to get in there, but भाई क्या शॉट मार रहा भाई Zekin वो fuck क्या फ्लिक दिया. And he's frying, by the way. If you want to talk about individuals, Zekin's looking just as good as he did when he played this map previously. And Texture's not really finding those openings as easily. क्या sensitive नहीं है तुम्हारा? Of course, it's harder when you're the attack side jet. I mean, you have to be set up with util. Yes, सब बता दे. Into a lot of those fights. Exactly. Kind of expect more from him. Here's a fast play now. Texture. This time not shy. This साला day one strat. Sets us up on either side here. Texture now is into the site. He's worried about backside. Still, he could seek to deny. There's no one watching the back here of Zekin, but he does dash away and out. ये लोग side पे नहीं देख रहे हैं. Covering it, 4 players spotted. अरे retake के लिए बहुत अच्छा भाई spam कर दे भाई मर जाएगा भाई. फंसा पड़ा है वो. कुछ नहीं कर सकते. इसके टीम को चिल्ला के बोला होगा साले आओ ना साइड पे. It's so good for keeping control of side. Karen dies, but he'd already stuck that plant. चलो इनके पास ये तो था. क्या है बहन की? Just a tad here with the plant down. A potential difference maker. Look at Lackey's position. कभी-कभी rotation में. क्या है ये? Waits for the right time to strike. Same with Meteor. Takes up that space, but he was blind as anything, and John QT delayed, but eventually getting that trade. Hunter's Fury now is being used proactively. 2 tags, no kills though. Damage being done. The back side players, they need to be dealt with. Hopping through with the flash Texture, putting them down side by side. Tens will follow through. Time has run out entirely. And another's been bought here with all of these plays. Gen.G barely pulling them out from the jaws of defeat. नहीं भाई पूरा पोजीशन खेला भाई वो पूरा पीछे से मस्त खेला वो प्लांट ही उसका दिया उन्होंने खेल ही इसलिए था प्रीमियम कैनवा मांग दिए बनाया भाई स्ट्रीम क्या कहते हैं इसकी स्ट्रीम के तो यही बनेगा ना कि चोमो हो क्या प्रीमियम कैनवा मांग कर ये अच्छा थंबनेल बनाएगा थंबनेल ये तो नॉर्मली बन जाता है बात तो सही गलत भी बोली अपनी शक्ल डालते हैं बस नाम लिख के स्टिकर चिपका दिए इससे पहले अबे इस वॉच पार्टी के लिए यही होता है भाई मेरे समझोगे नहीं तुम लोग नहीं समझना बोल के दोनों कम दिमाग है ना क्या कर सकते हैं अरे क्या चला भाई ये ले उधर भर दिया लक्कियां निकालेगा लक्कियां They just whiffed on him for a moment and he पूरी readjusted his टीम aim है and ना took down ये 2. Gen.G He looked completely caught there. The game plan worked अपनी for शक्ल डालते हैं ना they just couldn't land the shots in the moment. 2v3 though, and we've certainly seen Gen.G pull out rounds like this before. Especially with एक तो ओडिन ने बहन सब पता है कुछ सुनाई नहीं देता यार ओडिन के अंदर ना जब कोई बंदा चला रहा है पता है ओडिन को नर्फ करने की बहुत जरूरत है उसका साउंड इतना ज्यादा है कि you can't see ओडिन को नर्फ करोगे तो फिर लाइक एक गन ही तुम्हारी ब्लॉक हो जाएगी मतलब कि फिर फायदा क्या है उस गन का देख लो एरिस कोई चलाता नहीं है मत चले मतलब यार कोई चीज गेम में होती है ना तो उसको यूज भी करना होना चाहिए समझ रहे हो यूजलेस है तो यूज करते हैं ना तो हाँ यूजलेस नहीं होनी चाहिए फैंटम मतलब कि नर्फ हो गए संगे कितनी नर्फ करी तब भी यूज कर रहे हैं तब भी मतलब यार वायबल है वो मतलब वो वायबल है कहने का मतलब ये है कि नाइस वन लग गया राउंड निकाला इन लोगों ने 2v3 क्लच कर रहा है भाई हर राउंड वो मैं आऊं क्या आ जाओ लग के निकलेगा तुमको कौन रोक सकता है अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं ये बिलीव नहीं करता कि आप नर्फ मार के किसी चीज को सड़े मैं क्यों चिढ़ता हूँ इस गेम मैंने क्यों चिढ़ा था इस गेम से पिनका था मैं एक्चुअली मैं गेम ना खेल कि मैंने बहुत दिन तक गेम नहीं खेला था किलस गया था मैं चेम्बर नर्फ मार दिया मारा ऐसा नर्फ कि वो लाइक यूजलेस हो गया पूरा एकदम भाई वो ऐसा नर्फ मारा कि यही भाई स्पोर्ट से निकल गया ये जिंदगी में नहीं देखा भाई
इसके बाद ही स्पोर्ट्स में ये अभी उस कौन से में एल डियाब्लो नाम ही खत्म हो गया। अबे ओडिन चल रहा है भाई पूरा। है मोहित भाई, किसी चीज को ऐसा क्या नर्फ मारना जो गेम से खराब हो जाए वो। भाई इसी मैप पे यूज करते हैं ज्यादा लोग ओडिन। हाँ इसी में यूज। हाँ बस, तो अगर ये मैप और एक लोटस का है। हाँ कुछ मैपों पे यूज करते हैं, यहाँ पे वॉल बैंक का होता है, नहीं तो ओडिन इतना ज्यादा यूज होती नहीं। मैं तो नहीं मानता कि ओडिन नर्फ करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। भाई कोई चीज ऐसा नर्फ करके कि उसको यूज ना है, फायदा क्या। वैसे भी कौन सी वो क्या दूं? हाँ रख दे भाई। निकाल सकता है ये बंदा। साफ गंदी पड़ी। Has read this though. He might be able to get into spawn at the right timing to cut this off and get another for free. Doesn't break the knife actually, yes, and he's got the dash back online. You just don't think logs here though. You just never think about that. Don't expect it. It's going to have to be reactions and adjustment potentially there. Still close to the corner. Jiggling from Lakia. Decides to take the timing and a fight right to him. So 5 to 5. मार देता है यार। Even up now again for Gen.G. नहीं फाइन पता नहीं मुझे, कोई बात नहीं। उससे मतलब गिफ्ट क्या डिलीट किया। Sentinels going for their first piece of defensive हो भी set सकता play है, aggression there. नहीं भी हो सकता, क्या फर्क And it's पड़ता। dominated. They already used this. It was round 6 I believe the last time they played on a SEN. देख रहे हो, इसलिए इतने टाइम लग रहा है कि ऐसे राउंड जा रहे हैं। यार मैंने बहुत दिन से डार्क चॉकलेट नहीं खाई यार। This time texture just a little faster, just मेरे a घर पे little रखे है sharper. ऐसा। SEN knocked down onto an eco and going for another set play by the look of things. मैं तो चॉकलेट ही नहीं खाई। शीमास खाती है ना, शीमास के पास बहुत सारी लीग ऑफ लेजेंड को 10 साल बैलेंस नहीं कर पाए भाई लोग, क्या ही करेंगे। अच्छा राइट गेम्स। हाँ मगर यार लीग ऑफ लेजेंड यार अभी भी डोटा से ज्यादा उठाता है भाई पब्लिक। यार लीग ऑफ लेजेंड ना यार मैंने देखा यार बहुत, लाइक मैंने उसका प्रो गेम देखता हूँ ना, मैंने लाइक उसमें एक्साइटिंग मोमेंट्स बहुत कम है यार। होता है ना जब आप क्या क्यों देखते हो ये सब चीजें, एक तो आप इसलिए देखते हो क्योंकि आप नए नए स्ट्रैट्स जानना चाहते हो, जो स्वेटी ट्राई हार्ड वाली चीजें होती हैं वो देखना चाहते हो, ठीक है। दूसरी वाव फैक्टर होता है कि हाँ भाई इसने ऐसा मार दिया, हाँ भाई उसने वैसा मार दिया। लीग ऑफ लेजेंड इज लाइक इट्स नॉट लाइक जब आप प्रो देख रहे होते हो ना, प्रो लीग वगैरह, उसके मतलब कहने का मतलब जो उसकी लाइक लीग वगैरह देख रहे होते हो तो उसमें लाइक ऐसे मूवमेंट्स कम ही आते हैं जिसमें लाइक यू लाइक वाओ नहीं फकिंग शिट ऑन समवन। देखो the anchoring players out back here with the Sheriff. John QT, but not expecting it away with the Bucky! Gaming! Oh no! Can land the shots, damage done. अरे दूसरा क्यों नहीं मार पाया? It's a 1v1. And such an important one at that. The money was dire. 10. Oh shit, जीत जाएगा सेन। Bullets accounted for. Easy था। Exactly what he Already side needed. पे था वो। मेरे को बाउंटी खानी है। बाउंटी क्या है? बाउंटी वो आती है कोकोनट चॉकलेट, पैक नहीं होती है उतनी। कोकोनट चॉकलेट छी भाई। हाँ काफी फेमस है, बहुत मीठी होती है मगर बहन के दिमाग का दही कोकोनट पसंद ही नहीं यार चॉकलेट। अच्छी लगती थी जब मैं मतलब मीठा वगैरह खाता था तो, मगर अभी मीठा खाने का मूड नहीं। मैं बहुत दिन से चीनी छोड़ रखी है, अभी तो चीनी व्हाट द फक। एक मिनट देखने दो, रिकॉर्ड करने दो, मुझे लग रहा है मैंने कुछ नोटिस किया। हमको भी दिखा। पूछ के जाना चॉकलेट है या चॉकलेट फ्लेवर। मैं बोला भाई मैं। Another miracle, ritualistically brought down by the crowd, willing it into existence. I think. How are they? Oh shot! What a timing! To be honest with you, I thought it was over when the Bucky didn't deliver those two clean one-shot kills. I mean, I'm shocked Zekin didn't one-shot them. Yeah, he was so close. क्या देखा तूने? ये देख रहा है? Still able to finish one of them off. Look at So fuck close. Zekin को देख। हाथ देख इसका लेफ्ट हैंड देख। I mean, I'm shocked Zekin didn't one-shot them. Yeah, he was so close, but still able to finish one of the kills. I mean, I'm shocked Zekin didn't one-shot them. Yeah, challenge that. He was so close. But you also kind of set up for समझ गया retake A approach. Now Tens and Zelsis, but still able to finish one of them off. The other week, Tens wins. That's some fucking bannable. Pinging out the alarm bot. वो दिखाया। एडजस्ट ना करे बंदा हद है। तो एडजस्ट आराम से कर सकता है।
पकड़ के ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं थी। एडजस्ट नहीं वो इतनी देर में समझा भाई क्वांटम भाई बच्चा ही है And Lucky is hoping to set this one up for the rest of the team. They're going to pivot. They're going to A. 20 seconds indecisive. Running back to B. Running back to B. क्या चल रहा है भाई ये? Making plays like this, man, but maybe just getting hectic in those final moments. गंदा हो गया टेंस के साथ बहुत जान करेगा ना। ओ भाई गंदा हो गया सेकंड भी है भाई साइड पे मरेंगे। मार दे नीचे। ओ भाई उसे गार्ड कर दिया भाई कितना गंदा गार्ड किया है शिट भाई क्या गंदा गार्ड किया है भाई मारेंगे पकड़ेगा मारेंगे। अब वो मोटा अपने चुच्चे दिखाएगा अभी देखना दिखाओ यार उसको देखना था उसका काउंटर रिएक्शन। अरे कोई हॉरर गेम खेलो तुम बहुत सारे जंप्स के to avoid him being caught by Second. Look at them getting in front of the classic. Ludicrous. बहुत ट्रैश टॉक कर रहा है मोटू भाई वो भी कर रहा है भाई। हाँ जेलस ना ज़ेकिन सॉरी जेलस ज़ेकिन था। ए बस स्निफा वो है क्या पैसिफायर? क्या है? पैसिफायर हाँ खेला है मैंने। अगर है मतलब डाउनलोडेड पड़ेगा। Sophie, welcome to the grand finals now. सॉसी की वाइफ दिखाइयो। सॉसी की वाइफ दिखाइयो। थोड़ा सा हटाइयो कैमरा। I wanted to know what was going through your mind. अच्छा दिख रही है मैं अच्छा। रुको देखो। Crazy actually, but it's a 6. तो देख लो स्ट्रीम देख रहे थे ना देखो। हाँ नहीं उधर देख लिया। I like it. What about मोहित you? भाई आप भी ऐसे कोई टैटू बना लो। कैसा? हाँ मैं बनाऊंगा लाइक ताची के बनाऊंगा वो Bringing the trophy home. I can feel it. लोगों की वाइफ मत देखो मोहित भाई। शक्ल दिख रही है ना? हाँ दिख गई। So tell me what's it been like to follow his journey and support him all the way back to the top. स्निफा थोड़ा बड़ा कर दे और अपनी आंखें लगा दे बीच में दोनों। I'm in awe of him all the time. He's awesome. We think so too. Come on, guys. Give it up for Tez. Come on. And for you, Sophie, you won there in Istanbul when Sassy became a world champion. So what are your emotions right now to know that he could potentially win a trophy here with you in the audience? I think if we get the trophy, it's gonna be a really step up in his career, and the boys are amazing. I love them all. जो देखा है वो जो देखना है वो छुपा रहे हो। You guys know what to do. Sentinels. वही तो बात है ना स्टार क्या है? Well, let's see if Sentinels can close this one out on a set. मतलब कहने का मतलब है मोहित भाई जेनजी वाले तो यतीम पैदा हुए हैं उनके तो माँ बाप है ही नहीं उनकी तो गर्लफ्रेंड भाई बहन है ही नहीं कुछ भी उनका तो कुछ नहीं बुलाया अनाथ आश्रम से आए 5 बंदे लोगों की वाइफ मत देखो मोहित भाई मोहित भाई अपनी वाइफ को बहन बना के बैठे हैं क्या कहते हैं उस दिन तो टेंस की मॉम भी आई थी जो देखना है वो तो छुपा रहे हो भाई ने इतना क्यूट तो सिंबल बनाया यार रमजान है भाई मत देखो भाई तुम भी मत देखो सीमास को तो मैं कह नहीं सकता कि मत देखो बट तुम तो मत ही देखो puts even more points now onto this pistol round 4 Sentinels. And I think again, I'm looking at the Gen.G defensive rotations and how Tron tries to play with those. क्या कर रही हो तुम क्या कर रही हो बहुत ठंडे में से टाइप नहीं हो रहा था तो मैं यहाँ पे टाइट हैं मुझे भी नहीं समझ आया क्या टाइट नहीं हो रहा था टाइट कर रही थी बोलो टाइट नहीं हो रहा be quick enough here just waiting for the drone now with a shock dust through as well a lot of damage tagged him up second slight pause into the play slight pause into the angle waiting ये मरेगा what is the call from the rest of them भाई टैग है भाई बहुत ज्यादा waiting for the right time to strike गुस्से बहुत पागलों की तरह देखा इसलिए into his face and there it is वो क्या कम पागलों की तरह खेल रहे हैं वो भी पूरे बिल्कुल बावली पूरी टीम सारी बावले में दोनों बावले टीम है किसलिए हैं like as soon as Zeltis goes for it Gen.G are going to explode and he thinks the same I think और डिंक्स आ गया
could come down to anything. Few stray shots now. Paranoia flying forward. Still no spike being planted. फिर मरेगा. उसको लाते दिख रही हैं उसकी. Has he got a pixel? No, not quite. No, not quite at all, but waiting for it. Now the knife. Takes away the abilities, takes away the threat of this one, and as the turret's getting broken, they swing right into it. अरे turret बड़ा गंदा होता है इस round में. They're doing it again. Wonderful, wonderful patience. And capitalizing off the right moments there. Certainly. They look great with it. As soon as Sen put pressure on the player backside, that is instantly turned into texture dashing into a smoke to take front sight. So as soon as they know that Sentinel ऐसे वो खेलता है. ऐसे वही टेलपन में मेरी ऐसे खेलता है. Retake situation and start putting pressure even before the plant is down. Good question. They are looking good. मिल्फी. Taunts being thrown across the stage. हिमास कितनी ठंड हो रही है वहाँ पे? बहुत ठंड हो रही है. Great way to open this up on the defense side. Yeah, Gen.G बर्फ पड़ रही है. really quite happy with this one. बर्फ नहीं पड़ रही. It's all the fundamental कितना stuff. The temperature है? timing is excellent. They're confident. होगा नहीं. They're doubling up together in these. 8-9 तो नहीं होगा. 8-9 तो नहीं होगा. From Zekken. Tagged up तो by the काफी है. decided just उसको देखने दो take that fight. मध्य को हाथ बाहर निकालने पड़ेंगे. Gen.G players were not posted on the इतना तो है ही नहीं, झूठ बोल रही है. कहाँ से बाहर निकालने पड़ेंगे? हाथ बाहर ही होते हैं मोहित भाई. 28 डिग्री हो रहा है. बाहर नहीं. ठंडा है यार, तू कैसी बातें कर रहा है? 28 डिग्री हो रहा है, 8 बोल रही है. गंदा दिमाग है यार. हिमाचल में हूँ मैं लीजिए. हैं? अच्छा वहाँ पे नहीं हो. Blue game plan here though from Sentinels on अपने मदरलैंड है वो. Flash to reclear into A main, make sure that the orb gets loaded up there onto Celsius. Only a few away from his ult, so they're just thinking ahead here into this round. मेरा दिमाग ही बहुत तेज चल रहा है इस टाइम. ये देखिए. Quantum यार, motherboard. क्या जोक मारा. Celsius is still going to be 3 away from getting that online. It's not particularly going to be helpful. Quantum dead joke से बुरी joke मारता है. Now they're going to be for a bit of a plan here, but a Paranoia sent flying TP forwards. Lighting him up. Charon 20 HP surviving. नहीं है spam. Spam भाई दो लोग. खत्म. टाटा बाय बाय. स्पैम लेके पूरी टीम को खत्म कर दिया. Everybody surviving for Gen.G. Beautifully done. ये रशिया में तो ये अलग ही चल रहा है. स्टार रशिया में तो अंदर डालते हैं. हाँ अंदर डालते हैं. You see texture buying the operator when the rest of his team is going. कैंट के अंदर हाथ डाल के रखे रहते हैं. It's not too crazy. Lots of teams that end up going for that. But do they have a game plan to set him up? One of the other things that stuck in my head actually from listening to मैं तो 2 बार मिल लिया अपने रशियन फ्रेंड से. Was that he said one of the things रशिया जाके मिले हो कि यहीं? नहीं 2 बार आ गई भाई वो इंडिया. नहीं रशिया जाके मिले मैं बोल रहा हूँ. एक बार शादी पे आई थी जो बेवकूफ सी लड़की थी. putting pressure on their opponents. उसको पता है वापस जाना पड़ा. मैंने कहा तू रुक जाती मेरे घर. उसको होटल नहीं मिला यार. मैंने कहा मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ तुझे लाइक तैयार होना है मेरे कमरे में हो जा आराम से. कोई दिक्कत तो नहीं थी ऐसी. अपार्टमेंट में वो भाई केरला ही भाग गया. तुम बड़े अजीब हो. ज्यादा ही पैसा आ रहा तुम्हारे पास. ओ बाप रे. वो थी ना बावली उसके साथ एक. हाँ भाई उसी की शादी थी भाई. और फिर वो जिस टाइम हाँ तो उसकी शादी में आ रही थी भाई. होटल में जगह मिली नहीं क्योंकि सब बुक्ड होता है शादी वाले टाइम पे. तो उसको तैयार होना था. मैंने कहा यार तू मेरे यहाँ पे तैयार होके निकल जा. मैं तो वैसे ही सुबह नहीं होता, शाम को आता हूँ सीधा मैं 9-10 अरे बजे. भूतनी का लोड हो गया. तो भाई वो केरला चली गई. बहुत तेज यार चली. उनके लिए केरला चली गई. नहीं वो डायरेक्टली फिर कहती यार मेरे को वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा यार रुकने के लिए, तो मैं केरला जा रही हूँ. मैंने कहा यार ओके. मैंने कहा यार जगह थी कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो वैसे भी सुबह से सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ. एफ इन द चैट. अबे स्ट्रीम चली गई. ओह हाँ देख रिफ्रेश एफ आ रहा है. अच्छा ये हम नहीं हग रहे हैं, वो स्ट्रीम ही हग दी. YouTube थोड़ी हग रहा होगा फिर. अबे YouTube नहीं. 900 भाई 900 के व्यूज हैं भाई. काउंटर स्ट्राइक का भी टूर्नामेंट चल रहा है. काउंटर स्ट्राइक पे हग रखा है इसने. नहीं YouTube नहीं हग रहा है, Twitch हग रही है. ट्विच हग रहा है ना. YouTube चलाता है. एफ आ रहा है चैट में. कोई नहीं YouTube पे चलाते यार. चल गया वापस. आवाज तो आ रही है. Who has not been a pro before joining Gen.G. It's insane. He played on an amateur team and basically that was a long time ago. He frankly ये कॉन्स्टिपेशन वाला कार्ड क्यों मिला है भाई? Ranked player on the big stage, but he's really performing. कॉन्स्टिपेशन वाला कार्ड मिला. देखने पे होगा. Flash repeat. Carol knows to respect that one. He's going to be using the TP just to get the hell out of गई. there. इतनी ठंड लग रही थी. Again from Gen.G. All stacked up.
बटन ही एंड को कर दिया लगता है बोलने में ठंड लग रही है उसको. So confident this is going to be an A exec. What are you till expended here though, with the dart fading away. Caron shuts that down, doesn't he? Tens forward with the sheriff, but again, not too much you can do, not without the ये rifles. मैच तो जीजिए, ये मैच हो गया. अब नहीं हो सकता इनको. Weakened down. Full awareness of the positioning here. This is Gen.G. हाथ भी थक जाता है भाई मेरा तो 3 मैच खेलने के बाद ये तो पता नहीं कैसे खेल रहा 5 मैच. map pick, but it's one where Kaplan earlier in the coaching interview said they were feeling very confident coming out of their game against Paperex. And the implication there that the desk picked up on is that they were going for a 3-1 win by winning on bind, ascent, and split. This is looking less and less likely the more rounds go on. I want to see John start messing with the defensive rotations. It's not something we've really seen. You need to be faking at least half as much as your opponents are over-rotating. And so far, they're nowhere near. Texture seeking out to ruin them here with a flash. Okay, return of the fire, second. Texture haga. Rebounding. flash आया होगा ना. Nice. No way. Second was blind as anything. Dashed forward to try and punish, but भाई blind हो गया भाई. Team blind. अरे भाई shock that. Punish online, Karen. Nice. You can relieve it. Zelt's dropped down. Good trades. I mean, is there going to be any chance of even just... इसको revive कर देंगे. It's going to get punished. They need to be aware. Surely picking him up. Zelt's is there. No, spamming. Through the wall. अब करेगा. अच्छा reveal का wait कर रहा था. What a play. Cosplay in effect. This guy is how... I mean, found the... अरे spam पता मर भी जाता वो. And another one to the collection. Sight opened up right when the team needed it. That's incredible. क्या guys क्या लग रहा है chat किसका मैप है? Getting himself tucked into locks because Meteor went down early and that was open to them. Huge play. Save कर भाई अच्छी गन है skill save कर ले. Not exactly running a fake, but just challenging Gen.G for the map control and beating them. I don't think Tens is going to survive this interaction. ये मेरे साथ हुआ था. ये मेरे साथ हुआ था आज. लेना पे आ गया था मैं. लैब में अच्छा अबे 140 मारा है. मुझे मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था एक और बंदा आएगा. ये होता है भाई. एसेंट का मैप है. मैप तो मेरे को भी पता है टीम कौन सी जीतेगी. मैं उछल गया भाई वो हवा में. John bailing them out of that situation, not necessarily with his macro calling, but with भाई इसे क्या हो गया भाई? solo play. मिर्गी के दौरे लग रहे थे भाई मुझे. भाई उसकी उम्र कम हो गई भाई इस मैच में. Sentinels that need to dig even deeper. It's a spread default to try to start the round, not over-investing over towards A, but certainly making it feel like A, right? And this is where you start to see the defense pulled towards that A defense. It's only luckier over towards B. But now as there's a little bit of mid pressure, you see things shifting around and Texture with an operator looking to take that pick through mid. Directly down mid, they might just walk into him. Texture's quick. Is he there before Zekken? It looks like it. And now he's found the timing. It's just so damn instinctual! And again, a difference maker. Zekken. साला हग रहा है भाई Zekken. He's left Texture really. Texture और फिर से हग दिया. That is a ludicrous swing. Perfect. शुभम सावंत. मोहित भाई कुछ याद आया आज का सेम सीन. ये देखो डेलपान कुछ बोल रहा है मोहित भाई. हाँ वही सेम ही तो बता रहा है रीना वाला. अच्छा आ गया ऑनलाइन आ गया डेलपान चैट पे. देखा मैंने. सोया नहीं तू साले तेरी बंदी मारेगी पकड़ के सो जा. How do you fight this one? Split up across the map here. I mean, it's just really only months. इसकी बंदी ने स्टेटस डाला. When he says when he is asleep, साइफर वाले कैमरे लगा दिए भाई उसने. 12 seconds left. सारा स्टॉक कर डालती है इसको. Maybe to push this one back and away, but Gen.G they're out of there. It's only John in an aggressive position in the post plant right now, and Sassy's miles away. Doesn't have that ult to work with. Shotgun lineups from there, so he needs to find some way of having impact. Start clearing the paranoia here. Still close quarters enough. It has revealed, and they have cleaned him up. With John down, finally a kill found. Second. अरे यार Zekken बस कर बे. Still emanating out with waves of the suppression. It's dropped to his knees. Meteor, last one left. Unless he can get Munchkin back alive. A tap. Putting out the spray here. 3 players left out in the open. Sentinels running over them. That was a difficult situation there. John getting caught in his खोया था aggressive नींद खुल position. गया. Sassy उससे कहा था मैंने कि आज needed to step up, हम and he did it. VCT मास्टर्स देखेंगे.
मगर ते कुछ And then he also follows up by being able to punish Lakia and stop Munchkin. को नींद आ रही थी तो वो गेम खेलना था Amazing round from the star है player ना of Sentinels. I say the star player. One of the superstar. Plenty to pick from. Plenty to pick from. So Sen is still making a go of this, even though Gen.G are in the lead. In the lead. Arguably still favoured, but they are starting to put a dent into that economy for Gen.G. The loss round here. Gen.G vital for Sentinels. They're going to be hoping for a flash repeat. Yeah, another jet duel. Dash just fades away. They're going to be using util of their own now. Paranoia even layered on top, spamming away. Exchange of lead. Zealous tag हुआ गंदा वाला. Gen.G not over-rotating this time. Keeping a couple of players in mid, realizing that it's not a full commitment from Sen here. They're just fighting for map control. You could consider this a win though for Sentinels, because they're going to be going into a site that only has 3 players on it. Yeah. And that's assuming. I love this now. Spider-Man se Spider-Man 3 ki hai. I love that. Munchkin gathering that information. As the nade ready here, as time runs short, John QT, hello. Flash forward. क्या ये एरिस चला रहा है क्या? Backing away, will get cleaned up eventually. The air is sprayed down. Fragment nade, texture. भाई बूंदिया भाई. एरिस ने मार छोड़ दी भाई. They have shut down his approach. गए. Tens with ultimate is going to try to get into the B site and get the plant down. Yeah, it's an open site for him. Still rapid. Sassy get there? Oh, Sassy, he's picked them apart. Texture onto that rotation, but he is alone now. Tens is going to do a hell of a job to try and hold on to this one. Keron sticking, no way. Up onto it, just gets that information. Oh, भाई क्या info नहीं है भाई उसने. Slowly, surely. Sassy's so Next far level, away. yaar. He needs so much. He needs so much here. Sassy is miles away. Reinforcements are lacking. Lakia seeking to disjoint it. That dart, it was fantastic though. Still playing inside the smoke. Lakia shuts it down, but time has been bought. A tap, Sassy. Does he think it's open to the fuse? Kill around Spamming away. Counter spam from Munchkin, sticking from Lakia. Full भाई ये निकाल सकता था रे. 11 now. मुश्किल था. स्पैम में निकलता एंगल स्विंग करना मुश्किल था. उसके पास डार्ट वगैरह नहीं थे ना यार. सॉसी के पास. मैं यूज किया तो था भी उसने डार्ट. एक ही करा ना बस या दोनों करे. शॉक डार्ट दोनों यूज किया और रिवील भी यूज किया था. जब भी तो पहला किल 3v2 में से उसने उसको मिली थी अंदर के लिए. On the A splits, it looks really nice from Gen.G. Anytime Sen have tried an A split, the A main players have not been able to have any impact. They're just sending a drone in there and they can't actually push the players from Gen.G who are killing the people on cat. The A splits are being defended immaculately. But look at this, Sen are so convinced that this is going to be defensive aggression in this round. They know that Texture had to pop knives. And they are ready for the Hunter's Fury play, a classic set play that teams would love to do. Really far back. Has pulled 20 seconds off the clock here. With how time has been playing an issue for Sentinels. भाई 3 ऑल्ट ऑनलाइन है उनके पास. Little moments like that might make Hunter's Fury लॉकडाउन ये वाला मैप राउंड तो जीतना ही जीतना. ये वाला जीत गया ना तो अगला वाला तो इजी हो जाएगा. बाय नहीं रहेगा. Love this positioning from Lakia as well if he stays over. थोड़ा बहुत बाय तो रहेगा ही. Perfect ult line, but instead हाफ शील्ड से खेल रहे हैं 2 बंदे इस राउंड में भी. Zealous और Saucy. 50 seconds. Time certainly is ticking here. Decisions need to be made. I mean, you haven't pulled out good util from Gen.G. They can just stall you out. Right, they're going to be showing some presence, but with the knife tags, it's a second. This doesn't give you too much info. It could be a cat push, could still be a B split. They're going to get destroyed, but they're trying to fake A presence, perhaps. I mean, the spike is in the middle of nowhere. And certainly they are fast. It was Zekken. He's rapid on the up. Ooh, shot, yaar, Texture, more yeah. so. The Hunter's Fury to punish. Alarm bot chasing them into the top section of it. That's Tens. He's got to try and get some value in. He's got to try and get some kills. The lockdown. It's really just absolutely brutalized them slowly. हो गया ये 12-8 है. They can't break it. They have the fight मुश्किल है अभी. here onto the angle. ओए है. Into the position of ओहो. Texture. Grinder. Rips them to shreds. Rips them to pieces. Has to stick. And there's no chance. कोई टाइम नहीं. टेक्सचर ने निकाल दिया राउंड वाला. 3 क्या प्यारे किल करे. उसको मार दिया उसने तो. हैं? गुज उसको मार दिया साइड टेक्सचर ना. हाँ वहाँ तो ग्राइंड मशीन. To re-fight that, and he immediately notices it's a fake. If he dashes away there, they don't get the info, and those B players might not have stayed on B. ये क्या कर रहा है? But because Texture is so confident to take the fight, to dash forward, to look for the others,
बढ़िया भाई, बताओ हैप्पी। बढ़िया भाई, आप कैसे हो बताओ? बढ़िया मैं। आवाज कम है भाई, तेज करो अपनी आवाज। हैप्पी होली तुम सबको, हैप्पी होली। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। I don't celebrate Holi na. In this series, SEN being one of the split coming up. It's Icebox, that territory where it gets a bit messy. If Gen.G end up taking this map, सही बता रहा हूँ मैं, नहीं होता ना इस इंडस्ट्री में, मैं घूम फिर रहा होता इस टाइम पे। और बता डियस क्या चल रहा है? घूम फिर रहे होते यार? घूमो। अरे मेरी इंडस्ट्री में इतना काम नहीं है भाई, जिसमें मैं ऑलरेडी था पहले। ये मेरा ऑफ सीजन है, मेरा काम कर रहा हूँ। मादा पांडा को बुलाने का तरीका, मादा पांडा ये अलग ही चल रहा है भाई। नेट मादा पांडा नहीं फॉरेक्स में ट्रेडिंग में, मतलब इंडियन मार्केट में नहीं, फॉरेक्स में नहीं करता यार मैं। अच्छा है क्या हिसाब? हाँ मैं सोच रहा हूँ, मैं इसमें देख रहा था डीके के थोड़ा काम मतलब है ही नहीं ना, तो मैं सोचता हूँ उसी में 24/7 खुले रहते हैं, बस डे ऑफ रहता है। ओ संडे सैटरडे 24/7 खुला रहता है, 24/7 मार्केट खुली होती है उनकी सैटरडे संडे। हाँ 24/7 पूरी खुली रहती है। मेरा बंदा स्टार्ट किया भाई, आज उसने $275 कमाया बिना दिमाग ही घूम गया बेंचो। 23,000 रुपए एक दिन में बेचती माँ का। मेरा भी कोई करना है बेंचो, कैपिटल से मेरे पास भी है। इन्वेस्ट तो करना चाहिए। आज थोड़ा वैसा देखा बेंचो भाई, गंदा सेटअप है, बहुत गंदा सेटअप है। शॉट मारा गंदा मार दिया भाई, गंदा मार, टेक्सचर गंदा मार भाई। ला के जज लेके बैठा है। अरे यार कोई स्पैम किए ही जा रहा है अगला बंदा भाई। ऑब्वियस एंगल स्पैम कर रहा है ना वो। अरे निकल तो गया, लेकिन स्पाइक चुद गया। अरे भाई गई अब मुश्किल हो जाएगा। अगर स्मोक नहीं है क्या इसके पास? स्मोक नहीं है, स्मोक नहीं है और रोडिंग पे घंटा ही नहीं होगा इससे। अरे पैरानोया तो है ना भाई? नहीं पैरानोया भी है उसके पास। नहीं मतलब जी भाई 2-1 हो गया है फाइनली। पता है ये सेटलमेंट हमेशा होती है, पता है ग्रैंड फाइनल जब सेमीफाइनल में पहुंचती है हार जाती है, वहां से अगला स्टार्ट हो जाता है। इतने सालों से भाई ये वाला तो जल्दी खत्म हो गया मैप भाई, क्योंकि फास्ट नहीं था ना। अरे जितने क्लोज्ड मैप है ना वो जल्दी खत्म होते हैं, जितना बड़े मैप होते हैं उसमें लड़कर चलता है तो लंबा चलता है। मतलब ये क्वांटम कह रहा था 3 नहीं बजेगा। भूतनी के अगर एक अगला मैप सेंटिनल जीत गए ना तो 3 ही बजेगा, देखियो। और जीतने के पूरे चांस करेंगे इस बार। हाँ क्योंकि सेंटिनल का मैप है ना। सनसेट है क्या? Excuse me, would you पता नहीं take a मुझे। picture of this? no problem. Thanks. Yes, problem. You need Verizon. Trade in that old thing and get a new iPhone 15 Pro with tons of storage, so you can take all the pics. So many selfies. देखना हाँ ये पहले आ गया था, मैं गेम खेल रहा था। That means panoramic. And as many portraits of me as your heart desires. जब पता है जब VCT स्टार्ट होता है अपने वर्जन को बदल जाता है भाई। क्या गजब है स्ट्रेटजी है क्या अपने वर्जन तेरी नहीं होती। All on us, what the fuck? यार लैपटॉप मुझे भी लेना था यार, बताइए यार सिर्फा कोई बढ़िया सा लैपटॉप। अब एक ग्लोब जो आ रही है, ग्लोब आ रही है, ये कुछ ज्यादा अच्छी चीज लग रही है यार। अभी देखेंगे ना, अभी देखेंगे यार, इन गेम पता लगता है जब खेलना शुरू करता है। नहीं पता है रेना का डिस्मिस डेट का रिवाइवल सेल्फ के लिए डिस्मिस भी है उसके पास। डिस्मिस नहीं अच्छा वो हां थोड़ा इधर जाके कर अल्ट में मर गए ना, दोबारा दिख जाती है, उसका भी डिस्मिस भी रहेगी उसी में। Red Bull gives you wings. बट उसको कोई स्पेसिफिक जगह ही जा सकती है, सारी जगह नहीं घूम सकती ना स्निफा। 2 सेकंड का टाइम है, टाइमलाइन है। 2 सेकंड टाइमलाइन है ना, 2 सेकंड का टाइम रिपोजिशन करने का, राइट? हाँ रिपोजिशन का बहुत कम टाइम है। बहुत ओपन में मरे हो तो मत करना कभी भी। और ऑल्ट यूज करने का भी कुछ शायद 5 सेकंड या 6 सेकंड टाइम है। और उसका वो भी तो है रेना का, वो हील भी तो ले लो, रेना का हील ओवर हील है वो। दैट इज हां ओवर हील।
मतलब पूरा कुछ मिला दिया भाई, कंट्रोलर, सेंटिनल, दूल्हे, सारी एबिलिटी मिला दी है उसी में। तो उनको बनाना है ऐसा एजेंट तो बना रहे हैं वो, देखते हैं लेट्स सी। ओमन लैपटॉप में ओमन खेलेगा। बहुत ही गंदा डैड जॉब मारा है भाई, किसने मारा है? स्टार भाई सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है। उसका दिमाग स्लो हो गया यार। क्या कहते हैं, कितना बजट कितना मुझे तुम्हारा? यार मैंने 70-80 सोचा था वैसे पहले, 70-80 लैपटॉप में मतलब। अच्छा क्या? 70-80 अभी तू पागल है, तू 2024 में 70-80 लेगा? नहीं 70-80 का बजट। अच्छा 70। अरे वो ग्राफिक कार्ड की बात नहीं कर रहा है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि कौन से 90s जमाने का लैपटॉप लेगा क्या 2005-2006। प्रेडिटर आता है क्या उतनी रेंज में? अब उससे तो रहता है, उससे तो लॉक पड़ेगा। लेनोवो का जो लॉक है ना वो अच्छी सीरीज है। नहीं अभी सिर्फ 2 ही लैपटॉप अच्छे चल रहे हैं। मुझे एसर प्रेडेटर वी बहुत लोगों ने कहा, प्रेडेटर अच्छा चल रहा है और ओमेन और उसका MSI के कुछ लैपटॉप अच्छे हैं। अबे उसमें एक तो कौन सा आ रहा 3060 का 8GB रैम 13 पता नहीं यार एसर वालों की सीरीज को क्या हो गया, पता नहीं कौन सा निकाला है एसर वालों ने। प्रेडेटर वी था उनका, बहुत सुना मैंने। हाँ वही प्रेडेटर ना, प्रेडेटर अच्छा चल रहा है इस टाइम। सबसे अच्छा इस टाइम मेरे ख्याल से देखो रोज स्ट्रिक्स तो औकात के बाहर ही हो जाएगा हमारे यहाँ, मतलब कि वो बहुत महंगा हो जाएगा। समझ रहे मोहित भाई? कौन सा कह रहा ओमन? रोग बहुत आगे चला जाएगा। हाँ या अब ओमन आता है। अबे भाई बोलते वक्त मेरा कान टन टन कर रहा है लेफ्ट वाला। कम कर लेना आवाज। हाँ ओमन में कह रहा हूँ, ओमन आता है क्या कहते हैं उस रेंज में, आपकी रेंज में 70-80 की रेंज में आता है। हाँ ओमन आता है तो मुझे पता है 100% आता है। वेट 90,000 का है मुझे याद है। ओमन Core i5 है, RTX 6GB 450। हाँ ये आ रहा है ना अभी, ये डिस्काउंट करके पड़ जाएगा। देखो एक 90 का ओमन आ रहा है, ये 13 ये बहन की यहाँ का i5 है 85। हाँ i5 है 13/420 हाँ मगर वो टट्टी है। ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। इस राइज एक मिनट रुको कंपेयर करना। एक इसमें आ रहा है ये Ryzen 7 5800H वाला 83 का है, मगर इसमें ग्राफिक कार्ड है ये देखना पड़ेगा। फुल HD डिस्प्ले ये है, दिखा रहा है क्या? तो देख रहा है उसमें 4050 कोई पागल है 3050 Ti लेगा। देख भाई प्रेडेटर। अरे मोहित भाई ये क्या है ये? प्रेडेटर में जो मैंने सर्च करा था 40 के आ रहे थे। Undefeated on split so far here in Madrid, and they've taken down Sentinels, the ones we hyped up as the best split team. It would almost be poetic to close it out on split. Well, let's talk about some of the great ideas that we were seeing from जब मैं सर्च Gen.G, करा था तो because मुझे दिखा था honestly, it just feels like just making some brilliant calls, and on top of that, the plays have just been immaculate. Yeah, absolutely. This is a perfect example here. Just a real slow burn pistol round. There's 2 opportunities for this to actually slow down and go back into Sentinel's favor, but Gen.G just make the right decisions. अभी तो मैंने चेयर It's a मंगाई second है। freeze here. We're actually in the post plant situation. नाइट्रो They मत wait for the लेना, turret to come प्रेडेटर back लेना। up. It's just so नाइट्रो focused. I think the way that Gen.G plays like Pace is like no one else in this tournament. They can have opportunities where they slow बेस्ट ही down होगा twice, साले they इसका take नाम। ये नाइट्रो भी तो नहीं सोच रहे मोहित भाई? नहीं हाँ एक नाइट्रो भी है 82 में, प्रेडेटर नहीं है। वो नाइट्रो भी है, सही कह रहा है, नाइट्रो भी दिखा रहा हाँ नाइट्रो भी है, नाइट्रो मत लो यार। ले रहे हो तो प्रेडेटर लो, नाइट्रो पकड़ा। नाइट्रो में थोड़ा हीटिंग का इशू है, थोड़ा थर्मल का प्रॉब्लम। प्रेडेटर हाँ भी नाइट्रो भी है, तुम सही कह रहे हो, नाइट्रो भी है वो। 40-50 मगर प्रेडेटर तो कुछ अलग ही भाग रहा है One साला। round you're playing against PaperX, and the next round you're playing against a better DRX. लेकिन उसमें 40-50 है। अरे तो कितने का है 40-50 कितने का है? 77 मान लो। अरे ये क्या चिंदी है क्या ये एसर वाले? 40-50 दे रहे हैं, 1,12,000
1,12,000 के 1,12,000 में क्या कहते हैं HP वाले वो दे रहे हैं यार fucking क्या कहते हैं 40 कुछ और दे रहे थे यार 40-60 ये दे 40-60 कुछ दे रहे हैं 50-60 ये साले कम दे रहे हैं भाई 7 दिन में 40-50 क्या बात है 80,000 भाई है तो डील कौन सा यही नाइट्रो भी अरे यार ये नाइट्रो ये वही देख रहे होगे तुम जो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे नहीं देख रहा मैं हाँ तेरी सेकंड स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये देख रहे हो क्या on the side of Gen.G. In the poll, people are starting to come to their senses here. Don't get me wrong, I love Sentinels, but Gen.G's cooking. Have Sentinels ये देख रहे हो ना Oh, they're making a comeback now. ना ये नहीं देख नाइट्रो भी क्या था उसका कौन सी कोर क्या है उसमें मतलब वो क्या है ये i5 ये नहीं सिर्फ थोड़ा नीचे का इधर रेड कलर का है नाइट्रो भी थोड़ा सा नीचे एसर के नीचे यही है आई थिंक Gen.G's on a 3-map win streak here, and they figured them out ये last नाइट्रो time. भी The way they 13 varied जन this place sent some really i5 hyper-aggressive pieces with 4050 the raise jet double duelist combo. मगर 6 GB का ग्राफिक कार्ड है ये सबने यही बोला लाइक ओवरऑल जितना मैंने सुना वन ऑफ द बेस्ट डील्स मैंने 70 to 80 की रेंज में जितना मुझे पता बट आई थिंक इसमें मक स्विच नहीं है दैट्स द ओनली कॉन आई थिंक नहीं होगा आपको हर जगह भी स्टैंडर्ड बन गया है शायद नहीं है Sentinels will be out and Gen.G will hoist that trophy. Will we go to a map 5? I know the crowd wants it. We want it, but let's go ahead and see if we get it. Bren, Sideshow, the floor is yours. Hi everyone, this is Rohit. Next how many options as photo settling in. Think about it, Gen.G. Better remember on this map. I mean, Split that used to be the bane of many teams when they were up against Sentinels. People argue why didn't they fight back? Why didn't they ban it? रेंज में तो यही है नाइट्रो भी आ रहा है You look at what Gen.G been able यही to do देखा था this भाई मैंने भी tournament. यही देखा था On Split, it's been प्रेडेटर नहीं fantastic. था वो नाइट्रो भी था Take to start this one off. Paranoia being thrown, countered as well. Everyone एक ये देखा था फिर वरना भाई ने कहा भाई मैच ले ले Okay, but Sen also realized that that's a bit of a अगर इतने का रेंज बन रहा everybody in that area. है यार मैच पे ना मैं बाकी चीजें कभी गेम में नहीं करता हूँ और फिर उससे सॉफ्टवेयर पेड होते हैं बहुत ज़्यादा आधे सॉफ्टवेयर फ्री चला लूँगा इनमें सोया था नींद खुल गया मैं दिखा रहा मैं चलो गया No help. मुझे कल सॉरी Why not Asus? Asus भी अच्छा है नहीं है ना Asus टफ यार नहीं बेकार इसलिए जैसा सस्ता होना इसकी कॉस्ट अराउंड 90,000 पहुंच जाती बोला ना इसमें ओनली रीजन वाज दिस किसी लैपटॉप पे एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते अरे तुम क्या ही तुम गेम खेलने के लिए तुम्हारे पास एक पोर्टेबल ग्राफिक कार्ड हो पहले ग्राफिक कार्ड लोगे फिर पोर्टेबल अडैप्टर लोगे बहुत महंगा था उसके बाद अरे वो चोमू बना होता है पोर्टेबल ग्राफिक कार्ड उसको पावर देना भी बड़ी दिक्कत है पावर देने का बड़ा सोचला साला और वो इतना डेलिकेट चीज है ना मतलब ग्राफिक कार्ड तो तुम मूव ही नहीं करना चाहिए मतलब तुम्हें मतलब कि जल्दी से पागल हो जाते हैं 2 मिनट में अबे वो अपनी स्ट्रीम में इतना चिल्लाता है भाई जल्दी इतना चिल्लाता है अपनी स्ट्रीम में दौड़े पड़ते हैं सोच में Sentinels before getting smacked around by some of the APAC teams. अच्छा वो है क्या स्प्लिट ये ना मस्जिद वाले लैपटॉप भी भाई चोमू ही होते हैं Spotted out backs away, not getting caught out in the open, but still a few stray shots. फायदा क्या होता है लाइक तुम स्विच कर सकते हो win cons for Gen.G. नहीं मस्जिद में बहुत फायदा होता है मतलब रेंडर क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं एमएक्स कम हो जाता है रेंडर टाइम बहुत कम हो जाता है At least the A-Ramp fights that you were talking about earlier, आप डायरेक्ट भाई इनपुट लैग बहुत कम हो जाता है मतलब आप डायरेक्ट ग्राफिक कार्ड से अपनी डिस्प्ले चला रहे हो ओह दिस इज नाइस हां मतलब पीसी वाला हिसाब होगा ना हां वो पीसी वाला हिसाब होगा Not going to go for something that शायद 5 से 6 मिलीसेकंड कम हो जाता है वरना वो दोनों यूज करेगा अगर मक स्विच नहीं होगा तो दोनों यूज करता रहेगा इंटीग्रेटेड भी यूज करेगा साथ साथ और वो भी करेगा बीच में डेडिकेटेड नहीं होगा डेडिकेटेड नहीं होगा दूसरी बात ये ना कि जो जैसे
पावर कंजम्पशन का भी बहुत मसला Got होता to है। get safe before the wall goes down. तू जब गेमिंग कर रहा था उस पे इंडिकेट वगैरह पे कौन सा लिया था तूने लैपटॉप नॉर्मल? Look at the swarm here, just a wide face. मैं जब कर रहा था He's under attack, and finally, दोस्त से some जब मंगाया था reinforcements just वो था allowed into the side here, but everybody survives. Could have got dangerous, could have maybe got expensive, let's say. But it's a good टफ सीरीज अच्छी है टफ सीरीज में जब बहुत भारी लगती है भाई वो anchoring spot. नहीं कोई और था याद नहीं आ रहा Really मुझे nice smoke. कहीं था ये सर का John's था got कोई cages he can play around, बट traps the टफ से catch. ज़्यादा वो पाया It's very effective. अरे MSI का था कोई MSI था What doesn't work अबे पता है MSI था is when they lose the early round MSI का fights वो right off the rip. MSI का सर्विस सेंटर नहीं मिलता है Gen.G now with rifles on board, looking to try to dominate सही B में by the look of things. Meteor इससे was बहुत कम acting ही a bit चंडीगढ़ है भाई as वो the सर्विस lurk. सेंटर है It looks like he is again separated from the pack. Good time for MSI Sen का to है try ना something up नेहरू here प्लेस में in है their क्या? bonus round and fully ये grouped तो up this time. मैं Nothing to लावाद chance, is it? Flash through, no ये सर connection with हाँ your लेकिन ये सर dropping ड्यूरेबल नहीं down. लगता Well, not मैंने एक एसर expecting का it, but he लैपटॉप does चलाया dash 5 into the open. There is that हाँ follow-up. एसर का Now ना a ड्यूरेबिलिटी reaction. मैंने भी Gen.G सुनी है इतनी fast on the approach. TP forwards by चैनल हो Karen, गई and they have cleared out that B site. ड्यूरेबिलिटी है बेंचो I do like the way that Gen.G Acer balance between ड्यूरेबल pushing लेना है तो aggressively फिर in डेल close चले जाओ fights भाई and waiting for the flood to डेल तो फिर वो just एलियन वेयर हो waiting गया to भाई see if there's a reaction नहीं from डेल Sen. खाली ऑफिस के लिए काम Know आता that है the टट्टी economy's लैपटॉप होता weak, है कि expecting the flood. टेक्टी भाई बहुत बहुत टट्टी मतलब Nade as well, अल्टीमेट stunned up टट्टी entirely here. Sassy. So fast उनके a bit. ऑफिस लैपटॉप ऑफिस से में थिंक पैड Finding नहीं the था approach here out wide. Munchkin seeking to at least relieve that मेरे को pressure and ऑफिस वाला damage भी and इतना offset अच्छा that एक्चुअली क्या disadvantage. ऑफिस वाले जो आते हैं वो बहुत ही Look down टट्टी onto होते the हैं pillar angle. They wait a pause, but now the paranoia. उस नाम क्या ही से Played a little bit deeper here. टैक्टिकल Smoked से now, लोड propped होते up. हुए जरा अभी मैंने ऑफिस में एक पीसी बनाया अच्छा अपने ऑफिस एडिटर में हाँ एडिटर के लिए Health still. अच्छा बना I हुआ think बहुत Gen.G तूने will बनाया मैंने था बनाया the way हाँ these बढ़िया fights get बनाया taken. एक 10 का From the बनाया side. Temple taken out of Caron inside the cage, 40, 60 का dominating but बनाया cleaned up. Munchkin in the back, 1v1. I7 No bullets, no chance. Munchkin सॉरी with the sidearm saves the I7 कह रहा हूँ today. क्या कहते हैं अरे Well, ये that's an extremely expensive हाँ round again. i7 13 Sen gen on the सही तो बोल रहा हूँ bonus, i7 13 creating gen pressure, बढ़िया बना हुआ है, applying बढ़िया बना हुआ है। danger. तगड़ा बनाया ग्राफिक्स मतलब मैंने उसके आउटर स्ट्रक्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया एक भी आरजीबी नहीं लगाई एक भी आरजीबी फालतू के फैन नहीं लगाए क्या जरूरत और एआईओ भी नहीं लगाया मैंने वो लगाया क्या कहते हैं डायरेक्ट एयर कूल लगाया मैंने मगर मोटा वाला लगाया अच्छा वो बड़ा वाला जो हाँ बड़ा वाला Upper लगा हाँ वो उसका लगा दिया मैंने क्या कहते हैं किसका लगाया एनजीएक्सटी का लगाया अच्छा है ठीक है मतलब कि हाँ मतलब वो ठीक था अरे वो ऑफिस में एसी चलता है ना तो हाँ बस और दिक्कत ही नहीं पता है i7 बल्कि कम एक मतलब हीट होता है i9 पे i9 तो वही Pause, and now they make the play here with the paranoid just a little bit too delayed. Rocket up and over, up trap saves him, but not from the bullets. कॉस्ट टू कॉस्ट वाले से अच्छा बना के दिया मैंने Nowhere close, so he will survive and lucky is in तो the end. ग्राफिक आ रहा है यार एडिटिंग के लिए तो 40, वैसे 60. पीसी एक 10 में 4060 था i7 13 जेन था और 1 टेराबाइट एसएस एनवीएमई है और 32 जीबी रैम है Pivot now for Gen.G. DDR5 की 4 He's not an option. हाई 5 They go back to what has been working for them. बहुत सही दे दिया अभी 1,10,000 1,10,000 में और बताऊं क्या है और एनवीएमई बता दिया और 750 है उसकी क्या कहते हैं पावर सप्लाई पीसीयू हाँ पीएसयू हाँ मैंने कॉस्ट कटिंग मदरबोर्ड मैंने वो वैसा लगाया मैंने मदरबोर्ड मतलब कि फ्यूचर हाँ मदरबोर्ड में कॉस्ट कटिंग ये करी फ्यूचर प्रूफ नहीं लगाया मैंने बिल्कुल भी बिल्कुल डॉट पे लगाया है बिल्कुल डॉट पे लगाया मैंने बिल्कुल भी फ्यूचर प्रूफिंग नहीं करी उसमें ठीक है ना एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लगा ना एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड लगा सकते एक एनवीएमई लगा सकते हो एक्स्ट्रा बस एक नहीं एक्स्ट्रा एनवीएमई भी नहीं लगा सकते और एक्स्ट्रा मतलब रैम स्लॉट भी 2 ही हैं तो एनवीएमई स्निफा नहीं भी लगाए वो डायरेक्ट वो भी उसका स्लॉट तो होगा ही ना एसएसडी लग जाएगी हाँ एसएसडी का तो होता ही है मतलब कि मैंने एनवीएमई का भी स्लॉट नहीं है उसमें एक्स्ट्रा ना रैम का कोई स्लॉट बचा हुआ है 16 लगी हुई है 32 पूरी और मगर यार DDR5 है यार उसको क्या अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी हाँ नहीं इतना नहीं 5.2 हर्ट्ज की रैम है सही बना दिया अभी भाई साहब एक्सपीरियंस है मुझे
नहीं मतलब नहीं और उस पे से टैक्स वापस भी आ जाएगा, टैक्स अब इसने आरजीबी वगैरह कुछ नहीं लिया, मस्त हो गया। तो टैक्स रिटर्न भी आ जाएगा वो 18% वापस। अच्छा तो वो कर दिया, वो कर दिया होगा ना। और जीएसटी टैक्स मतलब फाइल कर दिया। कंपनी पे ले लिया क्या? कंपनी पे लिया ना इसने। हाँ कंपनी पे ले लिया तो 18% टैक्स तो और 18% और लेस कर दो उसमें से, 1 लाख के अंडर ही हो गया पूरा वो। बहुत तो बहुत सही बात है यार, बहुत सही। तीन खा गया भाई, 3 राउंड ऑलमोस्ट आ गया भाई साहब, गजब मार रहे हैं इस टाइम, सेंटिनल वाले पागल हो गए। और मेरे ऑफिस वाले भाई बेइज्जती कर देते हैं यार, किसकी? कह रहे अरे ये तो बड़ा अच्छा स्पीकर है। मैंने कहा तुम्हारी माँ का। कौन सा? कह रहे ये बड़ा अच्छा स्पीकर सिस्टम है, वूफर बता रहे हैं उसको। मतलब कि उन्हें पता, मतलब उन्होंने देखा नहीं ना इतने दिन से। वो ऑफिस में क्या है, सारे एक और एडिटर का पीसी पड़ा हुआ था, फोटो एडिटर का, वो नीचे पड़ा रहता है ना, कभी कोई डेस्क के ऊपर रखता नहीं। तो मैंने उसको उठा के सीधा डेस्क पे रखा। एक तो ग्लास पैनल वगैरह है, तो थोड़ी बहुत आरजीबी जो उसमें डिफॉल्ट है ना, जो सिस्टम में तीन फैन की आरजीबी लगी पड़ी है उसके कैबिनेट वाली, है ना, और कुछ आरजीबी है नहीं। तो वहाँ एक लड़की कह रही है अरे इसमें गाना कब बजेगा? मैंने कहा अरे वो कंपनी में काम कर रही है। भाई उन्होंने नहीं देखा होगा भाई, नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं। मेरा पीसी देख लेंगे तो पागल ही हो जाएंगे वो लोग। Off of a read, maybe even just a sound cue. A great read though. And now Texture looking like he wants to get put into the smoke, or at least avoiding this flash. Enough to clear him out as well. They topple and fall, and they collide right into him. And that's more like what Gen.G were up to previously. A great balance of sometimes waiting for the flood if they anticipate it, and then not going for the flood, trying to disrupt the SEN retake. There was a lot of talk about how incredible Sentinel's retakes were. फोन लेके गया हुआ मेरा, फोन मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मुझे। अभी तक आपने एक बार मेरे मुंह से नाम नहीं सुना होगा उसका, अभी सुना। मोबाइल लेने वापस मंगाया था अपना। It's plummeted to not even being a good retake percentage at all. अच्छा भाई मैं। A great one, an incredible one, unheard of. सारे बड़े भाई यही बोलते हैं। So if SEN can get back to that kind of level, G looking to disrupt. There's a major position for them in this half. चल साले निकल यहाँ से। नहीं मैं गाली भाई नहीं। तीन वो ये सिर्फ प्यार गुलाब बन जाता है वो, सामने दिखाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आप ये देखो ना, उसके चक्कर में मेरा Really well done, very diligent from Gen.G. क्या चल रहा है भाई, स्पैम ही चलता रहता है इनका भाई आधा टाइम। मुझे समझ में आता, हम लोग पूरी क्लिप खाली कर देते हैं। आप ये देखो ना कि मेरा जो अकाउंट था वो मुझे मेरा नहीं लगता, मैं उससे खेल भी नहीं रहा। एक उधर नहीं है, उसने मेरा अकाउंट हाईजैक कर रखा है, ये नहीं देख रहे हो? भाई ये सेंटिनल जीतनी चाहिए, आज 3 बजाऊंगा मैं। और क्या छुट्टी सबकी है, मेरी थोड़ी ना अगलती। तब भी तो कल छुट्टी नहीं होती तो भी बोलता नहीं जाने सोना। नहीं भाई मैं 2 बजे 2-2:30 बजे से पहले वैसे भी नहीं सोता ऑफिस आवर में भी। मैं तो कॉलेज के आवर में 6 बजे सोता हूं। बोल अरे प्लांट हो जाएगा, प्लांट हो गया नहीं होगा, प्लांट भी नहीं होगा। पर कॉलेज 11:30 बजे का होता है, मैं सोता 6 बजे। एक दो दिन कर सकता है, रोज नहीं कर सकता है। अगले दिन पता है 2 दिन कर देगा ना, अगले दिन मौत आ जाएगी 12 बजे। नहीं पहले पता है मैं भी मैं कैनोपी की मल्टीविटामिन कैप्सूल आती है तो हाँ मैं खाता था उसको, और रात के 3-4 बजे सोऊं, सुबह 5 से उठ जाऊं, आराम से जिंदगी बिखरी। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह उठा बहन जो बिस्तर से गिर गया, खड़ा ही नहीं हुआ।
Rebounding across the wall, lucky a finish gap into the wall, maybe a chance for Meteor, but the knives just go amiss, all ran out. So do the chances really. Attempt to try and take this space still. मैं तो बॉल लीवर की टैबलेट खा लूं मादर तो हो गया भाई बॉडी वॉल हो गई मेरी अब But now just making sure GEN.G have no opportunities to ऐसा take this झटका fight. दी And if they भाई do, झटका दी SEN मेरे को tripled up, looking to drop the wall and take the fight on their terms. They missed the paranoia. अरे भाई Meteor, they combine their might, and Sentinels, no chance entirely. भाई ऐसा ना करो सेंट्रल को जीतने दो यार मैं पहले That's the bungle. And I said I अभी इसको हार love the देंगे fact तो that they खत्म were ही हो smoking जाएगा it काफी off ज्यादा and मजा आएगा not फिर taking the fight. Made me eat my words in about a second and a half afterwards as they just sent the तो paranoia, missed अंधा it and ran in one by one. एम अच्छा है इसका That's a मतलब tragic अब ऑब्वियस misplay अच्छा and है looking so similar अंधा to घुसता है what was भाई hurting SEN on पिछले their पे मास्टर defense से in the मैंने upper जेट bracket लिया था final. उसमें अंधा घुस रहा है भाई टीम की यूटी आने नहीं दे But रहा there is था simply no अंधा ही घुस need जा रहा to था make a वो मर play जा like रहा that. They want to clear out a ramp, I understand, but you're just taking too many risks there. The paranoia doesn't clear out the lane fully, and GEN.G are so ready for that. They punished many times before. नहीं अरे यार दिक्कत मत बोला करो वो छक्का याद आया था मुझे पाकिस्तानी एक पता नहीं कौन है शायरी करता रहता बहुत बुरा सा है भाई वो कभी कभी आ जाता है मेरे इंस्टाग्राम पे कोई मसला तो नहीं साला मसले वाला Have that economical advantage, even the showstopper for Texture here. Should be looking at that fourth round on the board. Sniffa अपने server का मुझे link दियो या मैं ही बना लेता हूँ. Texture got an amazing showstopper round against SEN previously by doing pretty much the same thing we just saw, stopping them fighting a ramp. It's anchoring players that get tested. एक काम करो direct. It's unusual for Zelsis to be here on A. Let's try and play around that smoke. Taken out, he's pitting early preemptive. Paranoia will not connect there. Where will the rocket go though? That is the question. And fires it straight. Zelsis is dropped, and with that the pin is open side out open. Still looks like a chance to take this fight, but they're not anticipating it. Meteor already up onto the high ground position, but Sentinels not messing around. A rapid approach and a rapid retake of this one, but they are being cleaned up entirely. Damn bro, no Sentinel, not like this. ये तो पीछे चल रहा है पीछे कितना पीछे चल रहा उतनी के to put the squeeze onto SEN. After SEN had got such a great start to this map. Great read as well from Texture. Zelsis would not be playing inside the ultimate because he's scared of the showstopper and instead would be over towards elbow. Even if Zelsis wasn't there, that's the spot that John loves to play in. John also without the cage he normally uses to flood from CT into elbow. अबे वो होता है चुल होती है बाहर निकले बैठने की बहुत तगड़ी हाइपर में क्या कह रहा है बोर हो रहा है SEN are going to take a timeout. अभी कोई लकी बुला रहा है नाचना शुरू कर Just the map, but maybe in the series. That's why Sentinels are taking their time with this ये तो मोहित भाई क्या बोलते कुछ समझ नहीं आ Pressure is रहा already माइक on से SEN. दो We स्टॉप knew that they were at a disadvantage coming into हमारे लिए this. माइक कितने आगे GEN.G earned that advantage. अच्छा माइक कितना सॉफ्ट Bullying किलोमीटर the दूर होकर आवाज Sentinels on two of the maps in the upper bracket final and cementing themselves irritate करता है यार माइक as बहुत the आगे leaders at Masters Madrid, but not the winners yet. They know the job's not finished. That's why they're taking it one मैं सोच रहा हूँ round like at a time. Bluetooth वाले ले लूँगा साला वाकई में गेको लग रहा था उसकी शक्ल भी ऐसी It's a Korean team, the furthest they've ever got in one of these international tournaments, going all the way to the finals, but Pacific as well. They've had 10 chances. This is the 10th one here. Timeout We're किसका है? looking SEN at का है. Masters Madrid Sentinel getting a title. जब आ रहे हैं Close, don't get me wrong. 5-1 से 5-4 हो गया Tumbled at the finish line many times. कवर हो गई भाई तो Or some not even made it to the finish line. पूरी तरह से We're रिकवर going to नहीं talk हुई about the Korean squads, right? Yeah. New turn. I think ये GEN.G वाला VRX. राउंड भी निकाल लेगी Best was third. अबे टेक्सचर कुछ ज्यादा थ्रेट खेल रहा है टेक्सचर को स्पेस क्रिएट कर दे रहा है पूरी बैंक कर इन लोगों ने बाई किया पूरा हाफ This बैनर is that new era of Valorant that we're looking at. Teams being put together. He's filling up the pieces here. Shots going wide there from देख Meteor. रहे हैं बाई राउंड में उसने Tag onto the damage, and it was आउटलो definitely लिए a threat of it. Celsius
on the half armor. अरे वो दो गन लेते हैं। Get a read that because Meteor faced mid, he's not आउटलुक going to be बहुत looking मतलब A पावरफुल गन है बाय राउंड में भी Sassy and Zekken are still trying to clear that, but this is as the B hit comes पावरफुल through. तो है मगर Does connect it at least onto the top. सिर्फ होल्ड के लिए पावरफुल है Exchange कुछ के लिए positions, and he नहीं will do so. अगर अभी वो घुस रहे हो तो कोई काम की नहीं Now they are fully rotating away. नहीं But they're बे rotating डैमेज without तो anybody देती है भाई taking तो space over towards लॉन्ग him. रेंज वो है फाइट अरे एडीएस करना पड़ता है ना उसके You know, डैमेज के Sassy is लिए perfectly fine बस facing ठीक है ramp ना here. 1 He to 3 knows डैमेज he's कम not होता going है to get कहते हैं punished. 60 छोड़ना कम होता है He's going to be able to hear some of this. डैमेज कम नहीं है वेंडल आप महंगी भी तो है ना वेंडल का भी तो यही है बॉडी शॉट मारोगे तो Paranoia, getting good information with that one. Respecting the position here, Sassy not eager to take that fight. half है ना, Instead, doubling up. Looks like ये बड़ा बेकार है high-low setup. Yeah, it is. पूरा Indeed, with him ऊपर हेवन playing छोड़ it दो onto Heaven. Satchel forwards, cuts up the angle, flash पता है ये repeat. बहुत बुरे लगते हैं जब ये आधे रैम काट Second ने भर दिया भाई Necessary, and second comes up with the goods and more. मरेगा 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 ओबे Away. टू लेट है हां Too मतलब late. चारों को मार दिया क्या I'm not sure if Zeken's asking the crowd अरे to यार, ये appreciate headphone की or telling Gen.G he can handle more of them. अरे वहाँ ट्रिप भी थी वो बेचारे घुस के भी आते थे The flash play from Sassy तो cost क्या him his मारा life. इस बंदे ने Makes him look worse in terms of the stats, but it was exactly what his Proper teammates pull needed. It fed Celsius in through the back into Heaven and also allowed Zekken to try to contest the main players too. What a spray control, he's 17 and 7. कति पाड़ दूंगा Leading the मैं charges. बैठ भी खुद ही फाड़ दूंगा जो पंजाबी में हो तो कितना मस्त है ना कॉम्स Somebody's rounds. Friend, the most ओ कितने जा रही है ओए खुत्ते दे पुत्र Senna looking good अबे to 10 maybe के मार make रहा it हूँ 7. Add a few more to the tally. अरे perhaps, डबिंग but करनी maybe चाहिए इसकी speaking किसी too को soon. We know how good Gen.G are. And they're so good Goodbye. at Oh. 55s. पंजाबी ब्रॉडकास्ट हो रहा है इंडिया में This. ओ जेड़ा स्मोक दे दो पाजी If nobody's there, they can take the space. ओ किधर 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 टहलियां मार रहे हो The trip will give him the timing here to potentially पुश make कर the दे play. ऐसी पुश कर दे ओ कोई बसुड़ी नहीं ओए कोई बसुड़ी नहीं टेंस To पाजी him entirely और ये no हवा way. The तो movement, भाई the twist and turns. एक ओ मुड़ा मार देना Zekken goes from high to low, but Sassy's here potentially as the safety Bhai, put मैं क्या it all up. Maybe your time to strike. Sen, step up to the line. ए फ्राइडे या फ्राइडे Reward the rest of your team. सैफी मार दिया करो Two topple and fall सैफी के texture पास था soon after, and the movement. वाइड की Wide swing, अबे wide चटनियां बना दी हेडशॉट मारा lead maintained. The हेडशॉट मारा Sentinels. सासी ने Vital, चटियां बना दी necessary, Box shot था वो essential for it. A relieved smile on the face of Zekken. No इसको देख need for the replay, I don't think. After picking up भाई 4 वो in the उसको नहीं previous, पता था look at that hand on his head. Thought he'd ruined it. But his teammates were there to pick things up. Huge from Sassy, who gave his life to make What Zekken the fuck you got the watch party का license yes And what a read from Sen as well, that they can get away with that because Gen.G group up so much in their चोरी attack करके side. They talked about that, they knew it coming out of the press conference after the मैं upper इधर bracket चोरी final. करके थक गया स्नीफा क्या करें बड़े लोग हैं मिल जाता है हम लोगों को 10 seconds down already, and look how aggressive Sen are. This Trailblazer, I mean, it's so deeply pushed. आज की रात चोरी माफ होती Sassy is pushed entirely. He's given आप them ही the के full सब information now, just जैसे calling it out to the स्मोक rest कर of his पे team. आप हंस It looks like we're जाएगी watching आग Gen.G on the defense, right? Just आग believing in the लगा read. Taking that liberty. Celsius yes default position what's up दो प्रो बेबी बकल इन कैसा है मेरा भाई walk up mid. Zekken's death सॉसी ने going to भाई be अंदर पुश कर दिया भाई कितना अंदर पुश कर can't दिया die here. He can't take that level of उसके risk. फायदे भी He's just नुकसान भी looking for हैं the हाँ वो information. थोड़ा सा अब ना थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स खेल रहे हैं वो Eyes now on the B side. अंडमंड चीजें कर रहे हैं Waiting for him. The nade should clear at least one. उनके पास layer बाय नहीं हो of it. जैसे मर्जी खेलना Smokes है now कुछ up and paranoia through. Full And it's push a call made to flood right back into it. The rocket damage done, but already texture. फिर निकाल देता भाई ये दो बंदे अबे राइट में Shuts down the adversary, shuts down the nemesis. But does he anticipate this? Yes, he does. Movement sublime. अरे बच गए बाहर फिर तो आपकी खेल दिया भाई नहीं था ना बाय नहीं था ना डिफेंसिव में है क्या है हाँ डिफेंसिव है ऐसे भी पहले वो पीला बाल वाला उसके बाद कमबैक किया है टकला आ गया सेन में ओटी बहुत नेसेसरी था वो पहले भी टकला था ना एक सेन में क्या नाम था उसका अबे वो था ना क्या नाम है उसका शज़ैम क्या नाम था उसका अरे कोई और था यार एक और टकला था यार वो अच्छा मैं फैनेटिक सोच रहा हूँ नेवर माइंड अच्छा डर के हाँ डर की काला उसका गंजा अलग ही चमकता था
फोकस लाइट उसी के गंजे पे मार के रखते थे। ये देख, ओ शीश, चेहरा दिख जाए इसमें अगले बंदे का। अभी उसके जैसा लग रहा जो अपना वो आता है, क्या था यार वो, एक कॉमेडियन है, क्या नाम है, सन ऑफ अभीश मैथ्यू। अभीश मैथ्यू दिख रहा है यार तो पूरा। मैंने देखा नहीं कौन कॉमेडियन है यार। केनी सेबेस्टियन को जानता है? नहीं, कॉमेडियन नहीं जानता किसी को ज्यादा। I don't find Indian comedy funny. मतलब कुछ तो अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छी लगती होगी, मेरा ह्यूमर ही नहीं है वो। बोलो बीच में तो दिख रहा है। अरे क्या नाम उसका, उसको कॉमेडी चाहिए। कॉमेडी सब्जेक्टिव है ना, किसी के लिए। हाँ, कॉमेडी सब्जेक्टिव है। I can't find any। मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, एक वो कौन है, मैट ट्राइब, उसको बहुत सही लगता है मुझे। क्या I can't find any Indian comedian actual funny, like आधे ज्यादा उसमें गाली को फनी बनाने की कोशिश करते हैं। अबे नहीं, अभिषेक को फनी वो है बोलता। आधे ज्यादा उसमें जबरदस्ती। I don't know, I can't find it funny। हाँ, मेरी बहन को भी ऐसा लगता है। हंसते हम लोग, हंसते मैं हंसता हूँ। बहन से बात करा था मैं, उसको भी कहता पता नहीं क्या आप अपने पक्ष से कहती है। जाकिर खान तो पता नहीं क्या अपने को हंसता रहता है। तो अभिषेक को मुझे बोल रहा था, जाकिर खान में तो कभी मैं एक जोक पे नहीं हंसा आज तक। मतलब कभी क्लिप वगैरह देखी होगी ना, आज तक हंसी नहीं आई मुझे। मतलब बिल्कुल फनी, आई कांट फाइंड हिम फनी एट ऑल। लाइक इमेजिन कौन होगा, लाइक आई कांट इवन, आई मीन कुछ मेरे को फनी नहीं लगते साले कुछ। Like I rather find क्या नाम है, कैरी मिनाटी funnier than him। क्योंकि कैरी मिनाटी गालियाँ बकता रहता बस। Maybe आशीष or whatever, if they you consider them comedian। नहीं मैं आशीष को फनी मानता हूँ। आशीष चूतिया है। जो भी है, मैं I can't find them funny, like I can't, they are not, it's not my humor। ठीक है भाई, बस ठीक है, नहीं कर रहा कोई। हाँ, बात ये थी कि तुम्हारी बहन भी ऐसी सोचती है क्या? हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। भाई पता है उसको मैं से दिखा रहा था, कह रही है हटाओ चूतियों को। क्या कह रही है? कह रही है हटाओ चूतियों को। और ये कपिल शर्मा शो भाई, ये सब नहीं भाई, बर्दाश्त के बाहर है ये सब। अरे भाई ये तो बिल्कुल नहीं देख सकते हम। कपिल शर्मा गिटार जलने वाला था, ये लोग मेरा अरे भाई सॉसी कितना वेट कराएगा भाई। अच्छा, पहले तो मैं कल आऊंगा स्निफा में, फुल बिजी आज, बाद में मिलते हैं। ओके बाय बाय मैन। ज्यादा बकवास स्टैंड अप में नहीं लगता भाई, स्टैंड अप में नहीं। भाई सॉसी, अरे भाई सॉसी दोनों वन टैप। अरे साउंड साउंड दिया कि हमारा भी सुन। वल्नरेबल नहीं होता तो नहीं मार पाता। बॉल तो कैसे उठी है? वाइपर को मर गया था। वाइपर जिंदा था ना। अरे यार Great resilience on show. ट्रेड हो गया ना, ट्रेड हो गया। दो बट इज़ो कैसे मर गया? इसलिए मरा वो देखो ना, शॉट देता वो वॉल अप की वजह से दिक्कत है। और टाइम नहीं है। हेलो Or rather, some of the players with less experience at the big level as well as Karen. कभी लेके आना अपनी बहन को स्ट्रीम पे, कॉमेडियन के बारे में बात करें। Let's see how like-minded people talk about comedians. क्योंकि अब तक जब जितने लोगों से मैंने सुना है, they all find comedians funny, Indian comedians. I can't. I fucking can't. Really nice idea there and awareness. We just love dark comedy, I would say. मुझे dark comedy अच्छी लगती है। Very clean. Second just trying to get the orb online. मुझे पता है, he runs away with it. Call that silver lining. Dark humor नहीं जो politicians उठाते हैं, वो उसमें मजा आती है फिर। क्या कर रहा है भाई ये? What the hell is going on here? Realizing it. Could go for a knife fight. अच्छा shorty है ना। Okay. Second gets picked off, but Sen won't अभी be too नहीं bothered about that. देंगे। Another huge difference between Sen बहुत फीलिंग आ रही playing है split in the upper bracket final and now. The vibe, the atmosphere, it's so different. They don't feel as timid. पूरी तरह होल्ड है ना Ten said that he was zoning out throughout the game.
Could really find good timings to be able to take his one. What do you want to do? It's different. Yet ये Gen.G are still keeping it within two. बासी It's such a dangerous squad. It's on them to cook up some idea for this bonus round. What a weird wall from Munchkin over towards Abhishek is nice. कौन कौन आ रहा है भाई Good decent. Thrown out. मतलब his accent is like such that it makes it more funnier. मुझे पता है वो किसी के ऊपर फनी कमेंट से ऐसे वो है क्या नाम है उसका यार पस्सी के साथ जो रहता है बस्सी बुरी भूख लग रही है नहीं पस्सी के साथ जो एक और किसका दोस्त है क्या हर्ष क्या नाम है उसका यार Tuck to the corner, Trailblazer, any seek or attempt to punish this one. Might just be met pound for pound. 3 players गुजराल नाम कुछ करके it's being explored here for the first kill. Damage done, Meteor. Harsh Beniwal. Disengage away. हर्ष They're going to get caught here, covering fire. You're right, they are getting caught. In all sorts of positions, मुझे वो बोलता रहता है वो मतलब क्राउड मतलब क्राउड कॉमेडी करता है वो क्राउड से वो फन बना मुझे ऐसे कॉमेडी मेरे को भी गाल लगता है कोई टैलेंट नहीं मैं तो दूसरे दोस्ती करता है इसलिए मुझे एक हद तक वो नहीं अच्छा लगता है मेरे को एक हद तक जब से क्राउड वर्क डालते हैं अपना लेकिन अभिषेक नहीं करता जो भी उसका जो सारी तो ओरिजिनल है वाला अपना कुछ पास 3 बजे थर्ड मैप जाने वाला है अपना आइडिया कुछ लेके प्रेजेंट करते हैं आज थर्ड मैप जाने वाला है मैं बोल रहा हूं क्या हुआ चल तो रहा है You got to call it a hard read in my opinion. They just know that एक मनी को आना बेहतर है क्या बोलते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर वाला कोई I don't know तुम लोगों ने डेव शैपेल को सुना है कि नहीं I find him funny सुना है मैंने नाम Yeah Dave Chappelle is very funny probably like one of the best comedians I like just walking up mid into a crossfire. Meteor is now going to have an operator online. I like my drive. Maria knows that. Very far back over she hates him. It's not a position where my drive नहीं देखा ना तुमने? Too much value. मैंने सोचा था. My drive बढ़िया है. Dark comedy करता है mostly. Looks like Gen.G were setting up for a punish over towards B. Yeah, and at the very least, seconds one away from the ult. Yeah, it also allows them to get good information behind Zelsis's orb, which he's put at the front of B main. And now as it goes down, Gen.G knows there's nobody over in this area of the map. The flashes out. It's a wide face, really wide face, but all the kills defending me collected and traded there by Kara. नहीं करी. Meteor though. Potential players could be good information, at least with the acknowledgement there. Trailblazer finding the target. Skyline छोटा नहीं बे. Really chaotic situation. Pings on the map though. Gen.G. I find Dave Chappelle and like Chris Rock kind of funny. You would expect Zekken to be with the play here because he's one away from Showstopper. He's the entry player. So the fact he was in market, I think, has scrambled Gen.G a little. Yeah. लोग कर क्या रहे हैं में ना कहीं जा रहे ना कहीं रुक रहा. Where the hell these players have gone. करना क्या जाता है? पकड़ के बैठे हैं. It's almost going down. करना क्या जाता है? And almost लग गई थी 10 feet away. Being assaulted and swarmed. Paranoia is good shot. Meteor एक kill मारेगा भाई. Stray still into this angle, but look at it. They just absolutely overpowered them. Really beautiful attack side from SEN. Gorgeous calling from Jungkook. कोई सवाल नहीं है. Contact plays in the previous contacting up mid to pinch the players over towards A heaven. This time going for a semi-contact all the way through A heaven. Karen just caught a glimpse and gave up the game. Take a look at the replay as Luckier saves. Look how deep they are before Gen.G get the read. And to me, the biggest strength of Gen.G on defense is the fact that they get the reads. They either play aggressive or they re-clear in the mid something to give Munchkin that gut feeling that he's going to make the right call. वाकई में I think you 3 can बजने see on वाला the है. minimap there, Gen.G was so spread out. Even after they re-cleared B main, spotting second with the Trailblazer in market was a real head-scratcher for them. Love what Jungkook's bringing out here. You can see that they've put in a lot of effort. And what a tight turnaround for SEN. They had to play basically the entire time since losing on Split. They haven't really had a break to work with. Gen.G and the team should have been able to pull adaptations out of it, but it's harder when you won. It's actually easier to learn from your mistakes. Yeah, it seems like what SEN are PUBG Mobile now calling this time out, seeking a few adaptations because they're realizing that the map slipping away from their grasp. Sentinels holding this lead, looking more and more likely that this map 5 is just inevitable. क्या कह रहा है? मैं बोला तो अब तो PUBG मोड में स्ट्रीम कर सकते हैं. Icebox. PUBG स्ट्रीम नहीं कर सकते? PUBG स्ट्रीम कर सकता है has to मैं do बोल रहा with हूँ. keeping up that spirit.
I feel like it's difficult from the outside to understand just how much mental game there is involved in Valorant. If you lose your confidence, if you hesitate, doesn't matter how good your game plan was, how good your ideas are, if you can't execute on them because you're feeling the nerves, feeling the pressure of the moment, you're going to let it all slip away. So that's what I need to see from Gen.G here. Even if they're not able to rebound on this map, which I'll be hoping they can, but they're at least keeping their heads above the water. Toss the hesitation to the side here. Trust the gut, make the plays. That's what carried Gen.G so far all the way to this grand finals. You can't lose your nerve here, not when you're at the finish line. So this is the Viper wall now being put over towards B. That is a difference. Normally Zelsis has been putting in A and the orb on B. It doesn't look like Gen.G are thinking it's a real threat. It's only Munchkin in this area with a Bucky. I've seen Gen.G do work in spots like this. पता है मोहित भाई? Especially inside the orb. Hello, Munchkin. Quantum. There's the dog now breaks. Hello. Let loose that snake bite. So covering the retreat, but at the same SEN time, anticipating every single play. मोहित भाई कहाँ गए? There's a job well done. Carrot did return that fire, but Munchkin pushed back that way. Snake bite vulnerable. Boombot in his face, barely dealt with. Still alive and अरे वो माइक म्यूट हो गया. एक मिनट हो गया. मोहित भाई कहाँ गए? They didn't help Zekken. Zekken got into sight and they were scared. Scared of the Buckies, scared of the snake bites coming down. Something caused a hesitation in SEN here. And it's a 3v3. Both muted. Still with knives on the other side. Fear might cost you if you are Sentinels, Karen. It's close, not quite concealed, only good for the one. There's that instant trade. The Meteor is way ahead of you. Look at this guy, already taking a position forward and tucked underneath. He's picked up a rifle, and this could be the playmaker. Real time, watching it play out. It's like a car crash in slow motion, but a tough plant, not anticipating it, leave it in that 1v1, oh, 1v2. Sassy! Yo, Mohit bhai. Meteor, what a play! The anticipation again. Mohit bhai mute होके बैठे हैं. SEN had even realized they were going to end. I guess that. Meteor knew पता है तुझे मैंने वो खेला भाई Assassin's Creed Village. अरे Assassin's Creed नहीं. What the fuck? दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? Resident Evil Village. iPhone 15 में. भाई क्या चल रहा था ग्राफिक के साथ भाई? कंसोल गेम है भाई. हैं? iPhone 15 में कैसे है? अच्छा कंसोल गेम खेल सकते हैं, भूल ही गया था. हाँ. कैसे चल रहा है? भाई झकास. हाँ झकास चल रहा था भाई. लाइक दिला दे. क्या दिला दूँ? iPhone 15. झुक. Does have the showstopper. Yeah, boy. Critical tool that they could be using. जब झुकने को बोलते रहता है. Maybe swing this round when the economy, well, a super heavy investment. Gen.G should have some money just left in the bank, but if they lose this round, it won't look ideal. Assassin's Creed Village. Zekken was dominating. हाँ यार वो निकल गया मुझसे. Hasn't quite been able to find the same success, but here he comes. Yep, just following it. Dog going to be leading. No way, Meteor! Plucks him out of the sky. Didn't get cleared, he was on top of the box. And the threat of that rocket is just negated immediately. Tens though. भाई comeback हो रहा है, comeback. It's the right time to take them. Got to play riskily now when you're a player down, especially against a team like Gen.G. Texture. Stacked. Oh, they just missed the timing. Texture. He's going to spot him now. Tens doesn't see it. Tens called He's out. The dead man walking. He really is. Should not be getting away with this at all. In fact, Texture not even worried about it. His team's going to be calling for it. He wins the fight out. Munchkin taking that one alone, but already it's Texture sees the advantage, and now that close position tucked to the corner, punishing the all pick. Himself is wondering how the hell did he get there? Two players to stand, but turning it down, and Meteor turning up the bloody heat. All up to John. Again, another SEN player in a 1v2 to end this situation. Not favoured, 25 seconds, doesn't know where Meteor is. There's barely going to be any time here at some point. He's got to get a move on. He's going to give the information away to Lakia. 15 seconds. Can he knife out walk the entire way? As much as he possibly can. Wants to give away absolutely nothing. But at some point, they've got to know it's A. And Lakia, yeah, finally realising. Turns the attention towards it, barely enough time. Health नहीं है. So John's got a hell of a task ahead of him now. Doesn't know where the players are. Left to take some gambles. Lakia, what the hell was that peak? That's an unbelievable shot though from John. Absolutely. Brought it to the 1v1. 8 bullets left in the clip. Smoke out. Open Meteor.
spoils the potential play. लेट है तू भूतनी के. हाँ मतलब ऑलमोस्ट मार दिया उसने. Even got the game reset, but Meteor comes up with another huge round, saving Gen.G. मैंने पता 3 अलग स्ट्रीम खोल रखी है. बड़े. मेरी खोल के देख बस. Winning that previous round. अरे मैं 3 अलग फ्रेंड्स की स्ट्रीम देखता ना आजकल. Shuts down tens. ओह नाइस. बाकी 2 अलग है. ओह नाइस. They'll have to film another take of that. पहले से सिर्फ तू ही था. Frustrations on display. मैंने कहा था ना हेल्थ कम थी उसकी. I believe we're going into a tactical timeout इन लोगों को here कुछ as well. करना ही पड़ेगा. Yeah, there it is. Yeah, timeout for Sentinels then. They've just lost 2 rounds in a row. ये सेंटिनल ने टाइम आउट क्यों लिया? And things have gotten very scrappy in the middle of क्योंकि राउंड हार गए ना 3-4 लगातार. अभी कितना 9-6 था. Into be heaven seems to make a lot of sense there. 2 राउंड ही जीते वो लोग. Showstopper follows it. They just weren't expecting there to be 3 players. They had the audio cues that they were chasing one away. They're expecting another to be hard anchored on B. They just don't think the Meteor's also going to be there. ये जरूरत होगी उन्हें कॉल की. How do Sentinels adjust their attack side? Gen.G ने बताया एक भी नहीं लिया लेकिन. Because now they're also heading into Texture's ult. I mentioned it earlier too. Zekken, I think, had 23 kills to end his defense half. He was somewhere in that area, even if I'm wrong with the exact number. He's only at 26 now. Yeah, it's been slowed down. Yes, he hasn't really been able to have the same level of impact on the entry. And to be honest, him entering was part of what looked magical in the game against PaperX. And when he played Lotus against Gen.G, actually, he was just sailing in, dominating opponents, cracking stuff open for the team. Kind of dragging the rest of Sen through some difficult moments. Not in hot water just yet, but again, that lead that they had, no longer steady. Gen.G creeping back up to it now, trying to make it an even map, an even game. Texture. Got that showstopper here. Caron setting up the play out towards Ram. That's pretty risky, actually, giving away his positioning there. Intense is taking the timing. Smoke out. Texture, though, with the rifle in his hands. He's the one who has to really land this one. Shot! The crouched up. Not expecting that. Too many players to account for. Texture falling. Caron now with the judge. Now, I've seen this one before. If they walk right into him, there could be trouble. Yeah, but they've got the Cypher off. They see that he's got that weapon. They want no piece of that smoke. Now a maneuver all the way over. Lakia out wide, trying to anchor this position. Follow through with the kills, and they do trade out those available plays. But Caron, TP in the fight, in the mix, inside the smoke, trying to dominate this one. But he only has the judge. What can one man do? Not enough. Pit, lay it down for Sentinels. They're not leaving this one to chance. They need to clean it up now. Munchkin, the IGL. Does he anticipate Zekken's forward position? He does not. So, 11-1 now on the board for Sentinels. Off the back of that timeout. New lease of life on their side. That's a great attack side call again. Sen are really adding fake plays into their game. Yes, it's this one that opens up the round officially on the kill feed, but the whole reason that they're able to take that space in mid silently is because they created pressure A-ramp and then got knowledge about where Caron was playing and knowledge that there was an opening in mid they could take advantage of. Last time we saw Gen.G on a broken bike, they won the thing. समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है, आवाज तेरी दब रही है. हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कभी तुझे लगता है फिक्सिंग हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता. Munchkin's got to try and hold it down with the judge until the cavalry arrives. 3-0 2-0 ऐसे कुछ होगा. ये तो चला सीधा फर्स्ट मैप में position to really get some work done with this one in the close नहीं, ऐसा नहीं होता. Still they dash past him. They don't know where he is finally. Dealing with him. Coordinate नहीं कर सकते ना तुम ये सब. Turned into a fast flank with all 4 of them. The trip. Giving it away. अगर एक बार लीक हो जाए. तो तू ऐसे क्यों बोलता कि IPL फिक्स्ड है? यहाँ IPL वगैरह तो होते हैं. No reaction from Sen. They're not trying to take space elsewhere. हाँ? Holding the ground ensnared onto the site. IPL वगैरह इसलिए बोल रहा हूँ ना कि उसमें सट्टा लगता है ना, इसमें सट्टा नहीं लगता बाबा. इसमें लगता है, तूने उन लोगों को देखा नहीं क्या? इतना नहीं लगता सट्टा. हाँ वो ले बात. Caron delivers. I'm telling you, man, you cannot count Gen.G out. It's another thrifty for Gen.G, man. And it's Sen not being quick enough, not realizing fast enough that everybody was on the flank there. You know, from our position, seeing all of the perfect information, it seems obvious. Okay, you need to take screens control. You need to be able to take heaven control there. But they didn't plan for heaven, and they just all got stuck on site. They were expecting there to still be some people over towards screens or ramp or heaven. And
Unreal mechanics on display. Yeah, absolutely. Meteor to open, Texture's ult, and then Karen closes. The three heavy hitters. Putting in work. 2 rounds stands between them in terms of that equalization. Again, looks like a ये fast लोगों का play out, फ्रस्ट्रेशन and it देख is के लगता नहीं है कि फिक्स नहीं किया होगा हाँ and takes the damage follow up, the rifle in play. John QT is so fast here, just trying to follow through with Sassy. सही कह रहा He's already gained that ground here, but they've lost too many players. Surely. I mean, Gen.G don't have that many holes in their defense side either this round. Munchkin's already keeping B main control. You know, you've got Karen looking for the lurk play too. Yeah, he's taking that real. क्या हुआ कट अप An attempt from Sen to try to up the tempo. क्या बोला था मैंने अगर जीत गई सेंटिनल ये मैप तो 100% 3 बजेंगे बेटा लिख लिए मतलब 3 से ज्यादा आगे नहीं जाएगा 3 बजेंगे ज्यादा तो ज्यादा क्या मैंने 3 बोला था 3 बजेंगे हक दिया भाई मीटियोर ने 3 से 4 नहीं होगा मूवमेंट है भाई Gen.G are going to know that they have to focus on B, and Zels is going to get rooted out here. Not again! Not again! No way! The 3 versus 3. The discipline, the diligence, paranoia sweeps through. Now the Seekers over the top with the flash, trying to hold his ground. Sassy does not go down. Pillado, played up, double up, guns need to be out, and AI in play. Finally, Lack here. A 1v2, finds the first. Next one. Oh my fucking god, bro. Get out of here. Chill out. It's lights out. He's been so good for Gen.G in the clutch. And he cleans it up again. Zelsis got away with murder in that round to make things doable. But finally, Gen.G got rewarded for their good early round play. There've only been 3 successful rounds for Sentinels in this half so far. Gen.G otherwise finding moment after moment. And look at the reaction. Pure relief on Lakia's face. Compared to the elation on all the rest. The stress, the heart rates all spiking. Tension is there, palpable. But the economy declining. Now they have to make a play, they have to make a play, they have to make it now, backing away with a position of respect being shown. ईगो हर्ट हुआ है उनका गंदा वाला Tangle with that judge. Gen.G have made such an incredible comeback. आदमी फिक्स करके इतना खुश नहीं हो सकता है कि नहीं स्टार्ट जैसे वो पॉप ऑफ जो होता है They're only 3 rounds away from lifting that trophy. And this one should be a gimme. Even it up 11-11. It's up to Sentinels to pull out. Not just miraculous moments, but honestly just divine intervention. Might just be necessary. A jiggle. Gathering for Lackey. Yes. There's not as much chance of a punish. Here's the dog trailblazer broken, denying. And he's sort of grounded, he might be able to gain Meteor. He's up close and personal now with this rifle in his hands. Does he anticipate this kind of danger? He's with the fire, but he's already gained 2 kills for his team. And now John QT wants to put a bit of a move on here still. Doesn't have a rifle to take that fight, dodging, ducking, weaving. Finally, the run and gun in action. Sassy, singing his plan down. Very nicely done there by Sentinels. Lucky had just given it away a little too early. Missed it on John. He's opened up a chance for Sen. Post plants look good as well, honestly. They do. They've also planted so that Tens could get one and then ult away to heaven. Possibilities now for Sen. Twist and turn and find themselves up to 12 here. Paranoia's exchanged. Okay, the nade just dodged the bow with the TP. Engaged. Texture. Matters into his own hands. He's just blitzed his way onto the site now and out through the back of it. Neurofem. Maybe some false information, but they are looking everywhere now. Smoke. Drop down. Texture. Sticking. Half. Denied. Oh, let's go. हाफ के बाद हटा क्यों नहीं वो? वो फुल स्टिक कर अरे यार आजकल फुल स्टिक बहुत ज़्यादा हो रहा है VCT में सब लोग फुल स्टिक पे बैठ जाते हैं The thrifties will not go quietly. मैं बोल रहा हूँ सब लोग फुल स्टिक पे बैठ Both जाते हैं teams finding those avenues to be able to turn these into miracles. छोड़ना ही नहीं चाहता It's Lakia there who just pulls the trigger a little too early, gives away his spot, and from there John and Sassy wiggle their way in to be able to get the plant down into such a nice area for Tens to play. Didn't even have to use the ult to reposition. Pit in mid, Sen, Matt Point, looking to try to extend the series.
deny Gen.G the trophy, at least for now, and move us on to Icebox. Here. How well Gen.G have been playing. There's no certainties. But I think SEN are happy in this spot now. Guns are good. Gen.G's economy, listen, hasn't stopped them in the past, but it's taken a hit. Only a little one though. Munchkin is pretty happy with the judge here. It's Texture, who's really in the worst spot of things, but he's hiding inside a smoke, looking to try to make the play here. Meteor, off angle! Loses his fight out. Against the high-low there, it's very difficult to get anything done. Will this be the domino effect but here? Look, it's a fake instant reaction. Yeah, there's a fake Charon. He commits a TP to try and reinforce that A side, but it's all for naught. Texture, the lone player to stand against it. The onslaught, sweeping him through all the bounds, and the Stinger's just not good for it, at least for that. Paranoia, though, has to be a follow-up, and it has to be a clean-up, and there is there on time. Texture dropped in the process now with 30 seconds left. Take a pause in the round and take a breather, because Sentinels realize it. The chance now to extend that play in the series, to take it all the way to Icebox. A tap forces it out. The first wave of the util. Oh, the flash is flying through, and so do the bullets. Lakia, a lot to overcome, a lot to do, and it's just impossible. Map 5 is on the cards. ये बंदे कितना पसीने में नहा रहे हैं वो बंदे देख रहे हैं The last two times that SEN play split, पसीने में नहा चुका है वो they take back their title of looking like the team who's best in the world on this map. Absolute cinema at the end there from John QD2. The fakes have got to be coming against the way the Munchkin plays defense. संभाल लिया भाई 3 बजने वाला है Unbelievable series so far. What do we हाँ तो मेरा क्वार्टर के बाद तो ये मेरी बात क्वार्टर 5 Icebox coming right at you.
Bees still are beating hearts on pins and needles. Everyone in the Madrid arena was. And Sentinels pull it off, and they managed to force a map 5 on Icebox. What an incredible game we just witnessed. And if anything, it just goes to show for the Sentinels, hey, on Split, third time's the charm, baby. You know? Yeah, they look back. They were incredible on that map. I think coming in with a great game plan. Their attacking side in particular. John QT was making some crazy calls, just walking into mid, reading these stacks and punishing in the late round. But damn, did Gen.G make it close with that comeback. Yeah, they did, but I gotta say, this is the first time we've really seen Gen.G actually struggle in terms of the decision making, the information game, and actually noting Lakia a couple of questionable decisions along the way, but his utility usage was amazing, and Sentinels still benefited in that regard. And in that first half, I mean, we had a couple Sentinels multi-kill rounds that had no business happening. I feel like Gen.G in that first half was letting some things slip, right? We have this round where Zekin in one position manages to come out and hit the nastiest spray transfer you've ever seen, and then immediately the round after this, Saucy goes and does this, Mike. Yeah, I mean, obviously this flank, the fact we're even showing this replay again, it's criminal, but yeah, this was the sort of thing, there was time and time again we saw Gen.G just have kind of things slipping through their fingers, not having a solid grasp on exactly the position of Sentinels and the plan. And look at this man, yeah, just 19 years old, his first global final, almost dropping 400 ACS. He has 89 kills right now. If he keeps up his performance on Icebox, he's on pace to beat the global record for the most kills anyone has in a single best of 5 series. Right now it's Demon 1 at 101. Zekin's on track to best that. Oh, very well. With the way that boy's playing, it's going to be lights out potentially on Icebox. But let's actually go ahead and talk about Icebox because, Mimi, statistically speaking, this favors Gen.G going into it. You gotta look at the numbers and feel like, man, this is gonna be a tall order for the Sentinels to overcome. I don't care at this point. I don't think the players can care at this one. It's map 5 of a best out of 5. We already saw it on Split. This is where really comes to the prep, to what you have ahead of time, to what the coaches have been saying. Form in the server. कौन कर रहा है हिंदी में पकड़ For what 3-4 hours at this point. क्या कर सकते हैं भाई? भाई कैसे देख लेगा भाई तू हिंदी में भाई? मैं normally नहीं देखता, but that's the only rights I got. Enjoy. कौन कर रहा बकर हिंदी में? है थोड़े लोग अभी तो बकर करते हैं. Hello Monzai, welcome back. क्या सीन बस map fight is Icebox का map भाई देखते down to the wire. मोहित भाई कहीं निकल गए? लुगाई बाजी करने लगेगा? क्या हुआ? भाई यही हूँ एनीमे देख रहा हूँ आ जाऊँगा अभी. अरे मोहित भाई पता नहीं क्या कहने वाला था. अरे आ रहा हूँ 2 मिनट देखो देख लो कोई दिक्कत नहीं. I mean, historically on Icebox, it's been Munchkin really the one to be numerically delivering. Again, had a rough performance here on Split, but I mean, if we do have a pop-off game from Texture, do have a pop-off game from Meteor, then actually Icebox could be really interesting for things. I think it's going to be about that jet head-to-head, honestly. ये ओए वेलकन ये लोग मोबाइल फॉर्मेट में क्यों स्ट्रीम करने लगे हैं? खेल रही थी तब से मैं खेल रहा हूं. हां पता नहीं उसका रीच बहुत है, मतलब शॉट्स वाला फीड का बहुत ज्यादा रीच है. अरे लोग शॉट्स बदल स्क्रोल करते हैं ना, याद है मुझे, मेरे को बहुत. हां क्या कह रहा है? ए लोग स्क्रोल बहुत करते हैं ना रील्स, कैसे लगा व्यूज आते रहते हैं लाइव. अरे स्क्रॉल जब करते हैं बोल रहे हैं बेसिकली इंस्टा वाला जो एडिक्शन है लोगों का वो यहाँ पे यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं. अबे तो लाइव इसमें शॉर्ट्स में आती है क्या स्ट्रीम? आती है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में लाइव आती है. कौन कह रहा है? रेशियो चेंज करके स्ट्रीम करेगा तो ऐसा नहीं कि तू भाई वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम चालू करे बस उसमें अपना बाकी स्क्रीन ब्लैक. वीसीटी वाले खुद वर्टिकल स्ट्रीम कर रहे हैं. आप दोनों स्ट्रीम कर रहे हैं भाई. वही था. हां वो तो कर रहे हैं, वो तो मुझे भी पता है, बट लाइक इट्स व्हाट द फक इज दिस. लेकिन उनके उसमें व्यूज नहीं आ रहे. पता है आए नहीं अभी इसमें है क्योंकि इंटरेक्शन उसमें नहीं है, बट नॉर्मली तो कभी दिखेगा ना, स्पेशली फॉर स्मॉल चैनल वर्टिकल स्ट्रीमिंग इज वेरी गुड एज अ ग्रोथ. लाइक नए बंदे बहुत आते हैं, रिटेंशन उतना नहीं है उन बंदों का, बट ये क्लिक टू सीटीआर ज्यादा है बहुत. हाँ भाई तो अकेले कैसे बात कर रहा है? मैं डीसी पे बात कर रहा है, डीसी की आवाज म्यूटेड है.
हाँ मेरा नीचे क्रोम चल रहा है इसलिए मैं बोलूँ मैं जब सेज देके मैं मारा ना 2 लोगों में बोला लैग हो रहा नहीं पता क्यों हो रहा है इस वजह से हो रहा था मैं ना साइड रैंक के साथ ओपनिंग में आएगा बहुत मारेंगे हेलो SniffaPuff हेलो ये पीछे आवाज किसकी आ रही है इसको 19 मिनट्स जी I was Arena and Jet were trolling still won hi Ayush तू बोलेगा तो लड़की की आवाज आई GWP अरे हमारा गेम में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया लड़की आवाज आ रही है क्या बोल रहा है तू लड़की की आवाज आ रही है अरे मैं स्ट्रीम देख रहा हूं बहुत नहीं है वो वर्टिकल स्ट्रीम कर रही मिसकम्युनिकेशन था अच्छा यू बोलना साले मैं इस लड़की की आवाज किधर से आ रही है मैं सिर्फ पूरा गेम एक ही राउंड रो किया था जो रोटेशन के हाँ वेंचुरी हाँ वही तो राउंड चाहिए था वेंचुरी listen like you can add me up and we can play some other time because I'm already playing and this is my last match I'm little tired I'll play tomorrow कमांड्स है सब just why vertical stream I don't know बस मन किया तो कर दिया अरे भाई गेम ऑडियो लैग गेम अभी भी लैग हो रही है गेम ऑडियो guys game chalu let's end thank you Andy bhai okay my arms are good we can go वेलकम की स्ट्रीम ढूंढ रहा था उसकी मिल गई no sure वेलकम तुझे एलिक्स कब मिलेगा क्या बोलो तुझे एलिक्स कब मिलेगा ट्राइंग वर्टिकल वाला पता नहीं उसका रीच बहुत है मतलब शॉट्स वाला क्लिक का बहुत ज्यादा है इस भाई का तो नहीं है इस भाई का तो नहीं मिला तुझे वो तो मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक ये मिल गया था अबे तू गेम खेल रहा है कि तू वैलोरेंट देख रहा है भूतनी के देख रहा हूं बीच में गेम में था हट चुका हूं जैसे ही गेम चालू हुआ उससे पहले क्या बोलते हैं राइट बॉडी तो मिल जाना चाहिए था तुझे अभी नहीं मैं मिल सकता था मैं मांगा नहीं लाइन पे जो लोग मांगे उनको दे दिया ये क्या लॉजिक है भाई फिर मैं भी मांग लेता लैंड पे गया था तू हाँ Munchkin's trying to sell it. It's only him here. अबे राइट बॉडी का करना क्या है कुछ काम आ गया था देख जब से सामने से राइट से नहीं मिलता भाई वैसे राइट बॉडी full bought it. वहां पे पता है Munchkin was thinking for a moment of calling his team back. You saw Gen.G doubling back towards mid just for a second, and now they've started walking their way into B. You're right, Sen. They bought this hook, line, and sinker. हाँ चली गए दोनों टीम तब तक लूडो खेल लो शॉट्स इन यूट्यूब इज डिजास्टर Groundwork now to try and take उन लोग को मांगा उन लोग को मिल गया देख मैं with the plant down, but it's an open angle here. It wasn't actually smoked off. It's not available for them. Still fights. Bro, I don't give a about the rash, but hot on their heels. Kill onto Lakia. It evens it out to 4-4, but you got to think the advantage now to Gen.G. Sassy's going to have Dizzy back on line, I think. Was he able to pick that one back up? Surely. Late lurks. Elsis seeming like he might be aware of it. Drifting back and forth. What a shot straight to the cranium. Sassy defusing is already on half. Sassy defusing. Wingman, hello, already on the half, but it might have just brought them that critical, crucial lifeline. Munchkin from the side. Attack from second is that uncertainty, but he's defended in time by John QT. You absolute beauty. oh fuck What a way हाँ for बता Sen to get back in. तेरा हाथ ही दे रहा Missing the read in the round. है They were नहीं वो forced to play तेरे पीछे retake. है हैं They got a nice little spam kill to open things up. The pick onto ऐसा Lucky is मुझे huge. कुछ और कर रहा है But the defense क्या of बक रहा है Wingman and then the मेरे defensive पीछे हाथ है नहीं as John held it down. जो वो खुद मुट्ठी मार रहा है तू भी मार Huge. हाँ नहीं तू वो तेरी मुट्ठी मार रहा है बोल This map, we're going to see whether the difference हाँ वो between दिखा था मुझे experience and lacking it makes ठीक है मैं कुछ बोलने आ रहा था the difference between a trophy or not. क्या टाइम है क्या चल रहा है So many players on Sen that have been in positions like this before. Some new players as well, like John. कुछ भी टाइप कर ले लेट ही आ रहा हूँ ये दिस स्ट्रीम playing one too. I know मैं सबसे लेट हूँगा इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा Right, I mean, there's a chance of history on both sides. Of course, Gen.G looking for that. क्वांटम 3 स्ट्रीम देख रहा है बैठ के Most successful iterations of a Korean roster we've ever seen. चैट करके भाग गया भाई इसका आया ही नहीं Woods now into the angle. Zelsis retreating and away with the turret. Is covering that angle there with Munchkin caught out into the open. Still a plan down for Gen.G. Can't be too much more behind this. Now dropping and toppling. Very diligent play by Sentinels, making sure that they deal with the lurk. Not diligent, not clearing. Let me speak of the devil man texture. अगली बार लूंगा ना मैंने क्या बोला था अभी नहीं ली है कि अभी क्यों ली है Hello, in a 1v3. Texture? Nade force him out. Not possible. Open to drop.
लेट है तू So a little bit of damage done, but not too bad. Double bulldog and guardian saved. ना वही बोल रहा हूँ पॉज कर जब मैं बोलूँगा तब प्ले करना स्कैल्प पेन हो रहा है स्कैल्प क्या सर में It's only Paperex in that final against FPX at Copenhagen, who were in a similar position to this. Map 5, सर की जड़ों में दर्द हो रहा away था from them. But not only are they on the precipice of making history, but when you look at the two people at the top of the scoreboard here, early on, Sentinels, Wasi and Tens, into that. Solo leveling bro, क्या episode है? Double trophy lifters. हाँ बता ट्विच पे देखा है यूट्यूब पे ट्विच पे यूट्यूब पे कौन देखता है तो यूट्यूब पे देखना इंग्लिश भाई ताकि सिंक कर सके अपन मैं पीछे हूँ आई नो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सिंक अप टू यू ना यू कैन सिंक अप टू मी I certainly hope not. Sing up to you, sing up to you. Sen looking aggressive at the start of this round, going forwards with 3 players over towards A. क्या sing कर रहे हो बे? पता नहीं ये लोग And comfortable in playing the B retakes. They seem set up for it. And also, you've got to be aware that Gen.G at some point could try to flash this combo into Snowman. Another thing that Sen might be ready for. Exchanging. The handshake there in the air. So round खत्म होने के बाद बोलूँगा pause कर. Still down now. अल्लाह ऐसे मत करवा साथ ऐ क्या है बे? Look at that. It's a coordinated effort. ओ भाई साहब पागल हो गया लकिया मारा भाई लकी ने ओ भाई व्हाट द फक एक स्प्रे में 4 Does not matter how good your utility is. मेरी तू अपना स्ट्रीम कर देख मेरी अबे तो वहाँ तो वो भी कर सकता है बट नहीं ना ये एक्शन वैसी बात हो गई थोड़ा अबे भाई पांचवा वाले को मार देता बस ये बोल रहा हूँ रिप्ले खत्म होगा रिप्ले खत्म होते ही पॉज करना है रिप्ले खत्म होते ये देख ये डबल बैंगर रिप्ले खत्म होते ही पॉज कर देर हो गई अब अबे बैठ के सिंक करते 2 पे ना सुन 2 सेकंड पे रुक मेरा जैसे 2 सेकंड आएगा आई प्ले कर ले प्ले कर दिया क्या बकचोदी कर रहा है तो अब क्या हुआ साथ में भाई just gonna say Brent, by the numbers this would be disaster for Sen if you care about them. भाई क्या मारा मोहित भाई उसने भाई देखा मैंने देखा रिप्ले में तो 2022 अंधा ही मार दिया कुछ I mean different roster at that point basically right it's but essentially just not a map that they've ever had success on. जितना राउंड निकाल लो बस क्लियर राउंड मत निकालो जल्दी I would say इनको दे दो भाई it's there's so supporting much Sen more to it. obviously Emotional aspect. Obvious का पूछा ही तो है हाँ मतलब ऐसा नहीं मतलब लाइक आई मीन Gen.G जीते तो उतना दुख नहीं है कि रीजन को एक आ जाएगी ट्रॉफी एंड स्लॉट मिलेगा दुख नहीं है यहाँ पे 2 बंदे सपोर्ट कर रहे हैं 2 बंदे Gen.G को Again from Sentinels looking like they to be honest in the end कोई भी जीते doesn't matter Sen जीतेगा तो दिल खुश होगा और Gen.G जीतेगा तो दिल क्यों खुश होगा बे तुझे क्या ईदी दे रहे हो इसको Sen की टी-शर्ट दे रहे मिल जाए मना नहीं करूंगा भाई अच्छा एक बात बता सैन जीतने में तू क्या करने वाला है कुछ नहीं कुछ तो कर मतलब भाई सेल्सियस डांस करना अगर भाई सैन गिर गया जीते तो दिक्कत है Wingman delivered that one like a juicy अगर little सैन जीते तो डांस करेगा क्या कर रहा है delivery. Sassy and wipe and Celtics again. Yes. It would have to be the मैं ace स्ट्रीमर मंचकिन in its tracks. क्या बात great try from Celtics there but just not quite enough to overcome the player ओ इसे disadvantage. किक मारो बे Sen have a clear नेगेटिविटी game फैला plan रहा how they गेम want to defend against this. They're not getting caught by the flash combos at the beginning of the round, but they use their own utility to get back in. ये फैंटम का बस यही है Doing a retake एक before second Wingman can जो even आता get है started, making sure to break that as well so the spike's lost in enemy territory. But Gen.G got और too मुझे many पता picks. फैंटम की As ऐसा है Sen ना were कि trying 2-3 to flood. स्किल्स अच्छी है सारी स्किल्स अच्छा लगता नहीं है That round win for Gen.G. एक और रिवर और ओनी एक और रिवर ओनी मुझे सबसे बेस्ट पता कौन सी लगती है Certainly something to fight for if they can get picks early. आर्केड भी अच्छी है बट टॉप 3 वही जोरदार लगती है आर्केड फैंटम चलाने में कोई ना Be close to the corner, swinging out. ये भाई ये बावले हैं सारे Damage done and already texture. प्रोटोकॉल इतनी जबरदस्त है दिमाग खराब है इनका Looking to pick apart this Sentinels players that are left standing. प्रोटोकॉल भी अच्छी है ऐसा नहीं है दे फ्लैश दे And this top 4-10 position. और एक चैंपियन फैंटम वो भी बहुत अच्छी है वो तो याइक्स है भाई पूरी मतलब इतनी बुरी नहीं है यार मतलब जितनी वैंडल चैंपियन बुरी उतनी बुरी नहीं है Karen has just walked up B into तो बोलने Snowman एक भी चैंपियन and he's calling for his team. उसका भी नहीं जितनी स्टार्ट टू एंड जितनी नहीं आई है उतनी गंदी हुई है
but why even bother with it? मुझे सबसे पहली वाली Let's go बहुत big पहली to वाली make sure that Munchkin gets his ult online for the next round and keep this snowball going. वो जो बेस साउंड है ना वो इतना मजेदार नहीं है इतना टंग साउंड आता है हटक करने का साउंड हाँ ये जो टंग साउंड है इसलिए ये देख क्या चल रहा है ये देख भाई क्या ग्लो कर रही है भाई चमकती हुई भी अच्छी लगती है ब्लैक पे not just applying crazy pressure over towards A, there it is, but also being able to get the lurk in अरे on क्या B. कर रहे लोग जाए इधर बस The जाए Gen.G इधर A ना आगे ना पीछे कुछ hit देख ही नहीं is so powerful, and really this flash dizzy lineup that they use, डबल with इनिशिएटर है on top ना of तो pipes, ठीक है and then Lucky are following it in मोहित afterwards. भाई वो देखते हैं पे एम कॉम पे है ना and that means that Sentinels are starting to stack A to deal with it more. अच्छा वो भी तो है सेंटिनल है मर गया ना सेंटिनल नहीं खेल रहा है दोनों का सेम कॉम्प है ना हाँ सेम ही है डबल इनिशिएटर एग्जैक्ट डिट्टो का मतलब वैसा से वो सेम ही है डिट्टो मेरा कॉम्प है अरे वहाँ पे ओ boy here for Gen.G with these recurring wins. So it's just about big it's about dip. कुछ चीजें में इतना में हार्डवेयर भी लेती है ना Knife wasn't broken so second. Loud का बेटा है वो Players have to watch the अच्छा खेलते लोग high हार्डवेयर ground वो approach, अच्छा wall मैच up है in his face. There is some danger here. Up close, it's all about the reactions, but again, they could come from any direction. No command! It's a jiggle. Wasn't anticipating and expecting it to be that level of aggression. हाँ सोलो क्यूब में भी तो बॉटम झूलते हुए कैरी कम से कम 5 सेकंड में कैरी होने सकते सोलो की तो कर लो 5 सेकंड में अपना काम कर रहा हूँ मेरा जो काम है ठीक है तो मैं भी सोलो में काम है वो कर रहा हूँ सोलो क्यूब में काम करते लोग They know that the classic Gen.G exec starts from pipes control. मतलब सोलो क्यूब में कैरी हो तो भगवान से सोलो 5 सेकंड में कैरी हो तो प्रॉब्लम तो बंदे खेले ही ना Everyone's going to be focused on the operator, लड़ लो भाई shutting तुम them पहले down, trying to punish them. बंद बेचारा क्लच करने में लगा हुआ है मतलब इंसान आप बोल रहे हो एक मिनट वो तो चुप वेट भाई हमारे जैसे हम दोनों की आवाज जा रही है बड़ी मुश्किल को वही तो और क्या परेशान हो रहा हूँ बेचारा परेशान हो रहा है Full save where he uses it as a timeout. इंसान करे तो करे कोच ही नहीं पा रहा बेचारा सोलो नहीं कर सकता कह रहा है तो वैल्कन और यही खेल रहे हैं तो मैं तो खेल ही नहीं रहा वो सब पता नहीं भाई तू खेलना छोड़ दे भाई क्वांटम बहुत अच्छा होगा भाई क्वांटम तो प्रो प्लेयर है भाई क्वांटम की कोई बात नहीं करेगा थैंक यू The weaknesses really. Will Sen give him any? Doubled up. इसकी पोजीशन अच्छी है Updraft ऊपर से PK देख from भी पाएगा second, so he's just clearing all the potential possible spots. But thank there you is for that the blind insight. spot. There is that blind spot. Munchkin eventually cleaned up, but in his team, I'm a believer. यहाँ रेना होना चाहिए था यहाँ पे Now that something Munchkin's had something his go होना at चाहिए था winning ये the बोल 1v3, he'll have to start thinking about what went wrong in terms of the macro of that round. Did they need to put more B pressure in order to pull players away from पहले him? जब something नहीं था तो पहले 4 सेकंड को Was it that रेना 4 सेकंड यार अभी मेरे को मन कर रहा more है utilities clearing out pipes before they go for the exec? अबे कुछ खाने का और क्या बड़ा खुश मत हो Racking through his brain as the साले scores at 3-3. जब देखो जब उसकी बातें करते रहता है Zelsis clearly happy with that one. And Sen don't start this round with a stack over towards A. I think already anticipating a change up from Gen.G. There's not one coming. Gen.G happy to opt into that brawl. Knuckle fighting. Oh, I like this angle. Picked up by the knife, slowing it down for but a moment. Now waiting for it. Right time to strike. Big ultimates for them to use to try and get themselves into this. In fact, it's on the other side of things. Bro, भाई आगे बोल सकता है क्या This lockdown contacting, walking right now, finally. The बोला volley देख is being used to try and take that backside control texture. Oh, he's lineups, deep, here it comes. spotted lineups. Oh, missed! Against the wall here, Moshpit has to be committed. Will it break it? No, because it needs the fragment as well. So the additional util just doesn't add up. It was all missed in time. Tens forwards here. There is the Taman. Fragment nade, does he expect it? No, he does not. Meteor again taking matters into his own hands, and he's stuck himself यार बहुत काम देगी finally dealt with. Shut down. Back here. Cannot withstand it. This pressure is just immense. नहीं अरे वो गलत हो गया रे तोड़ने के लिए वॉल पे गया वो Part of that has got to be down to the fact that Munchkin missed the nade. Every team at this point has a setup to try to counter that lockdown. We're talking the best teams in the world. Of course they have setups for that. But it got missed somehow. The fumble from Gen.G. I don't know what piece of architecture that hit onto. Claim to know as well, but it's just on a door frame by the look of it. ये क्वांटम है आज से 15 साल बाद Tiniest of differences. For Sentinels to take the lead here in map 5.
वैसे बात इसके finals on the line. 15 साल बाद हाँ तो किस इंसान की बात कर रहा था? Meteor, Karen, When the creeping closer choke. to those ults, and Lakia already has his. It's going to be difficult for Zekken, I think, to really get a peek if we decide to invest the Thrash. Oh my god, the knife, no way! Just disrespects it in second. It's out of there, on top of the ropes, he does not want to be hunted entertainment. Where's the help? Dash through, Tens is there! Finally! Support arriving with Lakia, cleaning up that pesky player close towards yellow. System. But Sassy's done enough. Just by staying in an open area where the rest of his team could cover him. System को सीस. अबे ये क्या खिड़की कहाँ से आई? हाँ ये आ गया ना चेंज हो गया। अच्छा तू खेलता अच्छा तू नाइस बॉक्स खेला ही नहीं ना? नहीं. खिड़की आ गई भाई वहाँ पे गंदी सी. वहाँ पे ऑफ शॉट्स लगते हैं. Again, have to maintain these advantages when they are handed to you, and if you lose that fight into mid, suddenly 3 versus 3. Have a peek at things here. Open timing. भाग दिया भाई Zekken ने. He loses his fight, and just like that, it's turned. हाँ वही टाइमिंग आ गया. एक्चुअली में तो नहीं आएगा. अभी भी है easy winnable है. 1 2 3 फ्लैश. He doesn't even need it. Blind is about to still spray some down, but he can't follow through with the second kill. ऊपर चला गया ऊपर चला गया. ये ऊपर वाले का. अरे भाई. दिया था almost. That pace and tempo injected एक के ऊपर एक हो रहा GenG at just the right moments. I love it too, because while you're talking about the post-plant aggression, the pause in the round baited out these little plays. I mean, Zekken didn't know exactly where to put his crosshair. And Tens going for a peek under tube opens the win up for GenG. That's got to be frustrating for the SEN coaches. What a gift for GenG. Huh. Yeah. I don't believe. Even as anything. Yeah. No imbalances here when it comes to the rounds. आजा भाई मना थोड़ी ना. Fight taken straight to them here. Opting into the scrap. क्या कर रहा है? अंगूर खाएगा? What a flash from Munchkin. अच्छा दिल्ली में मैं दिल्ली में शादी नहीं करूँगा. The eyeballs of Zekken and Tens looking to try to take the fight. The dizzy didn't get broken in time. No, what a wall back. Through the wall. Through wall. Tens still not going to be removed from this spot. He just sees it. Head poking over, but now has to respect it. Players Phantom for you. Your turn to strike back if you can, Wadi. Iron is hot and hot. भाई इतना क्या हो क्या रहा है? पूरा खत्म हो रहा है. Stand your ground, say your piece. The Vibe Merchant on his feet. ये पता नहीं आपको लग रहा है सेन का सीधा विन है. लग नहीं रहा कमबैक कर पाएगी GenG. वो कमबैक करने की जरूरत क्या है? अभी भागा कहाँ मैच? एक ही राउंड तो आगे है. मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है ब्लाइंड पुश क्या है? कट टू कट मैच चल रहा है. ये बॉल के थ्रू पुश क्यों कर रहे हैं? Drawing attention. crossfire setups on the site. And yes, SEN are overstacking A, but they're doing it at the right times. They're actually getting the read on when GenG are executing. GenG need to throw a few fakes of their own into it. That's something we've been talking about Sentinel's attack side the whole time. They need to try to pull people towards A and use that B lurk timing that Karen found. Full push करते हैं. अरे एक बार नहीं 2 बार 3 बार हो चुका है ये. एक बार तो समझ में. अरे वो उनको वो सोच रहे हैं कि like somebody might be playing. Absolutely. It's not like. पता है अभी ये टेक्सचर की वैल्यू बढ़ गई है. इसलिए नहीं क्योंकि वो लक ही नहीं कर रहा है. Great fight on a bad map for them. And here it is, target-rich environment. The wall obscuring, hiding the intent of GenG, but out wide that's Munchkin. No kill to be claimed, but Zekken. Let's give it up. Alt मार के revive ले ले. Pixel angle. Holding forward, it's going to be that high low and loud wali on top of things, running and gunning forward. Second, drop down. यार ये क्या पागलों वाला गेम है? कूदने लगते हैं. Cover at the site. भाई ऑल्ट मारी ऑल्ट के अंदर खेलना. पहले आगे आगे भाग रहा है. Using it to clear them all the way back here, so Sentinels won't be able to withstand their ground. दो बड़ी ऑल्ट मारनी पड़ी है ना. Seems like there's some hesitation. How do they want to try and fight towards this one? It looks like now the plan. Plan भी नहीं हुआ, plan हो रहा है. Still with that pit here with the ults all the way through now. Thrash to set it up, and it has cleared the way through. Timing. क्या हो रहा है? अरे An absolute menace. And a 1v2. Sassy. So much to do. Mosh. Plan हो गया ना? Pit still alive and active, but it finally fades. And look at it. It's hectic, it's frantic, he's looking this way and that way, Wingman, can't collect the kill! Cut to cut match है भाई, पूरा cut to cut match. You can see the nerves at play here, just by taking ये a look लग रहा है at कि normally a सबसे calm वो and very experienced player. What is this as well? ऐसा तो लग रहा है final से ही है. That's everything. Karen being able to dodge that thrash is everything in this round. It's a beautiful idea. Sassy and Tens play it superbly. Karen
Making the play to dodge it, keep the pit up. 5-5, Gen.G. They came to that round with 2 people with only sheriffs. Yeah, I mean, the money wasn't good. See 3 rifles to play with. Undeterred now by that one. Fast play, fast approach. Over towards A. SEN stacking it with players. No, this time playing it for retake again with Zalsis lockdown. I mean, they must realize, though, that they got kind of lucky with Munchkin missing the fragment grenade before. Look how good the Flash Dizzy is. Yeah, just can't break it, can't withstand it. Here comes a lockdown, though. It's fast by SEN. Is there anything to break it? Pushing back right into the flank. Sassy! It's gone in the open. Didn't much stand it with his gun out. He thought Gen.G were going to fight the lockdown, but the lockdown came too early. Gen.G weren't in position for the lineups. Zelsis in mid. Catching Meteor, crucial to the round. Success. Orb in his face, blooms and blossoms fading away. Here's the footsteps, here's the running con. Zelsis! Awareness of the charts. Pit dropped down 2. But dodging that one with the detainment. The threat's not getting anything. And the decay damage, there it is. Putting in work with Zelsis leading that charge still. The spike, it went down. Wingman able to plant it in the midst of all of this. But this pit, it's not a post-plant play. It's for SEN to go for the retake. And they got all that space, still have to clear through this one. Keron has a snake bite, at least one with the tap. And now they're flooding through onto the side. That left hand. Magnificent. Munchkin to deliver. And he's got to stand and do it now. Tap, forcing out the bullets, no more left in the chamber. What an incredible beginning. Could be set at an absolutely tied first half on a map where, by all accounts, Gen.G should be hugely favored. But I don't feel like I'm seeing the nerves hit the Gen.G players. It doesn't feel like a collapse from them. No, it feels like SEN stepping up. It definitely does. The adaptations they've made and the awareness of देख रहे हो कितना powerful fucking agent है वो. Flash मारा उसने, right click उसका बहुत ज़्यादा OP है यार. 2 बंदे अंधे पड़े हुए हैं. All working really nicely together. और जेट भी अच्छा खेल रहा है. हम तो फ्लैश देने के बाद भी हक देते हैं लोगों को. Reinvigorated. Deep knife gives some peace of mind there, so Ten's gonna earn himself amount up of to result. concentration they have is like push back in a full मैं तो group थक up by जाता हूँ. Gen.G. बुड्ढे हो गए. They're aware that मैं भी नहीं खेल पाता. 1-2 गेम. तो तीसरी तो ऐसी लगती है बहुत बड़ी गेम. बहुत ज़्यादा हो गया. ओवरटाइम और ओवरटाइम के बाद तो वैसे ही मन नहीं करता. Wait too long, the knife might be बड़े back on line, बुड्ढे जबरदस्ती खेल रहा हूँ एक गेम ऐसा लगता है. Tens has his ult to be able to work with too, so the closer they get, the less they can really rely on the Viper to do anything for them. Do they have an idea of where Tens is? He's set up for another knife lineup. Here comes the knife again. Might get bad info though here actually. Crosses back over to A. Yeah, that knife caught onto Munchkin. But then Tens is still rotating off. It's really orchestrated. I mean, they just know. When the orb's up like that, they only catch one onto the knife. Yes, they could cut noise, but second, holding from the top rafter position here. Plenty of angles to adjust and choose from, but they are walking right into the one that matters most. Dash online, backs away, Sassy, close now. In their faces, willing to take the fight straight to them with only 25 seconds left as the final round of the first half. An important one at that, Wingman broken. Confirmation, Gen.G have to follow through with the weaponry and the guns, and they're finding their own place, but it's only down to one. Texture, Soul Survivor breaks it down, Munchkin late to the party, and jump button. Mouse screen Sentinels can feel it. They've got the lead at the half on a map they weren't favoured on. They were banking on a 3-1 finish to this series, but 3-2 would do the job. Heartbreak on the horizon perhaps for Gen.G as they were looking at the first trophy for Pacific and now have such an uphill battle to be able to make that a reality. What a finals we have here. Absolutely insane stuff. Send it down to the desk. They want to break it all down, I can tell. The electricity in this room is unreal as everyone is on their feet and honestly just blown away by what we've been seeing in this game, guys. Not just are we getting great ideas from Gen.G, but we're getting even better ideas from Sentinels on a map, as Brennan Sideshow were noting, Hypoc, that they were just not favored in. Yeah, and I think Sentinels achieved the primary objective, shutting down the main win condition, which is this A-site execute. Josh was talking about it. After that, though, the adaptation from
Sentinels is perfect. They read the game to perfection, start stacking towards B, baiting Gen.G into their stronger setup. For 8 of these players, they've never been in a grand finals of an international event of this level before. For 2 of them, they're rookies in their first ever appearance at an international. You can see the nerves, even in the veterans. The shots from Sashi shaky at times, but what matters is how you convert in the end. That was a half of hero plays, of moments towards the end to come back, but Sentinels is up. But at this halftime, this is the last chance really for the coaches, for the teams to talk together, to come up with that final plan to lift that trophy in front of them. This is it. I mean, you've seen some of the cracks start to show on the side of Gen.G. I mean, Josh even referenced this as well. The pressure getting to them, some questionable decisions, couple of misplays here and there. Is this where it all comes apart? Pacific has been in the finals before. They've never lifted a trophy. Gen.G want to make this comeback happen, but Sentinels, you can see it in their eyes. They're standing up on the stage. They can feel that trophy. They are ready for it. This is it, folks. The next time you'll hear our voices, we have crowned a Masters champion. This matchup feels quite global in itself. Let's go ahead and send it back over to Brennan Sideshow to send this bad boy home. The tension is palpable, energy building in the arena. You can see it, we can feel it. History will be made right here on this half of Icebox. Gen.G won every single pistol the last time that these 2 teams played in the upper bracket final and walked away with a comfortable win on 2 out of 3 of the maps. They need this one. Open face by Caron, almost with the punishment. Tagged down by the turret, just seeking to at least destroy it and remove some of that mid-round information. That's not the only piece of aggression in mid. Texture, Lakia, still trying to get posted up there, making sure that Sen don't play in that area. Jump spot from Tentier, but he's out wide now with the face in top of the Dizzy. They have to give up this space here, but Gen.G might seek to try and fight this one. Wingman, he's already in the fray, through the back of the side here, broken, down, plant out in the open, but behind the box, second, finds his mark. Precision being the name of the game, but Gen.G not willing to give up even a scrap of territory. No map control, and no gain really. Born of Gen.G takes two. Nice oh my goodness, 2, but eventually brought down. 3 versus 3, and the spike's still not retrievable. It's a spike position. 30 seconds left. They keep getting tucked behind this box over and over. Caron, though, he took so much damage earlier on, they could just spam him out. 20 seconds roughly in the round. It all comes down to this for Sen, and a pistol round. 1 to stand, 1, 2, fall! Sentinels are feeling it! Zeltz on his feet again. And Sen in the driving seat, despite having that map veto disadvantage because they had to come through the lowers. Sassy on that stage for the 3rd time knows that it can be done. Every time he'd made it to a grand finals before, went through the upper bracket, but he didn't always win. He knows it's doable. Energy just is truly, truly palpable for Gen.G. A shy investment. And then back. Utility, maybe a sheriff of Meteor to get something done, but this is Sentinels, in all likelihood, wrapped up to that 9th round. Bro, you won't get copyright. No, I won't. I really feel like you can't count out Gen.G even when they only have pistols and Meteor, who hasn't really been hitting this map, the only one with a sheriff. अरे यार ये क्या हो रहा है मुझे क्या करवा दिया तुमने मैं 2 मिनट के लिए गया मैच पलटवा दिया तुमने यार नहीं मैंने क्या करा भाई वो हार गए पिस्टल राउंड They do not want to give an inch to Gen.G. पिस्टल राउंड हारने के बाद भी पिस्टल क्यों है अभी तक That's an amazing timing for Sen to start to hit A. Ten just read this one perfectly. Just like that, we talk about the tiniest of differences affecting so much more. Where are you going, mate? Where are you going? Stinger from that range. All right. Sen's getting away with all sorts of murder. It's a massacre in through the back of the site, but he gives up his life in the end. I can't believe he took that decision. But I think that shows you the confidence on play. Sen setting up for the aggressive post plants. Gen.G's composition can be very potent when you allow them to get into retake scenarios. And Sen are clearly planning to play forwards even when this turns into rifle rounds.
can see the kind of angles that they're taking. Gen.G are going to struggle to get back into sight if they allow Sen to walk in like that. Yes, it was a gamble. Yes, they needed to try to make the play. But what a beautiful read from Tens there. Saw the knife whistle past him and realized an opening could be his. A 4-round lead for Sentinels. Gen.G, unfamiliar position that they're in here in this grand finals on this big stage. Now got to do the most. They're going to try and steal their hearts, calm down the nerves, get some form of collection together. Because the map is running away from you, and not just the map, it's the series. It's your chance of etching your place into history. Texture has gone for a glass cannon operator this round on the anti-bonus. Triple stack over towards A. The knife catching Sassy over there. And Texture already starting to come off that aggressive B long line. This op has to pay off. It just has to. Taking a gander. Walking back over to the angle now, behind yellow box. Lots of angles to really choose from too. He can't expose himself to Zekan's position. At any point here, he could be getting walked up on. That's why you see him just going for the check. And he just doesn't know. He just does not know. You are open to being timinged here. He's taking a risk. Risks are necessary in this particular position. All up. Everybody crossing. Texture can feel it now, and he's going to be tagged up by the knife. Has to respect this now and back away. No, he's just out in the open. No man's land. Flash, though, eventually respecting it and backs behind the wall. Gen.G trying to be fast. Now with this rotate plan denied. Shut down here with only 33 seconds left now. Cavalry has arrived. 30 seconds All 5 players here. There's 25 seconds left. How are they getting back in? That's the question, isn't it? Waiting for that regen util, but It's again, gonna there's only be 20 seconds do or die remaining. fight. Got to get a move on, and it needs to be now for Sen. What is the game plan? War guns up, just निकालेंगे about. और कुछ They're gonna पानी push में down all this करेंगे force, बस. and that's why Tens is there, underhanded, flash through, takes it, the fight straight to Intermedia, on top of bridge. Gen.G though, surely the guns prevail. It's 1 versus 2. There is that value. Rifle upgrade. Celsius here. Is it even planted for it? I'm not even sure. Tucked to the corner here. They know where he is. Wingman sets its sight onto it. Lucky a half on the defuse and even more. No kills to be claimed. No kills to be collected. Gen.G narrowly avoiding it, but they need to keep these guns. That is so rough, losing the op in that situation. They knew that they had the round secured, and they still couldn't keep that supremely important weapon online. Nerves in these big moments certainly hit Sen. Yes, it wasn't the most successful round in the world, but that was their bonus. They were coming into it with Stingers, Spectres. And they've hurt the economy in the sense that Gen.G coming into this one with double Guardians and no operator. That is huge. They know they don't need to deal with that in the next round. Familiar scenes here. Seen that one before with a deep knife. Gives him that chance for Munchkin to try and build up that ult, but here it is. Fast and loose. It's a call made here by Sentinels. Looking to disrupt. No command. No abilities here, so Sassy going to be able to get that plan down. So again, into the post-plan situation we go. Gen.G going to be tested now on their retakes. Gen.G are looking for the lurker, coming around throughout mid. There isn't one. Yeah, just trying to clear it out. Sassy can play so far back and just work off his thrash. Does Munchkin have some kind of knife to be able to deny this? Mosh pit, flash, through and out second. How the hell is he alive there? Thrash now finally being used, but it's offloaded. All the volleys as well. Thrash broken. Media, wide texture. Trying to claim another one here. Been dropped down to 10 HP. 10, surely he falls. Surely they go down. Half. Out. Munchkin. Has he bought enough time? He's got too many targets to deal with. Too much indeed. हक दिया उसने. Small smile on the face of Zelsis. Throwing in the wide swing, knowing that the aim is going to be at its shakiest in this, the latest hour. Sen creep ever closer. It was a tough one. Had to hold off all sorts. The swing that came through here, or in the previous, to be able to deny the wingman, I thought could have been punished. But Gen.G just didn't have it in him.
बोल. They've been stuck, paralyzed at 6. The SEN creep up and up. 3 rounds away now. वो आप अच्छा करते हो, आप खेलता ना बी पे फिर से मिल the जाता trophy in front of them. What they've been working for since October. Honestly, all throughout last year as well. गलत गई ना. The turmoil of their roster of trying to figure out an identity. And since adding John, his first time on the big stage like this as well, doesn't appear to be a rookie. No. He's been delivering in every twist and turn of this tale that is the grand finals, this best of 5. It's just a ludicrous scenario that we stare ourselves at. Sentinels holding this lead on a map that they haven't won since May 2022. No. And Gen.G have looked fabulous here. They wrote the book on how to use this Gecko KO composition that Sentinels ended up taking for themselves. Yeah. And now to see Sen outplaying them, this is what we were talking about earlier, Brent. It's not always the game plan or who's won in the past. When it gets to big, high-pressure moments like this, it's can you deliver? Do you have the determination in you? Timeout that was taken for Gen.G here. They have to pick themselves up. We've seen comebacks on Icebox before, on the biggest stages of the world. But it takes a special kind of team to be able to pull that one off. Oh, boy. Molly misses the Nana Swarm. But going off the sound cue there, the turret still gets retracted. Yeah, pulled back. इंडिया में सबसे हाईएस्ट व्यू से ये बेंच पे जाते हैं. Not have the weaponry to hold on against this knife. Collecting onto 2, at least possibly even 3 there, indicating that it would be an A execute. Meteor gets pulled over to reinforce Munchkin. तब भी 18 के then goes back as Munchkin comes. There is no noise. The re-hits working really nicely against Gen.G and the way that Munchkin likes to make hard reads. Only one tag there with the knife. That is going to be the go button. Pressed here by Sen. Not just that, but they're pressing the advantage, scaling deep into the back of the site. They're giving an edge to them. Second is tucked deep, and there's going to be that supportive util. Look at that. Ten's already holding for it. First signs of life from Gen.G. A flash, and Molly is going to go flying. And there it is. Dizzy. To be broken, not quite. Just sailed right over, but a bit of miscommunication out. Here, Texture. The knives at play, the knives at work. He's going to try and slice and dice to victory. Gen.G finding that footwork, and the ground gained and granted to them. 2 versus 2. A weapon, at least with the upgrade. Meteor is going to be holding this one. He's going to be defusing this one, but already the wall fades and topples away. Half needs to be earned, and he does get it, but time against him entirely. Celsius again is there to make sure the safe pair of hands. Another player who was there at the very beginning. And he's 18 and 8, making sure to be the backbone of this team. लेकिन ये टेक्सचर पूरे कोरियन जज जैसे गेम पे दिखा रहा है. Emotional leader for Sentinels, thriving under the pressure. Making sure that every one of these tight moments is closed out. Gen.G, they must pick this timing to respond if they want any chance of forging their place in history. टेंस भी तो जो जीत जाएगा, पहला जीता था जो. टेंस आज तक सन आज तक वो नहीं जीती है. उसके बाद नहीं जीती थी. फैन अटैक के बाद से. Reaver crumble. What makes diamonds? Texture misses the adjustment. Can't quite hit the snap to the side, and now pushed away from the angle. In fact, even activates the dash, anticipating like it could be a follow-through, but it's not. But he's getting out of there. He's getting good information here, Brent. The fact that Texture popped the dash and got back on the angle is telling Gen.G to keep 3 players A. And they have Lackier on pipes too. This is looking like the way that Sen wanted to defend. Here's Ekan! Matters into his own hands, leading the charge with the dash. Just collides. Flash the 410 that needs to be used, but it's not there. GG हो गया. फ्लैश मोड़ने के लिए कोई नहीं था ना. वो पीक नहीं देना था उसको जो आगे खड़ा था सबसे पहले वाला बंदा. In a 1v3. वेट करना था बस. He's got to try to hold on to the last shreds of hope in his heart. But it must be feeling heavy. He knows that this is Sen, likely to get up to 12. Triangle formed as well, crossfire setups. It would have to be the play of his career, and he knows it's not possible. In the movement, in his posture. अरे pressure देखना crowd का. You see that he's just forced to take. बहुत difficult होता भाई. The smart play and nerves काम करना उस time पे.
But this has got to be devastating. The silence in the Gen.G camp as they allowed Texture to play the clutch settle in like fog. Memories flashing back. Where did it go wrong in the series? We were favoured on split, weren't we? Icebox, surely we had the advantage. How are we in this position? 6 rounds in a row that Gen.G would need to take, and Zelsis, he's on his feet. The round was still going on, and he's already celebrating. Orchestrating the crowd. HSK head in hand. And this is it, the precipice. The line that's been drawn, and Sentinels willing to cross it. And this will be them as an org, as players, as individuals, etching themselves in the history books. But one last hurrah for Gen.G. Has to put a stop to it now. Thrash clears through, that's entertainment! Texture comes down, but he's fallen prey to it. Hunted down. Up to Lakia. He's called for the reinforcements, but this is it. It's a brutal scenario. They're picked to pieces. Thread unraveled. Sentinels can feel it. Impossible after. The ult even forced out a Meteor here to try to keep the Horde back. Impossible to They're in a 3v5. There's nobody on A. Where's the win condition? It just looks like Sen. I can have a free ticket to A. Play down mid and it gets cancelled. Why would you even bother taking the risk? Play it together. Thrash, second round. To clear the way through. It's Munchkin standing his ground. Knife just a little bit too late here. You can feel it now. Pressure mounting. Gen.G stacking, but they will topple. They will fall. The rifles are too good. 1,000 days and counting. Sentinels maintaining their relevancy. 30 seconds left. Spike planted. The last time they were at an international event, last time they earned any sort of accolades. And Caron, from rank to rookie to tier 1 play, left to stew. Pacific's hopes and dreams laid on his shoulders. Gen.G's hopes and dreams laid on his shoulders. Close ही बैठा है भाई. But how much can one man do? First one found, second one not there. It's over. Sen City. Here to play. Here to stay. अबे निकाल लेते भाई. ईयरफोन तो निकाल लेते. पहले चिल्ला रहा है कान में. गलती पागल हो गया. डोंट गेट कर दिया. चलो well played Gen.G. Fuck this shit. Well played. 3 बजे तक जागे लगभग 15 मिनट. ये जल्दी हार गए नहीं तो 15 मिनट और हो जाता. देखा क्या बोला था स्निफा 3 बजे से पहले. मनोबल चला गया उनका. चल मूतिए. चल यार. मनोबल चला गया उनका. अभी तो मुझे और ज्यादा मजा आने वाला है. मेरा फ्रेंड है पता है वो क्या करने वाला है. 10 पुशअप मारेगा स्ट्रीम पे. क्योंकि वो हर साइन के विन पे 10 पुशअप मारने में जोर क्या लगना है. अरे उसकी बॉडी वैसे नहीं ना मोहित भाई. कैसी भी बॉडी हो बे 10 पुशअप कुछ भी नहीं होता. 10 पुशअप बिना हाथ का बंदा मार देगा. मतलब स्निफा यू समझ ले वो एकदम तेरी कॉपी है. वो भी तेजी से पागलपंती करता है स्ट्रीम पे जो तू करता है. 10 पुशअप मार के वाह. मिर्ची डाली थी उसने. हाँ मिर्ची डाली थी उसने. नहीं मिर्ची नहीं डाली. उसने ऐसे ऐसे हरकतें करी ना. हाई गर्मी में करा हुआ है. अपने मुंह पे केक मार दिया सीधा. सोचो. वाह भाई. रोज बेंचो हर बर्थडे पे मारता था मेरे तो मुंह पे. अरे मुंह पे सीधा केक चिपका दिया अपने बर्थडे पे व्यूज के लिए. हाई गर्मी में डांस करते हैं वो उधर. चलो गुड नाइट स्टार्क. जीजी हो गया ब्रो. बंदा स्टार्क शुरू से लेके अभी तक बैठ के देख रहा था यार. जीजी यार स्टार्क भाई कोई नहीं. खेलते हैं फिर कभी. साला मूड खराब हो गया. तुम किसको जिता रहे थे? तुम तो Gen.G जिता रहे थे. किसे जिता रहे थे तुम? हाँ ये तो सेंटिनल जिता रहा था भूतनी का. चलो स्टार्ट. जीजी यार. एसर नाइट्रो वी की कौन प्रमोशन कर रहा है? तुम ये देख रहे थे क्या ये? यार वो टीम जीत गई जो बहन की आंख वो लेके आए थे साले झंडा. दिमाग खराब हो रहा है मेरा वही सोच. बाय द सेंटिनल बंडल प्लीज. खरीद लो. मैं तो कोई किसी ने बनाया था मेरे लिए. चलो गुड नाइट गाइस. चलो गुड नाइट यार. गुड नाइट स्टार्स. बाय बाय. सो जाओ सब. गुड नाइट अंकल. गुड नाइट गाइस. गुड नाइट. गुड नाइट बड़ा भाई. बाय बाय. मोड़ा बाय. सॉरी. गुड नाइट स्टार. गुड नाइट क्वांटम. बाय बाय. गुड नाइट. सॉरी. गुड नाइट अंकल.